Well, hello, hello, hello. This is me, Godspeed, and with me I have Mamba here. And today we're bringing you G2 versus Navi. Mamba, how are you doing today? I'm doing great. I think God, you know, let's do this again. थोड़ा energy के साथ करते हैं, ठीक है? We'll at least whoever's watching the stream right now, it's funny because मैं बस story डाल रहा था Instagram पे. I was like, you know what? Let me post a story that we're doing this because it's been a while since I've done anything with CS:GO. But it's great to be back. I'm doing well. Godspeed. I hope you're doing well too. This is a game you all love, right? Yep. And match भी बहुत बढ़िया होने वाली है आज की. So I can't wait. But I've heard so much, right, about Monesi especially. I've Yeah. not been able to see a lot of him. I've been reading articles, I've been seeing the stats. So I know that he's one player I will definitely look out for today. But all in all, मजा बहुत ज़्यादा आने वाला है. What's up with you? How's life? क्या चल रहा है? Well, life's been cozy, almost chill because of the weather. थोड़ी अभी spring vibes आने लगी हैं, but it's still winter out here. Talking about the teams, I'll quickly tell you about the teams, Mama, because as you said, you have not been that much into CSGO. So coming into this tournament, Navi ने बहुत सारी changes की हैं. Navi have actually brought in a player from their academy called NPL, and IGL की duties वापस इलेक्ट्रॉनिक के पास आ गई हैं. So it's going to be very interesting. They have now two players from their academy. You already know Bit B1T Yeah. कितना धमाल किया था उसने. और अब सेकंड प्लेयर आ चुके हैं एनपीएल ने पहले भी खेला है नावी के लिए स्टैंड इन किया है कुछ मैचेस में बट अभी फुल फ्लेजेडली इनटू द लाइनअप दे आर ट्राइंग टू इनकलकेट हिम थोड़े सेटअप्स चेंज होंगे ये होंगे तो नावी के तरफ भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा जो पूरा सेटअप्स और पूरा प्ले स्टाइल देखने के लिए बिकॉज एक डिफरेंट आईजीएल है अब पहले एस डी वाई आईजीएल कर रहे थे अभी इलेक्ट्रॉनिक के पास आईजीएल का कमान वापस आ गया ऑन द अदर हैंड G2 may you have Hooksy, right? The new IGL sort of controlling all the superstars, a star-studded lineup. And 2022 का एंड उन्होंने बहुत ही धमाके के साथ किया था by winning the Blast Premier World Global Finals. And that was their first international trophy, Mamba. So, what do you think about G2 and Navi, these two powerhouses? क्या होने वाला है? So here's the thing, right? Like with Navi, it's been such a story lineup. It's been such a story dog. I still remember initially जब ये lineup बना था, there was so much that was going around this, right? Because electronic bit की बात करें, bit even though we call him relatively new, right? But he's still been around with the lineup for quite a bit. Electronic, as old as a Tail of Time itself. Simple on the other hand has matured a lot as a player. तो उनको आजकल मैंने पर्सनली जितनी गेम्स देखी आई हैव बीन एंजॉयिंग इट लॉट मोर पहले थोड़ा सा अनहिंज सा स्टाइल होता था उनका खेलने का इट वाज वेरी and let's be honest we've all tried to replicate it at some point in time it just doesn't work because unka jo skill level hai that's incredible and sometimes the decisions that he makes does not make sense but baat kare agar hum yahan pe if we have to make a team ourselves right if you're talking from the perspective of fantasy there are two strategies, right? For me personally, I'm going for two extremes, right? I want players who will go out there and perform. I know कि उनको अगर kills मिल रहे हैं तो they will get those points. But I also want to have two players on my team which do not give me negative points as much. जो अगर support role खेल रहे हैं, second and third in जा रहे हैं, not somebody who's entry flagging. And the reason why I say this is because कई बार in situations when you're entry flagging, you're creating space. आपका scoreboard पे इतना impact नहीं होता है, but overall you're making a lot of impact. But if you're going in from the perspective of fantasy, then you have players who you know for a fact will be able to get you picks like Monesi, like Simple. And then you have players who you know second and third in jate, they're playing support. They will be able to clean up जब clutch situations होते हैं, वो players जिंदा होते हैं, तो they can stack up on those skills and deaths उनकी इतनी ज़्यादा ना हो. जी हाँ, बिल्कुल. टीम बनाने की बात की है मामा ने तो हम चलते हैं लाइव एक्सपीरियंस की तरफ और जल्दी आपको दिखाते हैं कि एक टीम कैसी बनाई जाती है. स्लॉट्स बहुत ही कम बचे हुए हैं गाइस तो 10 मिनट के आसपास दूर है हम मैच शुरू होने से तो जिन जिन लोगों ने अभी तक टीम नहीं बनाई है प्लीज जाके जल्द ही टीम बना लीजिए और जो जो हमारा वेट कर रहे थे वेल अब हम आ चुके विल सॉर्ट ऑफ गाइड यू थ्रू कि कैसे टीम बनाई जाती है. बहुत सिंपल आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे क्रिएट टीम पे या तो आप अपनी कोई पहले बनाई हुई टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं या तो सिलेक्ट टीम में जाके क्रिएट न्यू टीम कर सकते हैं. नई टीम में जाके फॉर एग्जांपल जैसे मामा ने कहा कि हम उन प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे जो पहले हमको पॉइंट्स
गारंटीड ला के देंगे. सो फॉर एग्जांपल लेट्स गो विद सिंपल एंड मोनेसी बोथ. और फिर उसके अलावा हम देखेंगे अभी कौन से प्लेयर्स रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं, तो विल गो फॉर बिट. नाउ कमिंग टू द टेक्निकलिटीज, हम ये देखेंगे कि आज के मैच में फेवरेट्स कौन है, G2 या नावी. अगर आपको लगता है नावी जीतेगी और बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतेगी, तो आप 3 प्लेयर्स नावी की तरफ से जाएंगे. अगर आपको लगता है G2 जीतेगी, तो कोशिश करिए 3 प्लेयर्स G2 के लेने के. यहाँ पे हम थोड़ा प्रेडिक्ट करते हैं कि नावी जीतने वाली है, जस्ट बिकॉज दे आर सॉर्ट ऑफ थोड़े से ज्यादा मंजे हुए हैं ब्लेड एज अ कोच कंपेयर टू G2 जिन्होंने अभी अभी नया कोच लाया है. और तो हम तीसरे प्लेयर परफेक्टो की तरफ चलते हैं, बिकॉज एज ए हमने बात की शुरुआत में कि इलेक्ट्रॉनिक आईजीएल ड्यूटी संभाल चुके हैं. अब आईजीएल ड्यूटी संभालने के साथ वो एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, तो ही माइट नॉट बी एबल टू गेट अस उतना पॉइंट्स. और यहाँ पे दूसरी तरफ हमने मोनेसी को लिया है. उसके अलावा हम जाएंगे बहुत ही सिंपल निको की तरफ, जो ऑब्वियसली सुपरस्टार. और उसके बारे में Unless, of course, you remember the one match where there was a lot of banter happening on Twitter, right? I believe it was Simple, Nuke. That is a different story because Simple came in all guns blazing after that match. फिर आपको पता क्या हुआ? So there's a lot of story between these two players and these two teams also. तो बिल्कुल. आज आप बता रहे कि Navi, I believe you said Navi seems a better team to win today, right? At least in your opinion. Yep. I don't know. I've not been able to see the veto yet. Veto क्या होने वाला है? अगर veto देखने मिले, then maybe we can have a conversation about this. Because if you go purely by HLTV के stats, right? Then Mirage, Inferno, Nuke, G2 seems to be the better team. But then again, right? Numbers can only paint such a picture. हम हमेशा बात करते हैं numbers के बारे में, prediction की बात करते हैं. लेकिन एक चीज मैं हमेशा से कहता हूँ कि numbers only help you paint a historical picture. आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, बट व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन अ गिवन डे नोबडी नोज. आई मीन हिस्टोरिकल डेटा इंपॉर्टेंट रहता है, बट जैसे कि मामा ने बोला कि once you get onto the server it all goes out the window. True, that is very true. But so these are the 5 players you've gone for. Simple, yes. Monacy, Bit, Perfecto, Nico. It's funny because these 3 players, Simple, Monacy, Nico, वो बेशक मेरी टीम में भी रहते, but if I had to choose between the other 2 players, Bit and Perfecto, मैं एक बार तुरंत इनका लाइनअप भी खोल लेता हूं. I would probably replace Perfecto with Electronic, just because I can, yes. Right? Yes. And if I had to, hold on, so हमारे नावी के 3 players हो गए, right? हाँ. Now the problem is, if I want to add JKS, because JKS I've been seeing him for forever, right? Renegades के टाइम से हम देखते हैं उनको किस तरीके से खेलते थे. I would want to have him, but the problem is अगर उनको लेना है तो फिर पूरा dynamic change हो जाएगा. I'll have to remove one of the Navi players. So if I had to choose 3 G2 players, my bet would be on either Nico, Monacy and JKS, or Nico, Monacy and Hunter. Because Hunter, again, I believe is Nico's cousin, right? Because it runs in the blood, by the way. मैं इनको फॉलो करते आया हूँ. It runs in their blood. These players, जब सर्बियन टूर्नामेंट्स भी होती थी, मुझे पता है कि जब लोकल टूर्नामेंट्स भी होती थी या फिर उस रीजन की टूर्नामेंट्स होती थी, मैं देख रहा था. They've grown so much. I Nation करके एक टीम होती थी, I believe that they used to play for I Nation. They used to play for I Nation, right? So I believe Yanko, the analyst, जो अब टैलेंट बन चुके हैं, वो भी खेलते थे उस टाइम पे. So experience बहुत ज़्यादा है. He can put it to use. Definitely can support his team to go out there and get the best result. तो ये 3 players मैं select करूंगा. अगर मुझे select करने होते तो I'd definitely put Monacy, definitely put Nico. Question होगा JK से Hunter के बीच में. Huxi, for some reason I don't want him on my team. And अगर मुझे 3 players Navi के select करने होते हैं, then I'm Simple, Electronic, and yeah, Bit Perfecto doesn't really make a difference. I would just choose either one. Not too. Honestly, I don't think इतना लंबा फर्क पड़ने वाला है. बिल्कुल. और अगर आपको 2 प्लेयर्स G2 के सिलेक्ट करने होते तो क्या करते हैं मुंबा? 2 players अगर G2 के सिलेक्ट करने होते, Monacy and Nico for sure, like आंख बंद करके. But if you're feeling adventurous, then Monacy and Hunter. But अगर मुझे like legit आंख बंद करके सिलेक्ट करने होते without looking at the stats too much, then Monacy and Nico for sure, like 100% without giving it a second thought. जी बिल्कुल. तो फिर आ जाते हैं बूस्टर्स पे. बूस्टर्स में देखिए अलग अलग तरीके के बूस्टर्स हैं. एंट्री किल्स के डिपेंडेंट, हेडशॉट किल्स के डिपेंडेंट, फ्लैश असिस्ट के डिपेंडेंट, डैमेज के डिपेंडेंट. मैं
चाहूंगा बिट के साथ फॉर हेड्स आर ऑल आई सी बूस्टर, जो कि है हेडशॉट किल्स के डिपेंडेंट। एक टाइम पे जब बिट ने जो 2022 में इनफैक्ट बिट की हेडशॉट रेशियो अराउंड 61% थी, विच इज इनसेन। और अभी थोड़ी कम हो चुकी है 2022 के एंड से, और अभी तक 41 दिखा रहा है फिलहाल परसेंटेज, और फिर भी 41% इज एन इनसेन अमाउंट। Yeah, it's insane. But I feel like one of the highest headshot percentages historically, I believe, was Nico, right? Because he plays on such low sensitivity that he doesn't really have an option but go for headshots. Especially जब वो deagle चलाते थे. I still remember early days of CS. He was renowned for his deagle. Yep. I believe he also has a crazy headshot percentage. But वो दूसरी टीम की हम बात करें यहाँ पे. But just out of curiosity, right? If you could have a look at what his headshot percentage is, I'd be very happy to know that. हेडशॉट परसेंटेज क्या होता है कि इट बेसिस ऑफ टोटल किल्स। सो लेट्स से इफ यू हैव 10 किल्स और आपने 6 प्लेयर्स को हेडशॉट किल्स दिए या हेडशॉट से मारा, फॉर एग्जांपल आपको कैसे पता चलेगा? किल फीड में आपको हेड वाला जो आइकन है वो बना हुआ आएगा, आपको पता चल जाएगा कि वो एक हेडशॉट किल था। या फिर आप hltv.org में जाके स्टैट्स देख सकते हैं उसी मैप खत्म होते ही, तो आपको वो भी दिखा दिए जाएंगे कि किसने क्या हेडशॉट किल्स लिए या नहीं लिए, और लाइव स्टैट्स भी चलते रहते हैं hltv.org के। और तो उस तरीके से हेडशॉट किल्स होते हैं, जिसके सबसे ज्यादा हेडशॉट किल्स रहेंगे। हम यहाँ पे परसेंटेज पे नहीं जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी ने 20 किल्स में से 14 किल्स हेडशॉट मारे हो, तो उसका हेडशॉट परसेंटेज हो गया 70 फॉर दिस मैच। बट हम जाएंगे बाय नंबर्स, तो अगर किसी ने 40 में से 15 हेडशॉट किल्स मारे तो वो 15 वाला बंदा जीतेगा। ऑफ कोर्स। हमारी एंट्रीज। जी हाँ। Mamba, what map are you looking forward to watching today? I'll be honest, I'm still one of the classic Andes. I'm not a huge fan of the new maps which have been added. I understand क्यों उनको add किया गया है, but two of my favorites historically have been Nuke and Inferno, even though Nuke बहुत one-sided था. But I like the historical element of Nuke, right? Inferno definitely one of the nicer maps, one of the more balanced maps, quote unquote, because I still remember early days बड़ा CT sided हुआ करता था. But it's very entertaining to watch. आपको पता होता है, आप expect कर सकते हैं चीजें. There's a lot of action, but yeah, I think Inferno, Nuke, maybe Overpass. ओवरपास की आपने बात की। ओवरपास टेक्निकली एक तरीके का नावी मैप बोला जाता है, ओल्ड नावी के लिए भी। 2015 वो लेट एग्जीक्यूट्स 15 सेकंड बाकी क्लॉक पे और एग्जीक्यूट्स आते थे। What a throwback. Those 15-second executes were so annoying to play against also. I still remember जब इंडिया में भी tournaments होती थी, a lot of teams tried to copy that play style, right? There was this one local team जो copy करती थी Gunpoint नाम से, and they would give you zero information, right? Absolutely zero information. But the problem is, the reason why it doesn't work anymore is because जब वो play style नई आई थी, right? Teams took a while to adopt to it because that was not the meta, right? आपने कभी वो problem face नहीं किया था. So the only way it's ever going to work is अगर आप सामने वाली टीम को information बिल्कुल भी ना दो. If you're starving them of information, only then अगर आप late execute करने जाओ, then it'll succeed. But अगर सामने वाली टीम जो टीम CT side पे खेल रही है, if they're smart enough, वो एक साइड पे information निकालने की कोशिश जरूर करेगी, because अगर आप late execute करेंगे and आपने information नहीं दी सामने वाली टीम को, sure succeed करेंगे. लेकिन अगर थोड़ी सी भी information मिल गई सामने वाली टीम को, quick rotation आ सकते हैं. जो late execute है, it doesn't really make a difference at that point. जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि पहले ही ये काम करता था, अभी करंट मेटा क्या हो गया? पहले का मेटा था लॉट मोर बेस्ड ऑन पैसिव इंफॉर्मेशन, कि आपको दूसरी टीम इंफॉर्मेशन देती थी. नाउ इट्स मोर बेस्ड ऑन एक्टिव इंफॉर्मेशन. यहाँ पे आप खुद जाके इंफॉर्मेशन लेते हो. बहुत ज्यादा अग्रेसिव सा मेटा है चल रहा है अभी, तो वो ये चीज को डिनाई कर देता है कि ये जो प्ले स्टाइल है ये काम करे. लॉट यहाँ पे ज्यादा हम ये भी देखेंगे जो चेंजेस लाए गए हैं CSGO में, जैसे यूटिलिटीज थ्रो करने का, ये सब का, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू सॉर्ट ऑफ नेविगेट वो अग्रेसिव वाला मेटा. बट फिर भी कुछ हद तक वो इंफॉर्मेशन फेक या आपको एक्टिव इंफॉर्मेशन के थ्रू ये चीज डिनाई हो जाती है. तो नावी ने अभी ब्लेड के अंदर बहुत ही हाइब्रिड सा स्टाइल बनाया है, जहाँ पे दिस सॉर्ट ऑफ हिट इन अराउंड द सेकेंड मार्क, विच इज पहला मार्क होता है आपका अराउंड 1 मिनट के आसपास, सेकंड मार्क इज अराउंड 30-35 सेकंड्स. तो दे ट्राई टू हिट एट अराउंड द 30-35 सेकंड मार्क एंड नॉट लेट इट गो डाउन टू 15 सेकंड्स. तो वो बहुत ही एक तरीके से बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से खेलते हैं ये वाली नावी, और इसीलिए देखना ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिक किस हद तक अदा कर पाएंगे वो आईजीएल का रोल. बिकॉज आपको भी पता है इलेक्ट्रॉनिक मोर ऑफ फायर पावर फ्रेंडली गाय,
और अब अचानक से आईजीएल की कमान संभालते हैं। पहले उन्होंने संभाली थी, नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे थे, इसलिए एसडीवाई को लाया गया था, बट अभी वापस उनको संभालना पड़ा बिकॉज एनपीएल यंगस्टर हैज बीन ब्रॉट इन, और वो देखना दिलचस्प होगा अगेंस्ट अ सीजन्ड आईजीएल लाइक। बाय द वे वीटो बाहर आ चुका है। I'm honestly surprised कि we still have Nuke and Inferno in the veto. I'll be honest, I did not see that coming. I wanted to see it because obviously इनकी matches हमने देखी है पहले, but feels good to know. I was away from the game for a while, but there's still a little bit of CS left in me where I can see things coming just a slight bit. Mirage, I'm not a huge fan of. I used to like Mirage पहले, but I feel like it's become very bland. It's become very बहुत ही stale हो गया boring, but it's just it's a very stale meta. उसमें कुछ evolve करने के लिए बचा नहीं है अभी। हाँ, जो चेंजेस लाए गए थे जैसे विंडो पे आप सेल्फ बूस्ट ले सकते हो, सब ले सकते हो, वो कुछ हद तक 1-2 महीने तक थोड़े इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज आए, पर अब वो भी अगेन सैंपल साइज की बात होती है। जितना ज्यादा खेला जाएगा वो अब चेंजेस उतने ही ज्यादा रिजिड हो चुके हैं, तो वो मेटा बहुत ज्यादा स्टेल हो चुका है मिराज का। अमन कह रहे हैं कि मोनेसी निको हंटर काफी प्रो है। Obviously, Nico and Hunter, the cousins in the first place. Monesy is a prodigy. I still remember the first time I heard of Monesy, right? जब Zaibu भी आए थे, when he broke out of the scene, right? Yep. Monesy, Zaibu, then there's one more, Xantares. Yep. These are absolute freaks, right? These are freak shows. The way they play, जिस तरीके का mechanicals के लिए possess करते हैं, you couldn't even think about it back in the day. Yep. कि इतना skilled कोई हो सकता है. These guys don't just come in and break the meta; they create their own meta. अगर आप बात करें अच्छी teams होती है, for example, right? They define the meta धीरे-धीरे करके. It takes time. जब एस्ट्रालिस की बात करते हैं, right? जब उनका domination चला था when they won the Grand Slam as well. तो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनकी यूटिलिटी यूजेज। एंड आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ द एनालिस्ट्स ब्रोक इट डाउन, जब वो मिड राउंड के बाद अगर कोई भी एंगल होल्ड करते हैं, they wouldn't have the crosshairs at head level, they would have it at chest level. That's because it was very well thought out. अगर आप randomly किसी को भी ये चीज दिखाएंगे, they did question it, right? But उनकी यूटिलिटी यूजेज इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, ग्रेनेड्स की बात करें, कि वो सामने वाले प्लेयर्स को सॉफ्ट कर देते थे, then they did not have to aim at heads. But then you have players like Monesy, Xantares and all these guys. But nonetheless, यहाँ पे मैच तो स्टार्ट चालू हो गया. But the point I was trying to make was long point shot कि कोई प्लेयर्स होते जो गेम पूरी बदल देते, they turn it upside down. जी बिल्कुल, सिंपल भी उनमें से एक ही थे, और यहाँ पे निको भी उनमें से एक ट्रिपल किल, क्वाड किल लेते हुए एस क्या वो ले पाएंगे यहाँ पे रैंप पे प्लेयर, पर मोनेसी उनको डाउन करते हैं पहला राउंड G2 के खाते में। Well, I'm happy. I'm just happy that Nico is going out there, starting things off really well. He's a player I can count on. I know for a fact, 100%. ये प्लेयर को आप हमेशा काम कर सकते हैं। And वो टैलेंट है यार, निको जिस तरीके से खेलते हैं, he doesn't have to move, और ये जो crisp, clean lock हम कहते हैं हमेशा, is great to see that smile on his face. बहुत ही अच्छा थ्रोबैक। एक यूट्यूबर आए थे जो ये सेंटेंस को बहुत ज्यादा इमोर्टलाइज कर चुके थे अपने एनालिसिस के थ्रू, बट जैसा कि आपने बोला था हेडशॉट परसेंटेज और हेडशॉट किल्स के मामले में निको भी बहुत ऊपर थे, और यहाँ पे 4 out of 4 kills headshots already in the first round. जी हाँ, मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि निको ओवरऑल is just insane. And I know I might be analyzing a little too much into the finer details right now, but I still believe it's because of the sensitivity that he plays at. It allows him to be that accurate, and it's useful. It has its pros, it has its cons. He can't be that flashy, but अगर वो कुछ hold कर रहे, then there's a high chance कि he will deliver. Yeah, I mean you can either have Nico जैसी sensitivity या फिर Hiko जैसी sensitivity. I would prefer. See, I want Hiko. But I know उतना स्किल है नहीं, तो निको पे हम रुकेंगे। Honestly, I think सभी शुरुआत जब करते हैं थोड़ी कम सेंसिटिविटी के साथ ही करते हैं, to get yourself acclimatized with the game, और बहुत ज्यादा अपने accuracy पे ध्यान देते हैं। निको as accurate as they come. True, and ये जो मैं अभी चीज की बात कर रहा हूँ, I'm speaking purely from the perspective of fantasy. Right? Ooh, simple, what a shot. What a shot, yaar. See, this is what I miss about this game, right? The peaks, the counter strafing, the bullet goes where it's intended to go. I still remember जब CSGO release हुई थी, मैं सोचता था यार deal कितनी inaccurate है, like हर जगह spray हो रही है, and then let's just say I learned, and I saw other FPS games, and I was like, you know what, this is much better. Yep, और यहाँ पे आपके बोलते हैं तीसरा किल सिंपल, 3 हेडशॉट लीगल के द्वारा,
2v2 की स्थिति यहाँ पे सिंपल ने चौथे को भी स्पॉट कर लिया, पर हुक्सी वहां पे उनको डाउन करते हुए परफेक्टो दी ओनली वन अलाइव, क्या ये क्लच कर पाएंगे 1v2 की स्थिति में? He's in a good spot. He is in a very good. Oh, the problem is, लेकिन हंटर ने पहले डिंग दे दिया था उनको, and I believe he did not even have head armor, right? So yeah, it doesn't, yeah, so यही उससे खामी हाँ की पर आएगी। बट हाँ, जैसा कि आपने बोला कि हम, मुझे भी बहुत हद तक लगता था CSGO में यार डीगल्स इतना इनएक्यूरेट है, बहुत अजीब सा रैंडमनेस है, पर जब बाकी गेम्स की तरफ देखा तो लगा कि यार मतलब द ग्रास इज नॉट ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। It is not. But एक चीज मैं personally भी enjoy कर रहा हूँ is watching CS with somebody who's played CS, who's known CS for so long, and who understands the game to that degree, right? Because the finer details that we speak about, वो आपको enjoy करने के लिए you absolutely need to be with somebody who celebrates the game, and that's where the fun is also. हाँ, kills देखने में flashy playstyle देखने में मजा आता है, but when you know कि ये बेट एंड स्विच था या फिर ये पीक बहुत ज्यादा अच्छा टाइम था, that was a good trade or that was a good setup, that's where the real fun in CS is. I mean, minor details में तो magic छुपा होता है. I mean, Blade used the sentence कि there is magic in the minor details, and it's very true. Gives me goosebumps when I think about it. I actually have goosebumps talking about this, but I mean, people understand जो CSGO खेल चुके हैं, जो खुद compete भी कर चुके हैं या अभी भी involved हैं, उनको समझ में आता है कि ये सब जो minor details होते हैं कितना actual difference पैदा कर सकते हैं सर्वर पे, जहाँ पे दो even sides को भी ऐसा लग सकता है कि एक lopsided या one sided matchup हो, जैसा कि आपने एशलेस की यूटिलिटी यूजेज के बारे में बताया था. एक ऐसा टाइम आ गया था जहाँ पे एशलेस एरा इतना मशहूर हो गया था कि they were invincibles almost. Because they were leaps and bounds ahead, right? वो इतना ज़्यादा evolve कर चुके थे कि teams 2 iteration पीछे खेल रही थी. Exactly. And they were also one of the first teams. So Astralis also had this problem, जो वो playoff matches में choke कर रहे थे. And they were also the one of the very first teams who hired a sports psychologist to fix that problem. तो वो mindset की बात होती है, वो preparation की बात होती है. There's a lot more that goes into the game. I still remember. Back in the day, जब skins were a lot more important in the game because जब viewers देखते थे, and you know what I'm talking about. Yeah. But तब कई बार आपको इंटरनेट पे information मिलती थी. I still remember this one match, I believe was Cluj Napoca के टाइम पे या फिर उसके आजू बाजू Cloud9 एक मैच खेल रही थी, and they were the hot favorites to win, right? And I was supposed to predict which team was going to win for myself and my friend. And Cloud9 was absolutely the hot favorite, but there was one catch. Cloud9 was playing a different tournament in a different country. They were supposed to catch a flight without sleep and then play the next tournament. Yeah. And they lost the match. So, these things are also very important. So, जब भी कोई भी team बनाते, make sure you do your due diligence. If you do that, then I think it's fairly easy. And especially in this match, right? Like, for a fact कि ये players perform करेंगे, deliver करेंगे. Yep. और वो लेयर जो होता है ना अबाउट, अगेन ये माइनर डिटेल्स की जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मामा ने भी बताया कि Cloud9 अगेन हेवी फेवरेट्स थे वहां पे, बट द फैक्ट कि दे वर अंडर प्रेशर, उनकी फ्लाइट मिस हो सकती थी, दूसरे टूर्नामेंट में डिले, वो मैचेस डिले होंगे या नहीं होंगे, और उस प्रेशर में खेलना, वो उसको फैक्टर इन करना, ऑब्वियसली वहीं पे आप वो टेक्निकलिटीज पे खेल जाते हो और एक डिफरेंस पैदा कर सकते हो अपने में और बाकी कंटेस्टेंट्स में. नीको आप पूरी कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे होल्ड करने के लिए, but it's a fairly slow round. I like this slow and steady approach. बहुत crucial round भी है दोनों teams के लिए, but problem Navi के लिए they've already lost 2 players, and I still believe they can bounce back, but they need an opening. But Nico वहाँ पे is creating such a massive problem, right? Unless Perfecto can sneak in, but I don't think that's going to happen because 2-man deficit पे sneak करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. हाँ, और एक जन येलो के ऊपर तैनात भी हैं क्रॉस फायर में शटर वाले बंदे के साथ, तो बहुत ही अनलाइकली, हेवीली अनलाइकली कि परफेक्टो यहाँ पे कुछ कर पाएंगे. बट यहाँ पे परफेक्टो का साथ देने के लिए आते हुए एनपीएल यहाँ पे कुछ किया जा सकता है, खासकर जब सिंपल ये डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हैं. और अब देखिए हंटर caught in 2 minds but still manages to take him down. Oh, I thought you almost ripped that, I'll be honest. Simple, can you do simple things? Nah, that's not possible. Unfortunate उनके लिए, but G2 they're looking like they're in the driver's seat right now. 4-0 बहुत ही अर्ली
बहुत ही But then, तूफानी let's not forget it's Nuke. सीटी साइड। Yes. Chat क्या कह रही है? I want to know chat's opinion. जो भी जितने भी viewers देख रहे हैं, I want to see, I want to understand आप क्या सोच रहे हैं, कौन से teams, कौन से players यहाँ पे जीत सकते हैं, and which are the players जो आपने select किए हैं यहाँ पे. इलेक्ट्रॉन वैसे लाइव जा चुका है, आई थिंक सो। वो 5 या 10 सेकंड का डिले रहता है लाइव जब मैच हो जाता है उसके बाद जाने में। सर आप दोनों का सी कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन है? मामा आपके हिसाब से इस मैच में अगर आप टीम पिक कर रहे हैं तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन किसको रखते हैं? Honestly, simple. Like if you had to choose either one, right? हाँ, Because these are powerhouses. You know these players will be set up for kills. उसमें कोई doubt नहीं है. I think it's a fairly simple answer in this one. Because जब आपको पता है कि इतना fire power है, टीम भी ये सोचे कि let me set them up for more success. तो multiplier आपको काम लगता है. बिल्कुल। और यहाँ पे लगता है वो जो हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक के आईजीएल की, बहुत ही नए हैं वो आईजीएल के रोल में। और अगेन जिस तरीके से जो प्रेशर बनाया जा रहा है G2 के द्वारा, वो ऐसा नहीं कि अग्रेसिव जा रही हैं, बट जो क्रॉस फायर्स मेंटेन किए हुए हैं, जो वर्टिकलिटी का इनफैक्ट जो फायदा उठा रहे हैं फिलहाल G2 के प्लेयर्स, उसके वजह से नावी को बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है अभी तक 4 राउंड में। और टाइम आउट, बहुत ही स्ट्रेट टाइम आउट। क्या आपको क्या लगता है, क्या बोल रहे होंगे यहाँ पे ब्लेड इस टाइम आउट में, क्या एडजस्ट करना चाहिए उनको? This reset, honestly, I don't think that there's a problem of fixing anything as such. उनको सिर्फ रीसेट करने की जरूरत है, बिकॉज देखिए ये जो लेवल पे ये दो टीम्स खेल रहे हैं, आई थिंक इनको बेसिक्स तो ऑब्वियसली पता है. They just want to take it slow and not get too worked up on the fact that they've lost 5 rounds, right? Because you know it's a CD side map, it's Nuke. It's always been like that. So take it slow. You just need a couple of rounds and you'll be fine. और यहाँ पे देखिए G2 वापस से 2 जन सीक्रेट की तरफ तैनात, और यहाँ पे सीक्रेट की तरफ भी बढ़ रहे हैं। बट दूसरी तरफ नीको यहाँ पे सेफ पोजीशन लेते हुए, उन्हें पता है कि गराज की तरफ प्लेयर्स आ चुके हैं नावी के। And I like that repositioning. काफी disciplined repositioning था उनका. उन्होंने सोचा कि let me not be the glorious one. मैं पीछे जाता हूँ. Let me not give away a fight. And मॉर्सी और नीको ने एक पिक निकाला. लेकिन ट्रेड्स कितनी अच्छी तरीके से आ रहे हैं नावी की तरफ से, वो देखिए. बिल्कुल. And this is not the Nico of old. पुराने नीको ये सेफ पोजीशन में नहीं जाते, वो वहीं पे खड़े रह के वन टैप्स में ज्यादा बिलीव करते थे. So a refreshing change here. उम्र हो गई ना उनकी अब. नीको की उम्र हो गई है अब, क्या करें बेचारे. Maturing not just in terms of numbers and age, but also game style maybe. 1v1. यहाँ पे देखिए हंटर तुरंत प्रैम की तरफ बढ़ते हुए, पर सिंपल यहाँ पे शटर पे पोजीशन बनाए रखे हैं. ये बहुत गलत पड़ सकता है ये गैम्बल हंटर का. Just a roll of the dice. Hard to figure out which is the right one. It's difficult to say because Simple को भी बहुत ज़्यादा information निकालने 10 सेकंड बाकी उनके पास. He only has 5 seconds to clear all the possible angles and commit to the plant. अगर वो double guess करेंगे अपने आप को, was it too late? I think it's too late. Is it too late? Oh, not too late. That was close. That was close. Oh. That was very close. और अब हंटर को कितने एंगल्स क्लियर करने होंगे यहाँ पे. But I think Simple's playing it really smart. Yep. Because उन्होंने C4 जहाँ पे प्लान किया था और जो एंगल होल्ड कर रहे थे काफी अलग-अलग थे. Usually you would expect either Simple to play जो शटर एरिया इन आउट बोलते थे हम पहले. Either play shutter and or play opposite vent. But he was holding cab. तो उन्होंने हेवन से अपने आप को आइसोलेट किया. कैब होल्ड कर रहे थे, शटर भी होल्ड कर रहे थे. So you only had to look in one direction. That was very smart of him. और अपने आप को शील्ड भी कर रहे थे बाकी एंगल से. इसी के साथ मामा जस्ट बिकॉज एक ही प्लेयर अलाइव है, मैं बोलने वाला था कि आई थिंक सो टाइम आउट की जरूरत है बिकॉज ये राउंड ज्यादा क्रूशियल रहेगा. सिर्फ एक ही प्लेयर बचे रहे थे सिंपल. अगर ये राउंड नावी हारती है तो उनकी इकोनॉमी ब्रेक हो जाएगी एंड G2 अपनी लीड को बहुत हद तक एक्सटेंड कर सकती है. ये राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. यार वो थोड़ा जूम करके पेपर दिखा दे तो मजा आ जाता.
हम भी थोड़े notes copy कर ले यार. Really get into the game plan here. I'm नोट्स में लिखा होगा सिंपल go kill. lot that's been prepped for the map, so hopefully we get to see a little bit more out of it. Of course, the But problem is- Godspeed, you're a coach yourself. You understand how difficult it is, right? Yeah. What's the process like? Like when you get along with a team, right? What's the general process like? Early out the squeak door or into hut. कि मतलब अगर मैं सिर्फ टाइम आउट की बात करूं तो टाइम आउट्स में आपको सिर्फ ये देखना रहता है कि टीम जो अभी तक कर रही है उसके अंदर आपको कितना कुछ बताना है. कई बार जैसे कि आपने पिछली बार बोला था पहले टाइम आउट में, एक बार इट्स जस्ट अबाउट द मेंटल एस्पेक्ट, राइट? तो आप वो टाइम आउट को यूज करते हो थोड़ा मेंटली उनको रीसेट करने के लिए, और साथ साथ थोड़ा ये भी बता देते हो कि आगे हमको क्या एडजस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 30 सेकंड के टाइम आउट्स मिलते हैं. CSGO में 4 टाइम आउट्स आजकल मिलने लगे हैं, 30 सेकंड इंटू 4, पहले 1 मिनट इंटू 2 था. तो अब वो स्प्रेड आउट करके वो उस टाइम आउट्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, और बेसिकली एक मिनी कॉलर का रोल अदा करते हैं यहाँ पे CSGO में, अनलाइक जो बाकी गेम्स है अभी, क्योंकि वो एक राउंड का. He just didn't even face That it. was. Did you see that? People on the Yep. outside love to see Oh his God, reaction. this guy, And this Electronic kid. is out here. यार ये बच्चा क्या ही बोले अब. Not I much mean, longer left G2 on ने this one. hundreds of thousands of dollars पे किए थे for a 16-year-old. Never before has it been done One in that has already CS. punched in his ticket as तो one of the best in the world. rightly so. और फिलहाल शुरुआत में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था इस G2 की टीम को, बट हुक्सी के आने के बाद भी धीरे धीरे अब ये स्टेबलाइज होते हुए टीम, हुक्सी की लीडरशिप बहुत हद तक स्टेबलाइज करने में कामयाब रही है, खासकर इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग ऑल दीज स्टार्स, और ये जो हम बोलते हैं ना कोट अनकोट ईगोज दैट कम विद द स्टार प्लेयर्स. Wanted to break this money from G2, but now See, that's always a problem, right? I very firmly believe this. अगर आप एक this is brutal. quote unquote star player को hire कर रहे हैं अपनी टीम में, every good player comes with their baggage, and जी, बिल्कुल. it's a good thing and it's a bad thing. It's a double-edged sword, and the reason why I say this, right, is because Same. Yeah. जो Real recognized real. प्लेयर उस लेवल पे परफॉर्म कर रहा होता है उनकी मेंटालिटी बहुत ज्यादा अलग होती है. आई एम श्योर यू नो दिस, राइट? Yep. And they expect everybody to perform on the same level. This was a problem with Simple when he started off, when he went to Liquid, where Hiko was his elder brother figure, जो उन्होंने उनको बहुत गाइड किया था वहाँ पे. And the problem with having somebody like that on your team is that sometimes they need to understand not everybody is either on the same plane or as gifted as they are. Mentality उनकी बहुत ज़्यादा strong होती है, and they expect everybody to immediately pick up on it, which is not possible. It takes time, but I believe that it also depends on the age you're in, right? If you saw Simple when he was 16, right? He's had a storied career. आप बात करें ESL वायर वाला जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ था, from that point on to being the best player in the world, one of the most mature players in the world, right? I still remember when he used to play for which was his team? Flipside. Flipside, Hellraisers. He was extremely toxic, right? Yep. That was the vibe around him. But now, if you look at, if you think of Simple, you don't think of him as a toxic 16-year-old. You think of him as a very mature player who is one of the greatest to ever play this game. So it's an arc that takes place, and आपने बताया था कि Monacy was, उनकी जो ट्रांसफर फी थी बहुत ज्यादा थी, but जो मेंटालिटी की बात कर रहे थे, I think it takes time, and the only potential solution to that is let them mature over time. जी बिल्कुल. एंड समटाइम्स जो आपने बोला, कई बार क्या है ना, कुछ प्लेयर्स के लिए वो ईगो बहुत जरूरी रहता है टू मेक देम द बेस्ट, बिकॉज ईगो इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाई यू आर द बेस्ट एज वेल. That is true. वो चीज कई बार हम कोचेस इग्नोर करते थे, खासकर हम हमारे रीजन में अभी जो जैसे कोचेस हैं और आ रहे हैं, हम वो इग्नोर करते हैं. हम बोलते हैं नहीं यार, प्लेयर को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. बट आई थिंक इट्स अ हार्मनी, इट्स अ रिलेशनशिप या मैरिज बोल दो, कि जहाँ पे कोच को भी Marriage. हाँ, क्योंकि यहाँ पे कोच को भी अडाप्ट करना पड़ेगा. हर एक प्लेयर सेम नहीं होता, सैंपल साइज की अगर हम बात करें. इसीलिए एज अ कोच अगर आप जितने ज्यादा प्लेयर्स को कोच कर लोगे शुरुआत में, अपने शुरुआती करियर में, उतना ज्यादा आप समझ पाओगे और अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे टू टैकल डिफरेंट सिनेरियोस. I like how this watch party is suddenly turning into a podcast about life and gaming. But no, you bring a very valid point, right? वो बहुत जरूरी होता है, and I believe excellence और कहते हैं ना कि एक lunacy में somebody the difference between somebody being labeled as
let's say lunatic or somebody who's extremely motivated, Genius. right? Or genius is a very fine line, and it goes hand in hand. It needs to be balanced, because if you confine yourself to what people deem to be normal and what people deem to be okay, you're putting yourself in a box. आप ceiling Exactly. अपने ऊपर लगा रहे हैं. If you want to be better than anybody who's ever touched this game, you have to be stronger than everybody who's ever touched this game. Yep. I mean, बहुत ही अच्छा example, Mike Tyson. He actually went to jail, and in fact, he came back from jail fitter than when he went to jail. Because that's all he did in there. Yeah. Right? But I think that's a circle of life. You learn, you live and learn from your experiences, and we have some great examples in CS also. So I feel like Simple is definitely one of the role models for all the players out there. But आप बात करें हंटर के बारे में, I still remember मैं उनकी आई नेशन की मैचेस कास्ट करता था 2017 में, right? जो छोटी छोटी टूर्नामेंट्स होती थी, तो उस टाइम पे मैं कास्ट करता था उनकी टूर्नामेंट्स, एंड मैं नाउ व्हेन आई सी देम प्ले ऑन द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड, राइट? Yep. परसिवरेंस सिखाती है चीज आपको. It's very important to be to not give up and keep chasing what you want. तब मुझे यकिंडर की बात याद है, इससे आपने जब बोली कि जब वो 2019 ड्रीमहैक दिल्ली में आए थे, मैंने उनसे पूछा था कि आपका एम क्या है. उन्होंने बोला था कि मैं 2 साल में वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स बनना चाहता हूँ. और आप देख लीजिए 2022 में जाके यकिंडर, तो वो जब वो अचीव करते हैं, वो गूज़बम्प्स जो आते हैं वो अलग ही है. और यहाँ पे सिंपल दिखाते हुए, जस्ट बिकॉज मतलब Monesi, yeah, he's a prodigy and all, but Simple has come so many leaps and bounds from his time as a prodigy. Simple is like I laid the foundations to what is called a prodigy now in CS. Yep. He was the Actually. prodigal son. Yeah, he was the prodigal son in CS:GO. It's a beautiful story. Honestly, it's a beautiful story. Yep. Because the stories like Simple, जैसे हो गया, where he defied the odds. People didn't expect him to become such a great player just because of his attitude. Yeah. और अब वहाँ से यहाँ, then you have stories like Rops, who defied the odds. People called him a cheater, an FPL cheat, stuff like that. Yeah, I believe he went to the London headquarters as well, right? Yep. To play. Yeah. Yep. So to prove people wrong, FPL invited him to their headquarters to play from there, and he actually played better at the headquarters than he played from home. So, you think it was flow when he went there? I'm actually planning to read this book, the Psychology of Flow. It's on my list. I think it's going to be. I still have 2 more books to read before that. yeah. But I really want to touch upon it, right? Is that something you've encountered or you've discussed in your professional career with players? Oh, I'm a big proponent of flow. In our field, we call it either tempo, and we call it the snowball effect as well in the grand scheme of things. Yeah. And these are very necessary if you want to become a big team. Like if you want to be a mediocre or an above average team, it's okay. You don't have to think a lot about these things. But if you want to be the differentiator or one of the best or the cream of the crop, you have to think about how to inculcate these factors into your game, because that is how you convert your 13 5s into 16 5s into 16 1s. And once you start doing that, people start fearing you. And once you create a fear factor, that is how elite teams are made. I really like the way you put it, right? You didn't say 16 13s or 16 14s to 16 5s. You said 16 5s to 16 1s. 16 5 isn't good enough. 16 1 is what you're supposed to be aiming at. 16 0 is unreal to ask for, but that's what you aim for. Yep. Every move you make, right? Every utility you use, every piece of utility you throw, smoke, flash, nade, every bullet you fire has to be done with a purpose. Exactly. You can't automate it. Yes, flow may you stop thinking about what you're doing, but when you say you're not thinking about it, what flow talks about, or what the concept is the fact that it's so natural to you. You're quickly processing the information. You're not taking that split second to decide what to do. Yep. Your body is making those decisions for you. Yep. So यही होता है ना, यही हम करना चाहते हैं थ्रू स्क्रम्स एंड प्रैक्टिस, कि जो हम सिखाना चाहते हैं वो पहले हैबिट्स बन जाए और फिर वो हैबिट सबकॉन्शियस में चली जाए.
And once it becomes a part of your subconscious, there's no stopping you. And fun fact, ये 5 rounds भी actually technically calculated है. So if you see CT side में if you lose pistol round, आप 3 round हारते हो because चौथे राउंड के पहले प्रॉपर बाई नहीं आता. हाँ. और टी साइड में अगर आप पिछले राउंड हारते हो तो 2 ही राउंड हारते हो बिकॉज थर्ड राउंड में फुल बाई आता है. सो आई ऑलवेज अज्यूम कि दैट इज द लीवे आई एम प्रिपेयर्ड टू गिव एनी टीम ऑफ माइंड कि आप 2 पिस्टल राउंड्स कि जितना राउंड्स हार सकते हो, व्हिच इज 3 + 2 5 CSGO, इसलिए 16-5 बोला मैंने. तो वो टेक्निकल हम वो लेके चलते हैं कि इतना लीवे मैं दे सकता हूँ कि 5 राउंड्स तक आप कर सकते हैं. Yeah, it's a difficult conversation to have for a lot of, I think, a lot of players, a lot of staff involved, because forget functioning at that level, right? To even think of something like that is unheard of. But it's important if you want to be the best of the bunch, and if you want to break the rules of the game. That is what your mindset needs to be. Exactly. मतलब वही है ना कि just like you said about the inside the box thing. Yeah. If you always inside the box, that means all you ever be will be defined by the box, right? So it's important that you think this way. I mean, I remember a lot of athletes. Prime example, Zlatan. We talk about egos making players. At the age of 20, he had an Arsenal contract on his table. But they asked him to trial first, and he said no. Zlatan doesn't do trials. So did he get the national contract or no? No, he rejected Arsenal. Oh. And I mean, the rest is history. The rest is history for sure. और ऐसा नहीं है कि ऐसे प्लेयर्स सारे सक्सेसफुल ही होते हैं. There are cases of failures. So that's also a double-edged sword, right? Because you always hear about success stories. You don't hear about the 99 of the people that got rejected in a way where, or maybe in the exact same way that Zlatan did something for himself. Right? Yeah. To be that one out of the 99, you need some serious skill. Yeah. I mean, talking about stories that are not successful. Podcast मैं नहीं बनाऊंगा, but I mean I'm a prime example. I was not a successful player. I was mildly above average player. अगर मैं बोला तो compared to the players that we have today, like I mean if you compare yourself to SK Rossi, Deathmaker and all, I was just an above average player. Doesn't mean you don't need to hear my story, because मैंने भी अपने college CA के साथ at the same time I used to practice 6 days a week, go to LANs 6 days a week, practice 6 hours a day, travel 2 hours to and fro while doing college, while doing tuitions, while pursuing my CA. And तो मतलब वही है कि just because I'm not successful, my story isn't told, but I'm sure a lot of people ऐसे हैं जो ऐसे success stories. Prime example हम ले सकते हैं ऐसे players का. आपने ज़ेंटारिस का नाम लिया. Look at him now. Like he was supposed to be the best of the best. और अभी वो नहीं है कहीं पे भी. So there are factors जो आ जाते हैं. Maybe you just don't develop enough. हो सकता है beyond the prodigy. But again, there's a lot of factors that you don't see also. Exactly. I think, but that's the thing, right? That's part and parcel of anything. You need skill and a little bit of luck on your side. But it is what it is. It is what it is. I feel like could have been a different story for either one of us. We've both played with and against each other. Yeah. For me, it was a problem of being in a city where there was no LAN culture. So everything I learned was online. There was no way for me to practice. But it is what it is. Yeah, I mean, again, in our country, like our country is very different to where G2 and Navi players are from. For me, it was just familial things. I was not allowed to travel outside of my city to compete. So all I could do was compete within my city. And the one time he could have met me, guys, the one time he could have met me, he broke his leg. Yeah. That was sad. I was hoping that I could see you. I mean, we surely will this year. Hopefully, I'm planning to travel less this year. Treating this year more of as a sabbatical than anything else. Ooh. Yeah. I mean, well, hopefully you get to be on the cast or you choose to be on the cast of Ascension and you meet in Ascension.
but the trades Hopefully, are there man. for That I can G2. promise. Well set up defense, knew exactly what was coming. It took Navi so long Let's see. to reach that bomb site. But They अभी की had to बात make करें every स्कोर के बारे में single तो step known G2 is for definitely G2. in the driver's seat right now, and Morrissey just locked in, right? Nice attempt at the end. I feel so good when I see all these players, and then there's Nico, Now, never Mamba, satisfied. opening setups for G2. Never They have so many satisfied. different ideas, so many ways to I hit. still remember there's this video of him जब वो Those are कुछ supposed to be क्लच होने के बाद the छाती meters पे हाथ लूच रहे men that are तो वो supposed साफ to कर रहे open rounds and they're like, oh up, no, and they did it they're there's doing some it meme about him. against Yep. what is supposed to be one of the best nuke teams I mean, out it's there. almost like we call it the Kobe mentality, right? Oh, the Ki- Mamba mentality, yeah. The Mamba mentality. Everybody's seen that video, which gives me goosebumps even now, and I actually tell that to my players every time we get into a tournament. To me, you don't celebrate victories more than like a second, 5 seconds, because the job is not done. You celebrate when you win, and The job is that's never just done. yeah, the job is never done until the tournament ends. And you celebrate for a day, and then work starts, work resumes. So I've been a big proponent. Like, I mean, I've learned a lot from I that am aware, mentality. Godspeed. I am aware. The one time when we played this community tournament against each other, I heard from your teammates. I am aware of your strict ways. Fun times, man. Fun Yeah, times. but I used to preface this always. I used to ask the team in all community tournaments, hey man, do you guys actually want to win, or you guys want to have fun? If you want to have fun, I won't say anything. That's always my policy. But if you are like, let's say the CSGO tournament, right? Like the community tournament, I barely said anything because again, the goal was to have fun. We had fun. It's funny because I was touching CS after years at that point. Yeah. Like, but, Looks like G2 are having fun though. Yeah, G2 are having a ball. 12-3. क्या ही बोलेंगे? Beautiful part about this is G2 didn't even break a sweat. Like in the entire, ये पूरे half में ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि नावी ने G2 को under pressure लाया हो. So Nico Morrissey Simple are doing very well for themselves. I think JKS and Electronic जो मैंने दो दूसरे players बोले थे ये आप select कर सकते हैं. They are not doing that well, especially Electronic. I mean, हमने बात की थी कि हो सकता है वो struggle करे because IGL duties, it's a new thing, it's a new paradigm for him. और कई बार क्या होता है कि आप प्रेशर जब फील करते हो तो आप अपनी गेम की तरफ से भी ध्यान हटा देते हो, और वही होता हुआ इलेक्ट्रॉनिक के साथ. फिलहाल वो दोनों में ही सक्षम साबित नहीं हो रहे हैं. आईजीएल ड्यूटीज भी मैं आपको एक दो राउंड के बारे में बताता हूँ. जैसे आउटर ले जा रहे थे, आउटर स्मोक्स में सिर्फ पहला स्मोक पड़ा, सेकंड स्मोक पड़ा ही नहीं गैरेज क्रॉसिंग का, एंड दे डाइड, 3 of them died. So ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है ये बता रही है कि दिस इज नॉट अ रिफाइंड नावी, दिस इज अ नावी दैट इज स्टिल वेरी मच इन द वर्क्स. और G2 यहाँ पे इसका फायदा खूब उठाते हुए, बिकॉज G2 आपको याद रहना चाहिए गाइस कि G2 आई है इस टूर्नामेंट में as almost the defending champions of the Blast Pro circuit. They won the Blast Pro circuit 2022 में in December जो ग्रैंड फाइनल्स हुए थे. एंड फिलहाल तो बहुत ही प्रिस्टीन फॉर्म में लग रही है G2. लीडरबोर्ड की तरफ देखते हैं. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि they looking not just in pristine form but anything they're touching it's turning to gold. Yep. वैसा सीन चल रहा है अभी. किल पांडा, सलमान भाई, खिलाड़ी 7, राकेश 7, ये लोग हैं फिलहाल टॉप पे. और आप भी अपने रैंक्स बता सकते हैं गाइस, हमें चैट में बताइए आपके क्या रैंक्स चल रहे हैं, क्या पॉइंट्स हैं, कितना स्कोर किया आपकी टीम ने अभी तक. वेल मेरी एक टीम ने तो मेरी जो हाईएस्ट स्कोर है अभी तक वो है 123.75 पॉइंट्स. Kav is here. Kav's watching the stream. Oh, hello Kav. Hello. I hope you've managed to build a good team for yourself. But yeah, I hope you're enjoying the game, man. It's a wonderful game. बिल्कुल. और Kav, yeah, he's saying I managed to win a community tournament. Short sweet. And this is why community tournaments are so important, guys. Yeah. Because it brings a lot of people together. जो आपको पता भी नहीं था, या आप हो सकता है कई बार आपको मिसकंसेप्शन भी रहते हैं कुछ लोगों के बारे में कि ये ऐसे हैं या वो. एंड community tournaments are such a good thing to bring people together under the same umbrella, especially people who love the same thing. मतलब
और जिनकी जर्नी सेम है, मतलब जिनका टारगेट एक्चुअली सेम है, तो आई वॉन अगेंस्ट बोथ ऑफ यू डिडंट ओके Now he's just gloating. नाउ इज जस्ट Now he's just gloating. भाई यार आज तो नंबर 1 पर ला देना। कमलेश मूवी थिएटर अगर मेरे हाथ में होता तो मैं खुद को भी नंबर 1 पर ले आता यहाँ पे, पर तो हम इधर थोड़ी बैठे होते हैं। yes, हम वहाँ पे हर कॉन्टेस्ट में नंबर 1 आके लाइक यस जॉब डन फॉर टुडे। Right now. I thought this was going to be competitive. Job done for today. It's not, Interesting. but it's still Godspeed. fun. It's still great. It's What do you think? What do you spectacle think is going to in happen its now? own G2 right, on because Well, of Patel like list. Nico and Monaco. क्या लगता पिस्टल राउंड वेरी नेसेसरी। यहाँ पे सेटअप देख के लग रहा है कि G2 wanted to actually go to doors, but यहाँ पे शायद कॉल बीच में चेंज कर दी है और अब they are holding, Keep it going. probably looking for a reaction from the Navi guys. What is up with Nico and pistol rounds, bro? It's simple and piddle. He's just done it again. Bro, this guy is insane. This guy, he wants the pistol crown. He's already smiling in the middle of the round. I mean, आज तो कुछ अलग ही फॉर्म में लग रहा है निको, and as we say that, You have to let him do it. but again not enough. Simple सिर्फ आर्मर सेव कर पाएंगे अगर सेव करने जा रहे हैं 2v4 की स्थिति। I would never try to दोनों प्लेयर्स आउटसाइड से आते हुए शटर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, an absolute बट देखिए आप पिक कितना पिक हो चुका है, डिफ्यूज किट भी नहीं है इनके पास। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। stupid. Oh no. Okay, well, Bit wants a chance. Took a bite, but he would fight back. Okay. Yeah. All right, there we go. Yeah, no. 1v3. Ooh. 13th round for G2. 1v2. 1v2. That is 1v3. 1v2. really not the start you were looking for Navi. But yeah, no, that's not Again, we possible. were prefacing it as such that with Navi, Oh, if you give them jerseys बड़ी प्यारी है वैसे G2 की। This is one thing I love about G2. G2 की jerseys, G2 always pay attention to their merchandises. I think the best thing about G2 is the social media department. You think Oh, the halftime break would cool I mean him for off, sure. but he stayed as hot as Yeah. ever. I don't know. The only analogy that Yeah. I can think of, I don't know Like anyone. बहुत सारे लोग बोलते हैं 100 Thieves की merchandise मतलब बहुत ज़्यादा है, but personally I love G2's merch. Gets punched a little bit. He's just made up his mind to basically destroy the person in the ring with him. That's what it feels like. Nico बदला ले रहा है, हाँ भाई. Before he even gets close to someone, it's like 27 the way kills that he in moves, 16 the way rounds. that he approaches every angle. Imagine we get to see a deja vu of Simple whiffing the deagle again. Try to win. Oh. Basically already Wasn't that the major also? just going to sort of play out. Major I'm not quite sure. It was some very important tournament. I forgot which one it was. I remember Nico missing the deagle from Nuke top, Huh. and then Simple actually dying. I think so. He jumped and killed himself on Nuke. Not the first time. He's just deleted people. Bhai, wo, I think if it's about Suppresses the killing issue. yourself, I think nobody's going to be able to top Summit. Oh my god. Number 17 and Dude just ran through a molly on chain when he was playing for Splice. 2 kills per round. Yeah, but since you talked about it, मेरे को याद है अभी हाल ही के मेजर में ऐसा हुआ था super impressive. कि 1v1 था और वो बंदा एक प्लेयर को मार के डिफ्यूज करने उतरते समय कूद, I mean he died It's a good due to fall damage. You're having a good game if you have और वो राउंड हार गए थे एंड उसके वजह से शायद वो मैप भी हार गए थे वो। right now has 169. Yikes, that is going to be difficult to get over. Double. What a It is almost similar to G2 का वो केस जहाँ पे G2 actually killed all of the players of the opposite team but went to the wrong side to defuse down. and they lost lost Nuke that way. It was Peak Nuke. G2 moment. Oh my god. This is not at all what we were expecting. You know how Doctor Strange in one of those movies, he was looking at all the possibilities. Yeah. When that happened to G2, I think I just imagined their social media admin doing this. You really don't ever really want Yeah, what are the possibilities I can play this off as? at the moment. 1 out of 14,000 outcomes. Yeah, we'll see what they set up with here. I'm interested in what Blade was talking But yeah, about. the way they're trying to 14-3 slot NPL in. भाई तो So है it's but take away from again this NPL famous पे utilities बिल्कुल नहीं है नावी के पास and putting himself talking about Nuke utilities बहुत ज़्यादा important हो जाती है CT side के लिए। challenge for him though as they are executing into his sight and he is passing the first test. बहुत ही बेहतरीन डबल किल यहाँ पे NPL के द्वारा पर JKS रेड करते हुए तुरंत यहाँ पे डबल किल पर परफेक्टो यहाँ परफेक्टो बिट ensuring कि Navi at least have some wind in the wings. But because he stays so far back on the site, instead of panicking and screaming all over the place,
it means the people I that think are they coming need out a of the little street more than just to wind glorify him, and they have to wings. sort of show he's been They need a sacrificed. lot more because जिस तरीके से G2 अभी खेल रही है, I don't think कुछ फर्क पड़ने वाला है. अब फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि कैलाश खेर फिर गाना क्यों करना पड़ेगा टूटा टूटा एक परिंदा because Navi ऐसा लग रहा है कि G2 have clipped their wings. Navi के nuke is a hallmark अभी खासकर जो नई Navi थी is a hallmark their T side और उनके T side को जिस तरीके से इन्होंने धराशायी किया है like it's very convincing. ये G2 का ये version बहुत ही ज़्यादा convincing लगता हुआ. To the future. Okay, electronic. Great damage. And Nico, who's really just controlling all of outside in the previous half, won't have a chance. I forgot the name of the skin. ये Howl is it called? Yeah, it's Howl. It's a very expensive one, no? Oh, No. बहुत ज़्यादा expensive. And the beautiful part about it is, if I remember correctly, Howl जो था, it started at around $15 जब वो आया था. हाँ. And You have it. I don't. I cleaned out my inventory a long time ago. Yeah, I have these two knives, a Karambit and an M9 Bayo. Not gonna happen. Oh, Three players is it still Sapphire? there. No. Hold on, I have to check. I don't even remember which one it is. It's been a while since I saw my inventory. Abhi khol ke dekh lenge. You had to put that idea out there. But they've more than doubled in their value since the time I got To be them. grasped at. Yep, because अभी आपको ये भी पता है होगा कि स्टीम की जो मार्केट है वो अब मेन मार्केट बन गई है. पहले हमारे पास टर्शियरी मार्केट्स थे ना, CSGO लाउंज ये हो गए, CSGO ट्रेड ये वो, बट अब ये मेन मार्केट हो गया हमारा. जो स्टीम मार्केट है, There are still other websites that allow you to sell it, no? they allow you to sell, but they don't allow you to trade. They don't allow you to like withdraw, like Which is anyway not allowed by Steam TOS, so Yep. you shouldn't do it anyway. yeah. 14-5. Let's see my inventory. कहाँ गया inventory मेरा? Surely, there's no problem, right? Float उसकी बहुत कम थी. I think 2 decimal के बाद start हो रही थी वो. Ooh. If there's anybody that can do it, we've already CSGO. said it is Navi. They're the Nuance ones that you have to filters. worry about here. Oh, talking about M9, For the there's sake of G2, So I have a Doppler Booksy, for that matter, a that Doppler, they can nice. put together a winning strategy, and given that they have so many float अगर opportunities उसका moving मैं forward. आपको बताऊँ But तो we'll फिर see a test from Bit. Do you think? I think float के लिए मुझे game start करना पड़ेगा. वो नहीं कर रहा मैं अभी. Yes. Are you And I have a Karambit which is urban. Try something. What? Yes. It actually varies. I think the market has gone mad. Actually take more gambles. क्योंकि अगर मैं अपनी Karambit की बात करूँ, But sometimes हाँ. actually teams जब मुझे मिली थी free में, where हाँ. it was they might actually not some want it to go too it was deep very in their cheap. playbook. They might Like actually wanna hide 12,000 some ऐसा कुछ तो kind था. of defaulting. I've seen teams that are up at And this my much, Bayo was like just go 25,000 or default, something. default, and then eventually Now my Bayo is 44,000 it turns into a second kill, and then and it's my so- Karambit is Okay, it doesn't matter what pistol this guy's got, 58,000. huh? Karambit One which is mandatory for him. He's like, I need इतनी that ज़्यादा. quota. Yeah. That's an interesting idea, yeah. Because Damn. if you have so many This is giving me more returns than the stock market itself. but of course that is I mean, बोला तो यही चाहता था कि Steam just in case trade you might was end up always better than, you know, those rounds that stock market. And I which still have don't one get of it. my knives which got scammed, by the way. गलती Oh. से. So that in उसकी value, because that was a tiger tooth or something. Whatever that skin is called, I forgot. Saber tooth? Tiger tooth? क्या था? Sabertooth. Sabertooth. So I was never really into skins, right? So मुझे I think so. Tiger tooth भी है. So There was some skin. I was never really into skins. ये oh, by the way, मेरे पास जितनी भी skins है मेरी पूरी inventory में, all of them are gifts, and no, I haven't bought a single one of them. they Oh. are joining up with Simple. So it's like practically free money. मेरे साथ हुआ था बेसिकली Dota 2 में पज का हुक आया था, बहुत ही कॉस्टली, आपको पता होगा. हाँ. वो ड्रॉप मिला था. Is this when जब hook आप कहीं से भी कर सकते थे? You might just sneak हाँ. right in and एकदम उसके भी पहले से ये था, तो उस समय मेरे को मैंने अनबॉक्स किया था वो हुक बहुत पहले. आई थिंक सो उसका नाम ड्रैगन क्लॉ हुक है या समथिंग है, और फिर वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया. उसकी आई थिंक सो वैल्यू इज समवेयर अराउंड 1.2 1.4 lakhs and I sold it for 8 keys Are you kidding me? because मेरे को पता नहीं था वैल्यू और वो सब. मैं बस डोटा खेलता था. CS 1.6 उस समय जस्ट You got टूर्नामेंट्स. scammed. यप. CSGO टूर्नामेंट्स जस्ट उस समय सूखने चालू हुए थे 1.6, और
CS:GO अभी तक चालू नहीं होता है बिकॉज पीसीज हैंडल नहीं कर पाती थी जो कॉलेज टूर्नामेंट्स होते थे। कॉलेज टूर्नामेंट्स यार वो तो अलग ही सीन था। वही तो सीन था 1.6 और CS:GO की शुरुआत पे, और तो कुछ सीन ही नहीं था हमारे पास, सिर्फ कॉलेज टूर्नामेंट्स ही होते थे। और आज देखिए इतने टूर्नामेंट्स होते हैं, फैन क्लैश का अभी हाल ही में रीइग्नाइट CS:GO टूर्नामेंट हुआ, इतने टूर्नामेंट्स होते हैं आजकल, प्लेयर्स के लिए बहुत सारे चांसेस अपने आप को प्रूव करने के। और ये को यहाँ पे थोड़ी सी कमबैक की आशा जागी जरूर है। 14-7 आ गया है स्कोर लाइन, बट G2 एक इको पे 14-8 भी हो सकता है। बट यहाँ पे नावी के पास कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, एक राउंड गलती और फिर G2 अपने आप को मैप पॉइंट पे पाएगी। One good round where Nico cracks it open and Electronic doesn't shoot us through the smoke, and it's probably True. okay. I can be on board that train. True. But Navi धीरे-धीरे अगर ये momentum बना के रखती है, then they can actually have a decent comeback. Listening in, you know, But maybe they don't have any space for like making mistakes at all. They can't make they absolutely cannot make any mistakes whatsoever. Yep. सबसे बड़ी बात है, आई थिंक वो सीटी साइड सूट भी करेगा इस नावी को, बिकॉज अगेन जैसे हमने बोला कि आईजीएल नया है, बट सीटी साइड में उतना इफेक्ट नहीं पड़ता इफ यू हैव सॉर्ट ऑफ सेटअप्स एंड स्ट्रक्चर्स इन सेट। टी साइड में बहुत ज्यादा पड़ता है बिकॉज मिड राउंड कॉलिंग और ये सब सिचुएशन के हिसाब से आपको बहुत रीड करके बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, और वहां पे आई थिंक सो इलेक्ट्रॉनिक ने थोड़ा स्ट्रगल किया आज। और जैसे कि G2 ने इतने राउंड्स प्राप्त किए सीटी साइड में, नावी भी कर सकती है। नावी इज वेरी सॉलिड न्यूक साइड। unfolded all the chaos in the second half pistol. Well, Smiling, and I feel that could you can I guess we'll find out in a couple of rounds. the enemy कि कितनी solid है in reality. in the face like okay, But, fine, we're gonna do that. I'm ready to. अभी के लिए अगर हम चर्चा करें, Good clicks coming out. He and then I think G2 just needs the moment. one mistake from Navi to exploit जी the position. Really good at the moment. टाइम आउट यूज होता हुआ G2 का। G2 के पास 3 फुल बाइज बाकी हैं बेसिकली। Yeah, and if you don't Up until Navi catch them, or happening at the end of the day, so should be about how you prioritize those buys। मुझे एक चीज अभी तक ये नहीं समझ में आई है, G2 ने जो टेम्पो से खेला था पिस्टल राउंड में, वो टेम्पो बहुत फायदेमंद साबित हुआ था, बट फिलहाल इनको एक टेम्पो चेंज की जरूरत है। एक क्विक रश या कुछ चाहिए इन्हें, एक एग्जीक्यूट चाहिए फास्ट, जो कि नावी को थोड़ा ऑफ गार्ड कैच कर सके, बिकॉज नावी के प्लेयर्स को बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है फिलहाल अडाप्ट करने का, और उसी का फायदा उठाते हुए नावी के प्लेयर्स दिख रहे हैं। देखते हैं अगर वो चीज होती है। I think you have a fair point. बात तो काफी बढ़िया करी आपने कि sometimes you just have to change the tempo and you're fine. Yep. But फिलहाल के लिए we'll see if they can actually manage to make it work. nice. Well, enough of the history right now in the present moment. They need to keep this up, Navi. They've had a good run at the start of the second half. This is pretty impressive. They were almost getting pushed out of Let's see with this but one flash, slip, this one seems mistake, to be a fake for the shutter guy. He's not हाँ, gonna be making any पर mistakes at all. And JKS, he'll वो still JKS find that but one. Electronic caught with utility in his hand, और यहाँ पे मोनेसी 3v3 की स्थिति यहाँ पे अभी भी, बट NPL getting put to the test पे once again. बैक साइड पे हैं। Not ready for ओह मोनेसी, for Monacy leaves simple. इसी के साथ जो आपने जिस बात का डर था वही हुआ नावी के लिए। Surely to reclaim this round. ट्रेड्स की गेम पे फिलहाल G2 हावी दिखती हुई, और इसी के साथ 15वां राउंड G2 के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। 1v3 की स्थिति प्लांट हो चुका है, प्लांट आई थिंक सो आधा लगभग टिक हो चुका है। सिंपल यहाँ पे सेव के लिए ही जाएंगे या थोड़े एग्जिट किल्स लेने के लिए जा सकते हैं, उनकी इकोनॉमी का डैमेज कर सकते हैं G2 की। जी हाँ, पहले पैर को डाउन करते हुए यहाँ पे ऑप 4 के AK बरामद किए हैं इन्होंने। इंटरेस्टिंग, परहैप्स अब वो ऑप नहीं, वो मेरे फाइनेंशियल डिसीजन ऐसा मुझे नजर आ रहा है। Terrible financial choices I've been making all my life, except for those 2 knives. except for those 2 guys. Someone give up the AWP, That's true. pick up an AK. But you can make I feel like अगर curious. वो 2 नाइफ निकाल दो इन्वेंटरी से, मुझे जिंदगी में कभी गेम लेने के लिए पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा। I think so. Monacy has बिल्कुल। and I'm pretty sure he has simples on. ये क्या रिएक्शन? Yeah, okay. Oh well.
That's me when I Still able to equip the look at my portfolio. I'm like, I huh? guess they have someone पैसे else. कहाँ गए रहा? Maybe it doesn't matter. Yeah, put it over to somebody ये else. तो That's actually मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन हो गया एड टू ब्रूटे का obviously purchased on the Aye. CT side, so maybe that's Yeah. what it was. Okay. Yeah, Electronics got it. टीम 8 He's been doing a great job out थोड़ी here. धीरे धीरे आउटर की तरफ बढ़ते He's हैं gonna have to do इनफैक्ट more, though. ये मोनेसी के हाथ में जो ऑफ है एक्चुअली सिंपल की ऑफ है देखिए नावी के स्टिकर्स आपको लगे हुए दिखाई देंगे बिकॉज सिंपल ने जो ऑफ वहां पे फेंक के एके उठाई थी मोनेसी चुपचाप जाके What a trade यार! Accurate on the other ये देख के मुझे मजा आता है, बहुत मजा आता है। क्या निकला है नीको वहाँ पे यार, मतलब Hunter, he wants to हम कहते हैं ना कि चाटा मारा है सामने वाले प्लेयर को। timing for it. 4 and 4 and with this kind of यहाँ पे हम ट्रेड्स की जो बात करते हैं दर्शक जो है जो लोग सीएसगो में नए हैं या मतलब टेक्निकलिटीज नहीं जानते ट्रेड्स जनरली वो होता है जहाँ पे आपके टीममेट के मरने के अब 3 सेकंड के अंदर अंदर लगभग आप उसको उसका एक तरीके से प्रतिशोध ले लेते हो तो बेसिकली इफ यू किल योर ओपोनेंट्स किलर आई मीन योर टीममेट्स किलर This team out to dry. You just So, sit up in this If you kill your Within 3 opponent's seconds. killer, that's friendly fire, guys. Don't do Yeah, that. वो मत that's कीजिए। right. and But that's within 3 seconds, if you do that, and you can see that he wants to तो be फिर the master उसको of ट्रेड कहा destiny, जाता है pushing right there through the door, and Nico will be the one to contest him. And Ooh, simple. actually finishing the kill. यार सीजी भी इतनी नर्व कर दी है पहले के ज़माने में जब हाँ। सीजी चलती थी आई थिंक पहले जेडब्ल्यू तो- वाज द रीजन व्हाई सीजी गॉट नर्व catch you when you Yeah. get back inside. जेडब्ल्यू कहां पे आज मैंने देखा नहीं उनको G2 running out of और time. जेडब्ल्यू फिलहाल तो नहीं खेल रहे लास्ट आई सॉ हिम वाज इन Bomb plant. a team called Godsend That's the smoke. प्रोनाक्स में प्रोनैक्स तो आई थिंक सो वो और ओनर बन चुके हैं गॉडसेंड के ही वाज वन ऑफ द फाउंडर्स और वो फिर अपने प्लेयर वाले रोल को छोड़ के अब एक वैसे फिड्यूशरी कैपेसिटी में आ चुके थे ओह आई थिंक वो एक जो करियर मूव था उनका वो मैं आज तक डिसाइफर नहीं कर पाया बिकॉज फनाटिक पहली टीम थी काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव के इतिहास में जिन्होंने 2 बैक टू बैक मेजर जीते थे जी बिल्कुल सबसे पहली टीम एंड प्रोनाक्स ने सडनली डिसाइड किया कि उनको गॉडसेंड में जाके खेलना अपने दोस्तों के साथ वो स्टेटमेंट दी थी उन्होंने When you're a back-to-back major winner for the first time, you could have been the only team to win 3 majors in a row back then. लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि उनको गॉडसेंड पे खेलना है तो आज तक मैं नहीं समझ पाया क्यों वेरी क्यूरियस नो व्हाई वैसा ही एक चीज एक डेनिश स्ट्रेटजी ने भी किया था केरबी ने मेजर जीतने के बाद नॉर्थ जाने का पैसा लिया था एंड इनफैक्ट एस्लिस नेवर वांटेड केरबी टू गो but then you saw Estralis well in arc एग्जैक्टली Always a bit scary in that moment. और फिर केरबाई He's just shooting. ने फिर गेम छोड़ी फिर आके he played for Epsilon and then he played for a British organization as well अभी हाल ही में Endpoint A bit of a timing. और I'm always worried when I फिलहाल मुझे नहीं पता वो कहाँ है अब play like that. शायद Endpoint में ही है No one else in the yard at that point in time for the CT side, so he would have been very much alone. but again fall from grace just because of some uncanny decision making them already to mix results. True. Yeah, Perfecto was there. apparently chat में Electron ने भी बताया GW is an eyeballer right now Round number 25. I'm not aware personally but अगर बोला है तो शायद होंगे Direction from that last one. बात करें फिलहाल यहाँ पे मैप पॉइंट और G2 Esports Move players निकाल पाएंगे राउंड बहुत पेशेंटली खेल रहे हैं लेकिन हुक्सी का किल निकाल लिया सिंपल ने सो सिंपल अगेन होल्डिंग द लाइन होल्डिंग द फोर्ट फॉर द टीम Can you? No. बिल्कुल Age is just a number for these players. यहाँ पे यही देखने को मिल रहा है कि G2 को भी उतनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जो नावी को करना पड़ा था टी साइड पे जो हम बात करते हैं न्यू की एब्सोल्युटली सिटी साइडेड होने की उसकी झलक यहाँ पे दिखते हुए For G2, they have to And start their hit now. They're actually going for वेंट्स mid-side. यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं पर एनपीएल एक प्लेयर को He actually nets a single player down towards that 2 left प्लेयर side. को लेके जाएंगे यहाँ पे और सिंपल यहाँ पे नीचे तैनात है Hunter can't even justify ये killing राउंड him भी for this, G2 because they know के you're हाथ से there, निकलता so हुआ he दिख रहा है doesn't wanna actually try to breach the bomb site, just wants to keep himself alive, maybe find some damage. I mean ये होना था ये आपको पता है कि ये होना ही था बिकॉज ये मैप की फितरत है अगर आप सीटी साइड पे खेल रहे हो तो आपको राउंड्स मिलने वाले हैं अब बात आती है मेंटालिटी की कौन मेंटली ज्यादा स्ट्रांग है किस तरीके से वो होल्ड कर पाएंगे एंड कैन दे कंट्रोल देयर इमोशंस अगर वो चीज कर पाते हैं देन आई थिंक G2 shouldn't have a problem they still have a couple more rounds जहाँ पे वो अपने लिए उनको जो राउंड्स निकालने की जरूरत है वो कर पाएंगे बट लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है In G2 just throwing those smokes for naught.
उसी विद सम एयर टाइम उधर सिंपल ने जिस तरीके से उनको नेस्ता नाबूद किया यहाँ पे। Right. Still, यहाँ पे 15 to तीसरा 10. टाइम आउट यूज करते हुए इसके बाद Timeout एक ही coming टाइम आउट from बचेगा। G2 here. This is a tough position though. This is where I was saying you do need to worry a little bit when Navi get to double digits. यहाँ पे सिंपल भी It कुछ just feels so इंस्ट्रक्शंस much पास more करते हुए possible. तब तक If there was a way to get sort of an internal readout of the mental state of all the players. Instructions to pass करे, I think यहाँ पे एक ही conversation होगा, just you know, don't get too worked up. But then again, ये players इतने समय से game खेलते आ रहे हैं कि इनको ये चीज वापस reiterate करने की जरूरत नहीं होती. But in the heat of the moment, it's easy to let go of this, right? ये देखिए फाइनली टेम्पो चेंज तो हमने बात की थी और ये देखिए वापस कैचिंग सॉर्ट ऑफ बिट इन हिज मोमेंटम और इसी के साथ सिंपल ने पहला शॉट मिस किया। यहाँ पे लोअर बॉम्ब साइड बिल्कुल G2 के कब्जे में प्लांट जा रहे हैं और यहाँ पे जेके इसका फ्लैंक ये 3v5 बहुत ही मुश्किल की घड़ी यहाँ पे नावी के लिए। दिस कुड बी ओवर। न्यूक यहाँ पे G2 ले जाती हुई दिख रही है फिलहाल अनलेस नावी कुछ कमाल कर पाती है इस राउंड में। देखना जरूर पड़ेगा कि ये यहाँ पे कोई कमाल कर पाएगी कि नहीं, लेकिन मॉरसी फिलहाल के इंतजार कर रहे, उनको एक पिक निकालने की जरूरत है अच्छे से। वेल पहला मैप अपने नाम करके जाती हुई G2 एंड बहुत ही बखूबी अपने टाइम आउट का इस्तेमाल किया यहाँ पे। जी हाँ, टाइम आउट का तो काफी शानदार इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने जो आप पेस चेंज की बात करते वो भी करके दिखाया एंड it's looking pretty good for them right now. लेकिन अगर हम historical data की बात कर ही रहे हैं, right? तो Nuke obviously एक G2 का मैप है, but the problem is Inferno, which is also looking very much in the favor of G2. पहला पिक तो Navi का था on top of it. Make matters worse. Yep. अगला मैप Inferno वाला. Is this going to be a quick 2-0? So this could very well be। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो नई नावी है ब्लेड के अंडर वाली जो नावी है उनके लिए न्यूक एक हॉलमार्क मैप बन गया था, एक स्टेपल मैप बन गया था। सो फॉर देम टू लूज इट एंड खासकर उनका टी साइड हॉलमार्क था, वो टी साइड पे इतने कम राउंड्स उन्होंने बिटोरे कि उन्होंने they left it all to do on the CT side। और कई बार क्या होता है जब आप वो प्रेशर में हो you don't have enough to defend, तो ये आता है वो प्रेशर आ जाता है कि यू हैव टू प्ले परफेक्ट एवरी राउंड और वो परफेक्शन का जो प्रेशर आता है उसके अंडर यहाँ पे नावी बिखर गई। बिल्कुल सही कहा आपने जी, जो प्रेशर होता है वो आसान नहीं होता है कि आपको बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं मिल रही है। यहाँ पे एक भी गलती करेंगे तो फिर आप मैप हार जाएंगे, तो मुश्किल जरूर होता है। बट विल रन द नंबर्स आल्सो, आपके लिए जितने भी नंबर्स है। लेकिन जेफरी कह रहे हैं कि नीको ने 2021 का न्यूक का गुस्सा सारा निकाल दिया यहाँ पे। आई बिलीव दैट्स राइट, जरूरी था उनके लिए, बट आई थिंक दैट्स अ वेरी ओल्ड स्टोरी यार, उनको अब नहीं फर्क पड़ता होगा उस चीज से। या आई डोंट थिंक सो उतना भी फर्क पड़ा होगा उनको, बिकॉज अगेन प्लेयर्स लाइक दीज यू आर ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड फॉर अ डे 2 days और फिर उसके बाद इट्स जस्ट नॉर्मल रूटीन, यू गो बैक टू योर नॉर्मल रूटीन। इसी के साथ हम लीडर बोर्ड पे देखते हैं SRY 4531 SRY टॉप पे चल रहे हैं, उनके साथ 3 जन और नादिम, मदलेश और ब्रियान। थॉर यहाँ पे 5th चल रहे हैं। टॉप 10 में अक्षय भी हैं, निक्सी भी हैं और कैटलेन भी हैं। ये अच्छा याद दिला, मैं खुद ऐप खोल के यहाँ पे चेक करना चाहूंगा कि क्या स्टैट्स चल रहे हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए मैच के। यहाँ पे मेरी टीम थोड़ी दूर 118 स्थान पे। अनफॉर्चुनेट तो है। चलिए मैं जाता हूँ CSGO पे एंड विल सी यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है। बट मैं ऑडियंस से जानना चाहता हूँ जो चैट में बैठी है अभी मैच देख रही है, Where does your team stand? आपने क्या प्रेडिक्ट किया था, कौन से प्लेयर्स सिलेक्ट किए थे यहाँ पे? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे इसके बारे में आप, इस मैच के बारे में गॉडस्पीड? वेल आई थिंक सो वही हुआ कि
G2 द मोर रिफाइंड साइड अभी नावी के अंदर जो चेंजेस हुए हैं उसके वजह से थोड़ा सा अस्थाई था उनका टी साइड। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो स्मोक्स का टाइम पे नहीं पड़ना और उसकी वजह से 3 किल्स जाना। दीज आर साइंस कि आपका जो कोऑर्डिनेशन जो लय है वो भी नहीं है, तालमेल भी नहीं है फिलहाल, और थोड़ी बहुत कहीं आईजीएलिंग में भी गुंजाइश सी बाकी रह गई, बिकॉज बहुत ही वन डायमेंशनल हमें देखने को मिला था नावी का टी साइड। ऐसा एक पॉइंट पे भी नहीं लगा कि नावी कहीं पे G2 को प्रेशर कर रही है या उनके डिफॉल्ट्स निखर के आ रहे हैं। उनके डिफॉल्ट्स बहुत ही फ्लैट थे, अगर मैं बोल सकूं तो। जैसे कि आपने बोला कि ऑलमोस्ट पैसिव इंफॉर्मेशन वाला एरा वापस देखने को मिला था। वो कहीं पे भी कुछ हलचल नहीं कर रहे थे, कहीं पे इंफॉर्मेशन फेक नहीं कर रहे थे, और जहां पे फेक कर भी रहे थे वहां पे इतना ऑब्वियस हो जा रहा था कि G2 के प्लेयर्स ऑलरेडी तैनात थे दूसरी जगह पे। और ऐसा आई थिंक सो बहुत कम राउंड्स नावी को मिला है जहां पे उन्हें प्लांट भी मिला। और जब जब प्लान मिला मोस्टली उन्हें कन्वर्ट तो किया, बट अगेन वो साइड तक पहुंचने की जो बात है वहां पे कहीं पे धराशायी कर दिया G2 ने नावी को। और इसी के साथ न्यूक उनके खाते में। और आपने जैसे बोला न्यूक नावी का पिक था, अब इन्फर्नो का पिक। ऑनेस्टली मैं अगर सच बताऊं तो मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि नावी न्यूक जीतेगी और G2 इन्फर्नो जीतेगी और हमें डिसाइडर देखने को मिलेगा। बिकॉज अगर मैं सच बताऊं तो इन्फर्नो पे ये जो G2 की टीम है, जैसे आपने बोला एस्ट्रलिस का जो यूटिलिटी यूसेज है, इस G2 के भी आप देखेंगे यूटिलिटी यूसेज बहुत ही कमाल का है। जी हाँ, इनका यूटिलिटी यूसेज बहुत कमाल का। आई थिंक वो अब चीज चेंज हो चुकी है। बट मैं बात कर रहा था इनके हिस्टोरिकल डेटा के बारे में, क्योंकि देखिए फर्स्ट मैप पिक था नावी का, आपने बताया था क्यों वो मैप पिक था। सेकंड G2 का मैप पिक है, नावी का ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैप नहीं रहा है ऊपर से। देखो 40% विन रेट, राइट। बट अगर आप हेड टू हेड की बात करें तो प्रो लीग सीजन 16 में जब खेले थे एक दूसरे के सामने इन्फर्नो पे, G2 69 जीती थी यहाँ पे। एंड इफ यू गो ऑल द वे बैक, राइट, कैटोविच से 2022 में वहां पे भी G2 जीती थी 16-12। सो इफ यू लुक एट numbers only, right, without context, G2 definitely seems to be the stronger team यहाँ पे। अब सवाल ये बनता है, can they keep up with the same pace and the same performance that they've had in the past, कि उसी लेगेसी के ऊपर उनको बिल्ड करना है। क्या लगता है आपको? ये बिल्कुल, मतलब आपने ये जो बोला बहुत ही सटीक चीज बोला। और मुझे बस यही देखना है कि आगे जाके ये जो 2023 का जो साल है, ये अभी जो शुरू हो रहा है, अभी G2 और नावी ये जो दो है, नावी को ऑब्वियसली आपको पता होगा कैटोविच से जस्ट आने वाला है, और वो कैटोविच में यहाँ पे G2 की टीम बहुत ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी दावेदारी के साथ जाएगी। दूसरी तरफ नावी नावी को बहुत यहाँ पे संघर्ष करना पड़ेगा अपने तालमेल और ये सब बैठाने का। आई थिंक ये टूर्नामेंट वो यूज कर रहे हैं एज अ सैंपल देखने के लिए कि कहाँ क्या चूक है और कहाँ उनको इम्प्रूव करना है। और यहाँ पे अमन थापा बोलते हैं कि जब से बूस्टर्स आए हैं तब से वो हार रहे हैं। वेल, बूस्टर्स की यही बात है, बूस्टर्स बहुत ही टेक्निकली आपको लगाने पड़ते हैं, जहां पे आपको जैसे हेडशॉट का बोला गया, नॉर्मली बिट का परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज वाइज जाओ, जैसे बोला जाता है हिस्टोरिकल डेटा या स्टैट्स के वाइज जाओ, तो निको और बिट के बीच में बहुत डिफरेंस है फिलहाल। बट अगेन अगर आप नॉर्मल लॉजिक से जाओ तो जैसे कि मामा ने बोला, निको एज अ प्लेयर was always sort of called the second headshot machine। मतलब आफ्टर स्क्रीन किसी को हेडशॉट के लिए जाना जाता था तो वो निको के लिए था, वो वन टैप्स के लिए, वो जिस तरीके से खेलते थे। जब तो वही है कि इसीलिए बूस्टर्स क्या है ना, इसीलिए आपको बोला जाता है कि क्योंकि आप 20 टीम्स बना सकते हैं पर यूजर, तो आपको सिर्फ टीम के सिलेक्शन के साथ ही नहीं खेलना है, क्योंकि आप बूस्टर्स के साथ भी खेल सकते हो। एक बूस्टर में आप स्टैट्स के साथ जाओ एक बार एक टीम में, और दूसरे टीम में आप बूस्टर के साथ जाओ जो आपका लॉजिक जो बोलता है, बिकॉज लॉजिक और स्टैट्स अलग अलग होते हैं। अगर आपने हमारे ब्लॉग्स पढ़े होंगे उसमें भी वो लिखा हुआ रहता है कि एक आपको सजेशन जो दिए हुए रहते हैं वो बाई स्टैट्स दिए हुए रहते हैं, और दूसरा अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द राइटर या ऑथर दिया हुआ रहता है। तो बिल्कुल वैसे ही आपको बनाना है टीम्स, अमन। या बूस्टर्स आप अगर स्मार्ट तरीके से यूज करेंगे तो आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। एंड बिल्कुल सही कहा गॉड स्पीड ने यहाँ पे। अगर आपको पता है कि एक प्लेयर की ये स्ट्रेंथ है, आपको पता है कि ये नॉट इवन स्ट्रेंथ है, ये उनकी प्ले स्टाइल बन चुकी है बिकॉज ऑफ वट एवर फैक्टर, तो वहां पे आप उसको यूज कीजिए एंड आप काफी अच्छे पॉइंट्स निकाल पाएंगे। बट आई बिलीव we'll take a quick breather right now over here, GodSpeed. Yep, we'll go for a small break। वापस आएंगे तब होगा आपके सामने इन्फर्नो
और देखना ये पड़ेगा कि क्या नावी कमबैक कर पाती है G2 के मैप पे, या फिर G2 यहाँ पे इस सीरीज को 2-0 से जीत के ले जाएगी। हाँ
All right, ladies and gentlemen, we're back with the watch party. Of course, पहला मैप हो चुका Navi struggling, if I put it nicely, in the first half. And second half में उन्होंने कोशिश काफी करी, but G2 is looking super strong. यहाँ पे दूसरा मैप भी शुरू हो चुका है. Godspeed, what do you think about this one? क्या सोच है आपकी? Well, मेरी सोच फिलहाल सिर्फ दो चीजों पे जा रही है, सिंपल और परफेक्टो के गन चॉइसेस पे, और मुझे बस वो देखना है. दोनों ने डुअलीज बाई की है और मैं देखना चाहता हूँ कि वो किस तरीके से यहाँ पे काम आएंगे. बिकॉज सिंपल यहाँ पे ए पे तैनात है जो स्पैम पोजीशन होती है साइड की, और इलेक्ट्रॉनिक भी उन्हीं के साथ वहाँ पे पिट की तरफ है. तो नहीं, यहाँ पे बिट है एक्चुअली. सिंपल यहाँ पे उनके सामने प्लेयर्स आते हुए और ये डोलीज एक जन को ही डाउन कर पाएंगे. ड्यूलिस एक इंसान को डाउन करता है. एंड इट्स सो फनी टू सी ड्यूलिस की मेटा में आ गया, राइट? क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर जब शुरुआत यूज करते थे वो सो बैड कि it was unusable, लेकिन अब मेटा में आ चुकी है. सो इट्स ग्रेट टू सी दैट. बात करें नावी के बारे में, they've decided to fall back. G2 पहला राउंड काफी डोमिनेंट फैशन में यहाँ पे अप्रोच करते हुए, एंड 3 प्लेयर्स बाकी, फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि वो सेव करेंगे. यूटिलिटी की बात करें उनके पास सीटी साइड पे, तो काफी यूटिलिटी सेव कर रहे हैं. अगर बात करें स्पेशली यहाँ पे नीचे, you have 2 flash, no, a flash, is that फ्लैश स्मोक? yeah, that is a smoke. बहुत ही अजीब सा वो. हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था मुझे भी कुछ टाइम. नहीं बट ठीक है, $800 वहीं पे उनके खर्च हो गए. हाँ, बट एक काफी अच्छा अप्रोच किया था उन्होंने. 2 प्लेयर्स ने डबल पीक किया था. सिंपल है, क्या ही करूं यहाँ पे, क्या ही करूंगा मैं. हाँ, ये मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि काउंटर स्टार्ट होके आए हैं, अब करके आए हैं ये G2 की टीम. जैसे आप देखिए, जो एक एरिया नावी नहीं पकड़े रखी थी, सिर्फ वहीं से उन्होंने पूरा डायरेक्शन अपना It was a hard counter start. या बिकॉज़ जिस तरीके से उन्होंने सिंपल को भी अप्रोच किया था वहां पे, वो नजर आ रहा था कि वो प्रिपरेशन के साथ आए थे. वो वाजंट रैंडम जंप करते हुए साइड में घुसना. दे ऑलरेडी एक्सपेक्टेड कि आई थिंक ये नेड उनकी नहीं इंटेंडेड जगह पे नहीं लगी है. उससे मुझे यूआई में ये फ्लैश का जो रिस्पांस है ये बहुत अच्छा लग रहा है. हाँ, I mean, it is Blast after all. oh, Blast definitely has one of the best productions out there. Yep. They actually have a wealth of utility.
See smoke coming out Oof. from Perfect. Lineups. Flash, I think, to set up electronic too, and there it is, the flash. Why not? Oh no, he didn't swing. There were I two think more. so. ये पॉप फ्लैश अगर टाइम पे आएगा तो ये बहुत डेडली साबित हो सकता है, लेकिन नहीं. ओह नो, ओह माय गॉड, व्हाई वुड यू डू दैट? You were in Simples here on the rotation, but the smoke will cut off his sight. Godspeed. I don't know if you can see the disappointment on my face, but Oh, so that is one of my favorite spots to play in Banana, by the way. Oh yeah, If I'm- definitely. If I'm playing Banana, if you have a good teammate and if you have a good sense of timing up, why would you peek that without support? Weird timing there, or if there was some other problem. I don't know. This makes no sense to me. Yeah, maybe उनको लगा होगा कि एक ही प्लेयर है वहाँ पे, इसीलिए. Still, it's about discipline. No, Yep. don't you agree? I mean, I completely agree. I'm just trying to make sense of what you get honestly because There's nothing to make sense of over there. मुझे नहीं समझ में आ रहा बिकॉज जब वो फ्लैश फेंका गया था तब इतना ऑपरचुन टाइम था उनके पास, और अगर उस समय पीक नहीं किया तो ही कुड हैव जस्ट वेटेड अ कपल ऑफ सेकंड्स मोर फॉर अनदर फ्लैश टू कम इन. अगर फ्लैश खत्म हो गए थे ही कुड हैव जस्ट वॉर्डेड ऑफ विद अ फ्लैट स्मोक, जिसको हम फ्लैट स्मोक बोलते हैं वहां पे, और उसके पीछे खेल सकते थे ऊपर चढ़ के हल्के से बॉक्स के साइड में. मुझे बहुत, एक तो इट आल्सो फेल्ट लाइक कि वो बड़ा आधा कमिट किया था उन्होंने, ना प्रॉपर स्विंग किया, खड़े हो गए वहां पे. आई डोंट नो उनके दिमाग में क्या चल रहा था, बट चले जो भी है, इट डिडंट वर्क आउट. आई एम श्योर वो ब्लास्ट में खेल रहा, हम यहाँ पे तो बैठ के हम तो गप्पे मार रहे हैं, वो अलग चीज है. ये बात तो सही है, बट वही होता है कि गलती होती है, गलती होती है. मैं तो कोई भी करे. हाँ. और सबसे बड़ी बात जो आपने बोली, देखिए यूटिलिटीज जो उन्होंने इस्तेमाल की, ऐसा लगा उन्हें पता ही नहीं कि उनकी यूटिलिटीज क्या करती हैं, बिकॉज जो स्मोक इलेक्ट्रॉनिक ने फेंका था कॉफिन से, वो स्मोक उस एंगल को कवर कर रहा था जहां जिस एंगल को वो पकड़ के वाइट पीक कर रहे थे, तो सेंस ही नहीं बन रहा था वहां पे उस चीज का. तो एक चीज मैं समझ सकता हूँ कि उनको कट ऑफ करना था वो पीक करने के लिए, ताकि उनको कोई पीछे से ट्रेड ना करे. भाई उतना भी मैं उनको लीवे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन द वे ही पीक्ड जस्ट डिड नॉट मेक सेंस. I just feel like Navi are the ones here feeling the pressure, और ये उनके गेम प्ले में दिखाई दे रहा है. हमने न्यूक में बात की फेल्ड स्मोक्स की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फेल्ड कोऑर्डिनेशन की. कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो चूक है, कुछ न कुछ तो अमिस है यहाँ पे. लेकिन ये फेक देखिए कितना बड़ा रोटेशन किया यहाँ पे, नीको आगे पुश करते जा रहे हैं बनाना के अंदर. इनके पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होने वाले. I think the perfect play for G2 would be to be able to get a pick on mid and for Nico to sneak into B. But अगर Nico को, अच्छा Nico ने information दे दी, I think this is when they start rotating back unless they get a pick. It is suspicious, and I'm sure he's calling it in, saying, "I have no feeling that anyone is here." Top mid, Deagle rings out. Okay, this is the cue for them. Oh, that was such a good fake. See this? These mind games. नीको का डिसिप्लिन देखिए, उन्हें पता है अकेले साइड क्लियर नहीं कर सकते. हाँ वो रिस्क ले सकते थे सीटी पुश करने का, जैसे उनके टीममेट्स आएंगे उनको साइड में पुश करा के पीछे कंट्रोल लेके, कॉफिन का कंट्रोल लेके सीटी एग्रेसिव खेलेंगे जरूर अपने टीममेट के साथ. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे नीड टू डू, बिकॉज़ उन्होंने C4 प्लान कर दिया है. अब उनको डिले करना है उनके सामने वाली टीम का पुश. ये देखिए कितना ज्यादा एग्रेसिव सेटअप खेल रहे हैं. जी हाँ, और मोनेसी को यहाँ पे फार्म कराएंगे. $4000 उनके बैंक में. ऑप उनको निकालने की जरूरत है मेरे हिसाब से, वो लोग बोल रहे होंगे, तो जरूर ये मैक 10 से उनको फार्म कराया जाएगा यहाँ पे. और यही फार्म करने की तरफ बढ़ते हुए आर्चेस की तरफ जा रहे हैं. वहां पे 2 प्लेयर्स तैनात जरूर थे, पर अब वो साइड की तरफ बढ़ चुके. Kind of a scary position to be in too, because he's doing all that work checking the B bomb side with the AK. Oh, G2, such a good round. No flags exchange, right? एक भी टीम पे एक भी प्लेयर वहां पे एलिमिनेट नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फेक किया, जैसे ही नीको ने मूव अप करना चालू किया था, राइट, वहां पे लग रहा था मुझे हल्की हल्की से वाइब आ रही थी कि नहीं शायद ये फेक करके जाएंगे जरूर, और कोशिश करते कि एक पिक निकाले ताकि पूरा कमिट कर लेना भी यहाँ पे. बट अनफॉर्चुनेटली वो पिक नहीं मिला, लेकिन नीको की दाद देनी पड़ेगी. बहुत इंपॉर्टेंट प्ले था, उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी वहां पे, उन्होंने बखूबी निभाई. जी बिल्कुल. Obviously took a while for Navi or for G2 Listen, to close out the previous. नहीं वो तो एंगल वैसा, हमने is he playing on 4x3 monitor? See if they're able to continue. ये मेरी नजर तो उनके फेंके हुए फ्लैश के ऊपर पड़ी जो ड्रॉप कर रहे थे. ये चीज मेरे लिए कभी भी नॉर्मल नहीं होगी. मैं जब भी इसको देखूंगा मुझे अजीब सा तो हमेशा ही लगेगा, बिकॉज being able to drop utility. I think the one thing that pissed me off the most, right, was the fact that उन्होंने जब डिफ्यूज करने के एनिमेशन में वो तार ऐड कर दिए थे. अरे
नॉट जस्ट दैट, जब ऑप नर्फ आई थी आपने मूवमेंट स्पीड नर्फ करी, अब आपने गोलियां भी नर्फ करनी है, intentionality तो we're talking about, and you can sometimes I feel see like just if anyone is there, काम it करो, feels like he's just going to win that fight every छोड़ ही दो time. भाई। Maybe for Navi, बट it's वही होता है कि they're not giving कुछ him a कुछ lot प्लेयर्स of के वजह से नर्फ आते हैं। अगर आपको याद होगा, जो जैसे आपने बोला सीजी नर्फ जेडब्ल्यू के वजह से आया था, हाँ just maybe let वैसे ही ऑप नर्फ केनी इसके वजह से आया था। अरे कहनी तो भाई, could do something more. He's jumping और on the sandbags. कुछ ऐसे प्लेयर्स आ जाते हैं जिनके वजह से, अब जैसे एस्ट्रलिस के पूरी टीम के वजह से स्मोक नर्फ आया था, स्मोक बफ आया था, Just enough. I can't believe बिकॉज it. उन्होंने इतने किल्स लिए थे स्मोक के थ्रू कि वो जो एनवीडिया सेटिंग्स और ये सब की बात की जा रही थी, ये सब की बात की जा रही थी, उसके बाद स्मोक का हल्का सा बफ आया। The double तो entry off the back of the assist. ऐसे कुछ क्षण होते हैं, जैसे बोलते हैं मोमेंट्स इन हिस्ट्री, जो शेप करते हैं एक पूरे गेम को, ये हमको देखने को मिलता है। To somehow पहले वो भी होता था स्मोक के पीछे अगर ग्रेनेड डाल रहे हैं elbow. तो आपको दिखता आउटलाइन है। दिखती है, हाँ, And his vision, it's आप फिर बीच में funny. मोलोटॉव का एक चीज था, अगर आप मोलोटॉव के Yes. नजदीक बैठे हैं तो आपको वो नहीं दिखता, He's gonna try and make a काला little bit of धुआं। jump to look over यस, and that और वो भी था कि अगर स्मोक में मोलोटॉव करेंगे तो एक सेकंड के लिए आपको पूरी तस्वीर दिखेगी जेरोक्स की तरह साइड में। तो Don't know how much he वही बात है, see this. देखिए यहीं पे आपको समझ में आता है ना कि जो हम माइनर डिटेल्स की बात करते थे कि कहाँ पे और कैसे कोई टीम बेस्ट बनती है। एस्टलिस अगर चाहती तो ये सब पे ध्यान नहीं दे सकती थी, पर एस्टलिस ने वो जो मेटा को चैंपियन किया था, सिर्फ यूटिलिटी का ही नहीं, वो स्मोक के किल्स, फनाटिक के हम बात करें, फ्लशा कितने माहिर थे स्पैम्स और Senior smoke whack. kills में। Yup. Probably not. Around the smoke, I think they really did away with letting those dots appear. बट आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दर्शाता है यहाँ पे, अगर आप एक प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहते हैं, इट्स कॉल्ड द एग्रीगेट ऑफ मार्जिनल गेन्स, और ये एक किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसमें उसके बारे में चर्चा की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप जहाँ से भी आपको एडवांटेज मिले, आप एक परसेंट की एडवांटेज इकट्ठा करना चाहेंगे, बिकॉज एज अ होल इट दो स्मॉल मोमेंट्स, वो छोटे छोटे प्लेस, छोटी छोटी विक्ट्रीज आपको पूरी मैच पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आती है। Yup. Who is I whispering? mean, it goes hand in hand with the psychology of flow. Nico used the कि वो जो ये माइनर डिटेल्स है, इससे आप कन्वर्ट करते हैं राउंड्स को, और जब राउंड्स कन्वर्ट करते हैं तो एक तरीके से आप अपने आप को एक मेंटल बूस्ट चाहते हैं, और धीरे धीरे वो जो फ्लो आता है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ योर गेम और योर सबकॉन्शियस, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अ स्ट्रीक और अ फॉर्म और रेड डॉट फॉर्म, उस तरीके से भी फिर वो एक्सटेंड करना और उसको स्नोबॉल इफेक्ट में कन्वर्ट करना, ये सब वो माइनर डिटेल से ही हो सकता है। जो इनफैक्ट मामा ने भी बोला एग्रीगेट ऑफ मार्जिनल गेम्स होता है, दैट इज एग्जैक्टली हाउ अ स्नोबॉल इफेक्ट टेक्स प्लेस। in this tournament. It seems like they really are okay with settling. एक काम करते हैं, इसके बाद हम esports philosophy पॉडकास्ट ही कर लेंगे, Opponent executes. आओ दोस्तों बातचीत करेंगे। Because I feel like we've spoken about so many things, right, that people overlook, especially जो नए players होते हैं। I believe ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। जी बिल्कुल, और यही होता है कि यही बेसिक्स में आपको इनकलकेट करना पड़ता है। और करीमत वही है कि मैंने अपने कोचिंग में वही किया है कि यंगस्टर्स हो या कोई भी प्लेयर्स हो, इंडिया में भी जब ट्रैकिंग और सब जैसे टीम्स में मैं कोच कर रहा था, मैंने बस उनको बेसिक्स के फॉर्मुलेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, ये सब जो होता है। और आज वो लोग उस चीज के वजह से थोड़े बहुत सक्षम हैं खुद से सब कुछ करने में। तो ये सब देख के अच्छा लगता है कि जब टीम्स या प्लेयर्स इन सब चीजों को सीरियसली लेने लगते हैं। Turnaround from Navi. Just great reaction, excellent protocol from Navi, recognizing where. Honestly, यहाँ पे देखिए, I like the confidence. इनके पास इतना confidence होता है, वो बिना स्कोप खुले, बिना गन स्विच करे आराम से घूमते रहते हैं। उनको पता है exactly गोली कहाँ पे लगने वाली है उनकी। And ये बहुत जरूरी होता है, इतना confidence as an operator। I feel like अगर आप एक skilled operator है, तो फिर आप जो RNG उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। I still remember जब कोल जरा ने वो जंपिंग शॉट्स मारे थे मिराज में, मिराज को it was a matter of debate कि was it luck or was it skill? Yes, it was luck, but there was skill involved. And मैं अभी तक उस चीज को डिफेंड करता हूँ, and the reason is whenever अगर आप उनके शॉट्स देखेंगे, उन्होंने कूद के ऐसे शॉट्स नहीं मारे थे, उन्होंने मिड एयर स्ट्रेफ किया था, which increases this probability of you hitting an accurate shot. And to prove a point, I was playing with my friends, मैं उनके साथ एक पिकअप गेम खेल रहा था, सेम मैच में 2 बारी अलग अलग राउंड्स में मैंने वो चीज करी थी,
call करके कि I'm going to try this, it's going to work. Sure, it doesn't work, let's say 7 out of 10 times. There are 3 times. अगर आप counter strafe नहीं करते तो बिल्कुल shot नहीं लगने वाला. अगर आप no scope op की बात कर रहे हैं, by the way, there's a way where आप no scope op को भी fairly accurate बना सकते हो और बना सकते थे, at least in the past. Is you don't scope in, but you counter strafe, and in that moment जब आपकी velocity 0 होती है, आप जब counter strafe कर रहे हो तो in that moment the op is actually fairly accurate, even as a no scope. Yep. This is a rerun. I've seen this exact thing happen last round, Anders. That is very true. और अगर आपको इसका एक चीट फॉर्म देखना, चीट फॉर्म इन द सेंस कि लोग शॉर्टकट्स जो यूज करते थे वो ये थे कि लोग मॉनिटर में जो आजकल क्रॉसेस आते हैं वो ऑन कर देते थे. बचपन में मैंने बिंदी लगाई थी एक बार मॉनिटर पे. जो 1.6 के थे, बट 1.6 में तो ऐसा होता था कि आप मॉडल ही चेंज कर सकते थे, तो उसमें क्या होता था कि मॉडल के ऊपर ही क्रॉसर लग जाता था जी. वो चीजें तो नहीं कर सकते, बट यार वो भी कुछ अलग जमाना था, वो भी कुछ और दिन थे. हाँ, वहाँ पे बाइंड होते थे लेफ्ट हैंड राइट हैंड के. मेरे को अभी I still remember मैं एक टूर्नामेंट थी CYC करके. I'm sure जो लोग देख रहे हैं जिन्होंने 1.6 फॉलो करी, I'm sure Ashwin might know this because उन्होंने मैनेज करी थी वो. उस जमाने में कोई वैसे चेक्स नहीं होते थे. The only thing जो एक एंटी चीट आती थी वो थी आपकी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके अपलोड करती थी वो, और उसमें भी हैकर पकड़े गए थे. He is a man of the Enlightenment period. We can isolate all the variables. Yes. जी हाँ, वही डिफरेंस आ गया फिर CSGO में. जब हम आए, पहला ही टूर्नामेंट जो मैंने खेला था ESL का किसी के लिए स्टैंड इन बन के, बिकॉज़ उस समय मैं CSGO चालू नहीं किया था. मैंने 1.6 खत्म होने के बाद डोटा खेल रहा था. जैसे कि मैंने बोला, मैं डोटा बहुत ज्यादा घुस गया था डोटा में, तो मैंने CSGO खेला एक टूर्नामेंट. और इनफैक्ट जिसके लिए खेला वो अभी मतलब आई थिंक सो बहुत ही अच्छे तरीके, बहुत अच्छे जगह पे इंडिया में प्रोडक्शन सीन में. तो मेरे को याद है मेरी पिंग थी शायद 190 या 180 कुछ, और ट्रेन मैप था. और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था मेरे साथ कि उस समय हमारे साथ ऐसा हुआ था कि पहली बार मॉस और वो सब आया था कि मॉस करना है, ये करना है. एंड बहुत पेचीदा चीज थी, बिकॉज मॉस से क्या होता था, अगर आपकी पीसी अच्छी नहीं है तो फिर खत्म था केस. गुड ओल्ड एज भाई, गुड ओल्ड एज. जब सोचना पड़ता था यार FPS नहीं आ रही है. बट एक सेटिस्फैक्शन भी फील होता है कि अब हमारा काम बन चुका है, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी ऑफ दैट. हाँ, कि आपको 300 FPS कांस्टेंट आ रही है, तब तो भाई 100 FPS आ जाए बहुत होता था. FPS अंडरस्कोर मैक्स 101. इसीलिए मैं बहुत खुश भी होता हूँ कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, जो प्रोडिजीज हैं, या जो भी एस्पायरिंग एथलीट्स हैं, e-sports एथलीट्स, उनके पास जो एवेन्यूज हैं वो हमारे उधर नहीं थे. इसका मतलब ये नहीं कि हमको निराश होने की जरूरत है, हमको बल्कि खुश होना चाहिए कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनके पास ये सारे एवेन्यूज है. तो हो सकता है कि बहुत सारा टैलेंट उभर के आए और हमारे इंडियन सीन को वो प्रोपेगेट करे. True. But let's see निको क्या करते हैं यहाँ पे ऑप लेके. मुझे लगता है इनको ना एक 180 मारने में ना वो ऐसे चार बार टेबल पे हाथ घुमाना पड़ता है, ऐसे ऐसे ऐसे. ऑनेस्टली यस. देखिए इनके जो सेंसी है ये, अगर इनका फुल फेस जब दिखाया जाएगा, देखिए इनका शोल्डर जो मूव करेगा, नहीं अभी मूव नहीं कर रहे, इनका शोल्डर मूवमेंट आपको दिखाया था कितना वायलेंट रहता है इनका शोल्डर मूवमेंट. जी. Oh God. Oh, simple. Why do you do this, simple? Why do you do this? Okay. It's something. First time I've been again for the अच्छा time out. Simple is just, he's just insane. Yep. Very much so. मतलब पर सबसे बड़ी बात ये, सिंपल ये सब करके भी नावी 5-2 से हार रही है. I think we finally come to a consensus यहाँ पे, यार come to a standstill एक ऐसे जगह पे CSGO के मेटा में जहाँ पे one player is now not enough to give you those wins. 2020 2021 तक था. 2022 में ये मेटा
बाहर जाने लगा कि एक प्लेयर चाहे 50 किल भी मार दे फिर भी उनकी टीम हार जाया करती थी, और अब तो बिल्कुल ही देखने को मिल रहा है कि 2023 के शुरुआत से कि एक प्लेयर कभी डिफरेंस मेकर एक हद तक ही साबित हो सकता है। पहले जैसा मेटा नहीं रहा है, एवरीबडी हैज ग्रोन एज वर्ल्ड इंडिविजुअली एंड एज अ टीम, और वो दिखाई देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, वो दिखाई जरूर देता है, उसमें कोई कोई दो राय नहीं है। एंड ये जरूरी भी है, and it's something that happens with time. I think there's no doubt about that. Why not just make sure he cannot even get close? Well done. इसमें कहीं ना कहीं बाकी गेम्स का भी योगदान रहा है कि जो बाकी गेम्स आ गए हैं तो कुछ प्लेयर्स जो छोड़ के भी चले गए, तो सीएसगो में वही बचे हुए हैं जो एक्चुअल में बेसिकली सीएसगो को बहुत ही ज्यादा पैशनेटली या who live and breathe CSGO। और जब वैसा होता है तो अल्टीमेटली आप ये सब की तरफ जाते ही हो। यू विल इवॉल्व इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग्स एंड इफ योर इंटेंट इज करेक्ट। इसी के साथ 4v5 की स्थिति यहाँ पे बहुत ही अच्छी यूटिलिटी देखने को मिली थी नावी के द्वारा। परफेक्टो के नीड से यहाँ पे डाउन होते हैं, पर मोनेसी यहाँ पे बिट को स्मोक के थ्रू एक पिक्सल मिला था बस उनको, और उसी पिक्सल का फायदा उठाते यहाँ पे जेकेएस पहला किल लेने में सफल, बट परफेक्टो को नहीं डाउन कर पाएंगे। यहाँ पे G2 के दो प्लेयर्स आते हुए, मोनेसी यहाँ पे अगेन। मुझे मोनेसी की ओपनिंग देख के केनी एस की बहुत याद आती है, ऑनेस्टली बहुत ज्यादा याद आती है। Kenny S was a different beast. Imagine if Monacy had the old op. Oh, the Kenny S op. Oh, the Kenny op. I still remember Inferno पे उनका clutch I think Titan के लिए खेले थे तब वो निप के against या Fnatic, I think it was निप के against उन्होंने निकाला था पुराने Inferno पे, एकदम पुराने Inferno पे जो क्लच निकाला था। आई थिंक वाज अनबिलीवेबल जिस तरीके से उन्होंने खेला था, बट मेरे को अभी याद है आप जो ये बात बोल रहे हैं, जब वो टाइटन के खेलते थे तब कॉबलस्टोन को तो लोग हाथ नहीं लगाना चाहते थे टाइटन के अगेंस्ट बिकॉज ऑफ केनी एस। कॉबलस्टोन पे केनी एस अकेले, मेरे को अभी याद है ड्रॉप पे ऑप करते थे वो, मतलब एक ऐसी जगह जहां पे ऑप नहीं की जा सकती वो वहां पे ऑप करते थे। वो शॉटगन थी, ऑप नहीं थी, वो शॉटगन थी। बट मोनेसी की अगर आप देंगे, जैसे सिंपल की हम बात करें एज एन ऑपर, ही इज मोर इनटू सॉर्ट ऑफ रॉ जो होता है, थोड़ा फिजिकल ऑपिंग है उनकी, बहुत ही डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करता है। वहां पे केनी एस ऑन द अदर हैंड वाज जस्ट जैसे कि आपने बोला एफर्टलेस ऑपिंग। आई थिंक अगर एक बहुत ही अच्छा कंपैरिजन करूं मैं तो इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ कंपैरिजन बिटवीन मेसी एंड रोनाल्डो, जहां पे मेसी इज मोर प्लीजिंग टू द आई, राइट? लाइक आप देखोगे आपको प्यार हो जाएगा उस चीज से, बिकॉज इट्स अ प्योरिस्ट। Like as a football purist, you cannot hate what Messi does. Similarly, as a CSGO purist, you cannot ever hate what Kenny S does. But simple ये दिखाता है कि टैलेंट के ऊपर काम करते रहने से आदमी कहाँ तक पहुंच सकता है। और मोनेसी मेरे को सिंपल की जगह थोड़ी बहुत केनी एस के याद दिलाते हैं, उनका जो नेचुरल टैलेंट है और उनका जो एफर्टलेस ऑपिंग, आपने जैसे बोला स्कोप्स नहीं करना, नो स्कोप्स, क्विक स्कोप्स, ये जो बहुत ही एफर्टलेस तरीके से जो पुल ऑफ करते हैं, और इनका जो कॉन्फिडेंस आपने बोला बिना स्कोप किए मिड में इधर उधर घूमना, दिस ऑल रिमाइंड्स मी ऑफ वो केनी एस के मैनरिज्म्स। दैट इज ट्रू। आई थिंक आजकल एनी कॉम्पिटेंट ऑपर वो कर पाएंगे, बट वो एनपीएल की बात करें, पहला किल जरूर निकाला उन्होंने, उनको ट्रेड करने की जरूरत, लेकिन ट्रेड नहीं निकाल पाएंगे। बिट की पोजीशनिंग बेहतरीन एंड एनपीएल स्टिल अलाइव। एनपीएल, ओह माय गुडनेस, किस तरीके से यहाँ पे वो होल्ड करे, आई एम नॉट श्योर, बट मोनेसी इन 1 वर्सेस 4 जी नहीं बिट, और एनपीएल ने जिस तरीके से उस साइड को लॉक इन किया था एंड लॉक डाउन किया था, वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाला था, क्योंकि ट्रेड नहीं निकाल पाए। एंड आई बिलीव while we answer the questions, Abdullah का question है कि will we ever in Valorant see a mental like CSGO where so many save rounds will be there? No, different games. You can't. These are different games. You can't compare these two. But एक आध राउंड कास्ट करके भी देखते हैं, Godspeed if you're into it. We'll see how this goes. Yep. पर जहां तक अब्दुल्ला का सवाल था, आई वुड आल्सो से कि वैलोरेंट में भी आप कुछ टीम्स को देंगे, ऑप्टिक एंड एफपीएक्स जैसी टीम जो एक्चुअल में फेवर करती है अ लॉट ऑफ सेव राउंड्स, बहुत सेव करने की तरफ हो जाते हैं। एंड वो जो दो टीम्स है, दोनों टीम्स का आईजीएल वर सॉर्ट ऑफ सीएसगो के बहुत ही धुरंधर आईजीएल्स,
एंड जस्ट शोज कि वो CSGO फिलॉसफी अभी तक थोड़े वो वैलोरेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे G2 Esports इवन तो टेरेस साइड पे स्टार्ट किया उन्होंने 5 राउंड निकाले थे, अब नावी धीरे धीरे अंदर वापस आ रही है। ओह माय लॉर्ड मॉनसी क्या किल निकाला उन्होंने, सिंपल के ऊपर घुटने पे उनकी गोली लगी थी, 1 HP पे सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे उन्होंने ऑप निकाली है, बहुत ज्यादा क्रूशियल हो सकता है एक और किल 1 HP को, आर यू किडिंग मी मॉनसी। और फाइनली उनका ट्रेड आएगा लेकिन नीको के हाथ में डीगल एंड ही इज एज डेडली एज ह्यूमनली पॉसिबल, परफेक्टो इन अ 1 vs 2। This game brings out emotions that I wasn't aware that I could feel. Like, it makes me feel things that I wasn't aware that I was capable of feeling. मतलब, how this game is just incredible. It is Jumping incredible. P250 shot. It is incredible. Honestly, what in the world was that? And so Hooksy, who was trying to play his own game, And कई बार मैं जब गेम देख रहा हूँ तो मैं सिर पकड़ लेता हूँ, like how in the world do you ever manage to do it? मतलब there are moments ना जहाँ पे you just give up, you say okay I get it, you're better, you're just better. No, better नहीं, just build different भाई। जो laws of physics, laws of game apply होते हैं ना, हमें उनको नहीं होते। नहीं होते। प्लस कई बार होता है ना कि आप कुछ देखते हो और आप बोलते हो मैं ये करने की कोशिश करूंगा, फिर आप जाते हो सर्वर्स पे करने की कोशिश करते हो, कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप बोलते हो नहीं ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है और इसीलिए आई एम आउट। Look at simple. I love his face. Oh my god. I like how he was just like, I can't believe what I just saw. Working in their favor in this one. Also just Electronic was just like straight up he gave up भाई। Electronic like नहीं होगा भाई, ये सहन नहीं कर पाऊंगा मैं। What in the world just happened? Yep. Almost like an anime story arc जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट को अपना नया चैलेंजर मिलता है जो उसी की तरह यंग एक प्रोडिजी है, बट ही इज जस्ट ऑलरेडी so much far ahead than he was at his age. True. Position for Navi when he's able to take that space away. Yeah, risky to try and challenge him, but मुझे इस चीज से पता है ब्लेड की याद आ गई। Wonderful. यहाँ पे I do believe उन्होंने अपने आप के लिए बचा। Wait, was that a like 500 IQ smoke जहाँ पे उन्होंने बोला कि मॉली आएगी मैं पीछे जाऊँ, या फिर he missed it? Missed it because he was aiming on the edge of the wall, but वो भूल से लेफ्ट पे आ गया। Because मैं wonderful बोलने वाला wonderfully like उन्होंने miss किया है, but then I was like hold on, am I understanding this correct? बहुत बार ऐसा होता है कि sometimes even a missed smoke becomes an opportunity or saves you. The philosophy I play by is you miss every shot you don't take, and उस हिसाब से मैं अपनी 120 गोली में स्मोक में खाली कर देता हूँ। Whoops guys, whoopsie daisy. I mean that's true, you do miss 100% of the shots you don't take. Damn, my time to go pro again. Well, it's never too late. यार true. Into some sort of a B split, but they need to win this fight right now. And the crossfire. और संडे टीम बनाते हैं। Check one of these angles. Surely you don't check. बिल्कुल। Especially when Electronic is this far forward. This is so Electronic यहाँ पे again. I just feel कि G2 are doing some unnecessary rotations here. It just wasn't necessary. They felt pressured by the last round and what happened जब वो गए थे CT side से आर्चेस से। They wanted to try something different because नहीं तो वो बहुत ज़्यादा readable हो जाएंगे, और वो something different करने की कोशिश में यहाँ पे गंवाते हुए वो opportunity। एक और बार अगर same ही strat use कर लेते तो कोई कुछ नहीं होता, but again perhaps it is the simple factor। उन्होंने simple को जैसे spot किया A की तरफ, वहाँ पे उनका मिड राउंड वाला अचानक से उनको आर्चेस की तरफ जाने का आ गया। बट अगेन आई थिंक G2 आर फेसिंग एडवर्सिटीज अप अहेड एंड अप फ्रंट फेस टू फेस, और वही G2 फिलहाल लीड कर रही है। आई डोंट थिंक दे नीड टू एक्चुअली गो और चेंज देयर गेम प्लान जस्ट बिकॉज सिंपल इज स्टार्टिंग टू कम अलाइव इन ऑन द सर्वर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। एंड I'm just laughing at G2. I'm just scoffing at what? Like they win downs that they have no business winning and then throw कर देते हैं। Yep. I mean that is G2 to the core, right? Abdullah, आपकी बात सही है कि 6-5 for G2 on terrace side is good, but it's better to have, you know,
would have probably 11-0. stronger for them, but Abdullah, he wants to hold on to I'll this. give you the perfect analogy. Respect that decision. It's like आप FanClash के contest में 100 रुपए जीतते हो 19 रुपीज एंट्री फी डाल के, ठीक है? Technically you should be happy, right? But what if you saw the live leaderboard at one point you were winning 1000 rupees and then you come down to 100? You will again, वो जो notional gains की हम बात करते हैं, प्रोस्पेक्टिव जो आप प्रोस्पेक्टिवली जीतने वाले थे, आप उसको एक्चुअल समझ लेता है आपका दिल कि यार मैं तो 1000 जीतने वाला था, 100 जीत के कैसे, मतलब अफसोस होता है आपको, जबकि असल में यू हैव एक्चुअली गेन्ड. अगर एक्चुअलिटी की बात की जाए तो आपने 19 रुपीज इन्वेस्ट करके 100 रुपए जीते. तो वही चीज यहाँ पे है कि G2 बेशक 6-5 से लीड कर रही है, ऑब्जेक्टिवली उनको खुश होना चाहिए, बट अगेन टॉकिंग अबाउट प्लेन लॉजिक, यहाँ पे G2 कुड हैव बीन मच फर्दर अहेड. Could have got that, it would have been different, but NPL will take it down. G2 definitely could have been much further ahead, no doubt about that. Maybe even more so. But, They win the round, they tie up the game. 6-6 चल रहा है अभी भी. It's not too late. They can definitely make a comeback in terms of having that lead and being that dominant. Because अगर यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है, अभी राउंड्स नहीं जीते तो सेकंड हाफ में उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर होगा. अगर गलती से भी पिछले राउंड हारते हैं, then Navi can mount a comeback. And वो mental comeback होगा more than anything else. They tested the strength of this B-hold with a full-on एंड ऑब्वियसली हम अगर नॉर्मल प्योर लॉजिक की बात करें तो हमेशा यही बोला जाता है कि जो सेकंड मैप जीतती है और अगर डोमिनेंट तरीके से जीत पाएगी तो दे गो इनटू द थर्ड मैप विद सॉर्ट ऑफ अ मोमेंटम एडवांटेज एंड दैट क्रिएट्स एन एज नॉर्मली जो नहीं रहता. बिल्कुल सही कहा आपने. There's no doubt about that. But यहाँ पे मॉनसी क्या करते हैं आपके साथ, कौन से कुल खिलाते हैं, बिकॉज जो कमिटमेंट है टेररिस्ट का वो टूवर्ड्स बनाना है. एंड आई डोंट नो इफ दे आर ट्राइंग टू फोर्स अ रोटेशन ओवर हियर, बट फ्लैश इस बार रेडी है. जी हाँ, स्मोक भी बराबर डाला गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पीछे हट रहे हैं. आई एम नॉट श्योर इफ दे आर डबल गेसिंग देमसेल्व्स, पर निको इंतजार करेंगे थोड़ी देर के लिए. स्मोक की एज से दे थिंक सो, बट इज इट? I think अभी तो G2 ने डिसाइड नहीं किया क्या करने वाले. They're just defaulting right now. I'm excited. I hope we can get there. It'll be on Mirage. You know that one half. I think banana control लेने के बाद they will try and force a rotation towards A and then take banana. They won't give up banana control for sure. यहाँ पे जिस तरीके से JK's utility का इस्तेमाल कर रहे हैं, sorry, वो कोशिश यही करेगी जितना utility वो force करा पाए A की तरफ वो करा ले, and then once they get a pick towards B, they can fall back to A because utility नहीं होने वाली उनके पास डिफेंड करने के लिए अपने आप को. जी हाँ, पर नावी को यहाँ पे प्रीएम्प्ट कर लेना चाहिए था बिकॉज जेके ने जो मॉली डाली थी वो उन्हीं के मिड पाथ पे गिर गई थी और उससे उनको पता चल जाना चाहिए कि अगर बहुत सारे प्लेयर्स होते आसपास तो उनको जरूर मॉली का डैमेज पड़ता, पर किसी को नहीं पड़ा. इसी के साथ बी पे घुसते हुए यहाँ पे G2 नावी तैनात है साइड के अंदर, 2 प्लेयर्स स्मोक ऑफ कर दिया जा चुका है सिटी साइड को, नेड की डैमेज खाते हुए परफेक्ट तो एक ही जन को ले जा पाएंगे और यहाँ पे G2 साइड का कंट्रोल बरामद करते हुए. ओह Monesi, what a shot. What a goddamn shot, man. It seems like it's possible. 2-on-4, they've been so selective in which fights and which after plans they want to fight for, and this one. I just feel कि आपको याद होगा मंबा की जब बिट आए थे टीम में, फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स उनको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था बिफोर ही फाउंड हिज फुटिंग. आई जस्ट फील लाइक एनपीएल का भी वही फेज चल रहा है अभी. Because by no means is he like not a player that is not good enough. Oh, no way. Oh no! Imagine if he had a smoke. Yep. Imagine if he just had a smoke. बट यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सिटी में जो तैनात थे प्लेयर नावी के, उनकी तरफ से थोड़ी सी चूक होती हुई, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला वो जो मॉली आई थी वो मॉली जिस जगह पे गिरी थी वहां पे अगर और प्लेयर्स होते G2 के तो वो डैमेज खाते, पर वो नहीं खाए. उसका मतलब ये था कि उनको कहीं ना कहीं समझ जाना चाहिए था कि वो फेक हो रहा है. बट वही फिर पता नहीं, हल्की हल्की चूक, थोड़ी थोड़ी गलतियां हमें देखने को मिल रही हैं नावी के तरफ से और उसी का फायदा उठाते हुए G2 यहाँ पे 7-6 की बढ़त. और ये राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट नावी के खेमे के लिए बिकॉज उनकी इकोनॉमी बिल्कुल टैटर्स में है. अगर ये राउंड वो जीत नहीं पाते तो अगले राउंड उनके पास कुछ पैसे बचेंगे ही नहीं बाई करने को. इसी के साथ सिंपल पहला किल लेते हुए यहाँ पे एनपीएल
स्पैम के थ्रू निको को डाउन करते हुए, बट एनपीएल का ट्रेड ले लिया जा चुका है। हुक्सी यहाँ पे ट्रेड लेके 4v3 सिचुएशन अभी बनी हुई है। नावी 1 मैन एडवांटेज और इलेक्ट्रॉनिक बहुत ही बढ़िया नेड इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर, और इसी के साथ 38 एचपी बची है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक की। यहाँ पे G2 परसिस्टेंट है बी की तरफ कंट्रोल बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक को डाउन करते हुए, पर यहाँ पे परफेक्टो तैनात और सिंपल बहुत ही बेहतरीन पिक्सल एंकल। 1v2 की स्थिति अभी हुक्सी प्लान जरूर कर पाएंगे, पर सिंपल और बिट में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है जो कि कवर करना होगा उनको। और बिट यहाँ पे सीटी से थोड़े आगे बढ़ते हुए, सीटी स्मोक जरूर किया जा चुका है। हुक्सी यहाँ कॉफिन की तरफ बहुत ही बेहतरीन एक एंगल बनाते हुए यहाँ पे आइसोलेट करने में वो कामयाब हो सकते हैं, पर दोनों प्लेयर सीटी की साइड से आ रहे हैं और सीटी के इधर से आप साइड में घुसते हुए सिंपल सारे एंगल्स चेक कर रहे हैं। सिंपल को पकड़ लिया है हुक्सी ने। इसी के साथ 1v1 बिट वर्सेस हुक्सी, क्या हुक्सी ये कन्वर्ट कर पाएंगे? ओह, नावी he actually managed to do it. Pros don't fake. I'm pretty sure Oh, speechless. The speechless. Oh, that's heartbreaking for Hooksy. Played it so हुक्सी well. हुक्सी ने पीक ही नहीं किया, ये उम्मीद में कि वो नहीं कर रहे होंगे, It was so पर close. Yeah, Bit did defuse it. Bit did defuse it. Yep. That's just a second too late. So, oh, you can see the frustration. I like how Nico for a moment became Italian. Real life. And paid off. Yeah, it's like our version of अरे वो कर रहे हैं। Time that so well too. यार ये फ्लैश ड्रॉप कर रहा है, मेरे को लगा फेक दिया इसने, मैं लगा हाँ No time to count now though. What the? Oh! Mercy, right through the side of that wall. And G2 are brute forcing their way into this. Honestly, you beast, ये क्या शॉट था? अगर इस शॉट का रिप्ले ये दिखाते हैं, मुझे ये देखना है, बिकॉज I believe दिखाएंगे वो। ऑनेस्टली का जो ये शॉट था, oh my god. Very impressive scoreline to get 8 in the opening half here on Inferno. I don't think they're going to be too sad about it. It could have been way more. I believe they will show it to you. I'm really impressed with how they managed to chill things out on Banana and G2 ये हाफ को जीते हुए 8-7 की बढ़त से जाएगी सेकंड हाफ में, जहां की नावी कमबैक जरूर कर सकती है। 7 राउंड इज नॉट बैड, बट अगर देखा जाए कॉन्टेक्स्ट में तो सीटी साइड में 7 राउंड डेफिनेटली हैज नॉट प्रूवन टू बी एनफ स्टैटिस्टिकली, बट अगेन स्टैटिस्टिक्स आर जस्ट मियर नंबर्स जब आप सर्वर पे होते हो। प्लीज मुझे वो रिप्ले दिखाइए यार। I don't think that's coming in because हमारी स्क्रीन हमारे सामने आ चुकी है, बट ट्विटर पे आ जाएगा क्लिप, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा, ट्विटर रेडिट कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। विश्वास ही नहीं हो रहा। I like how Tane is like Navi attack side player, all good. It's not how it works, brother. That is not how any of this works. I mean, hello, Navi attack side good. न्यूक में कितने राउंड्स मिले थे तने नावी को? भाई तुम तो मर्डर कर रहे हो भाई, तुम you're just like burying with your words itself. But no, that is not how it works, Tane. I believe it also depends on the map and the context. आप जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, these players, it doesn't matter to them. These are the best players in the world, bro. Yep. अगर आप कोई पिकअप गेम खेल रहे हो तो देखो, मेरा ये मानना है पर्सनली, Godspeed, any pug you play, right? Yeah. Below, let's say facing level 8, right? Yeah. It's all T side. It doesn't matter what map it is. Oh, it's definitely. all T side. Because nobody knows how to play the CT side. Exactly. खासकर मिराज जैसे मैप्स अगर हो तो, मिराज ओवरपास ऐसे मैप्स हो। इन्फर्नो फिर भी आई वुड सजेस्ट हैज बिकम अ बिट ऑब्वियस अभी किसको क्या खेलना है, कहाँ खेलना है, बट मिराज जैसे मैप्स होते हैं, ओवरपास जैसे मैप्स होते हैं, वहां पे अभी भी सीटी साइड पिकअप गेम्स में आप स्ट्रगल करते ही करते हो डेफिनेटली, व्हिच इज आई हेट प्लेइंग ओवरपास इन पिकअप गेम्स। Why do you hate it again? बिकॉज वहां पे सीटी साइडेड इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, किसी को कहाँ जाना है, किसी को कहाँ जाना है, किसी को पता नहीं है कि उसको ये एंगल पकड़ना है और वहां से आके मार देते हैं। कोई WC लेफ्ट से पकड़ करके उसको राइट साइड से आके साइड वाले को डाउन करके चला जाता है। It's mayhem. It is mayhem. So the best way to play CD side on pickup games is just get those picks, man. Initial Just picks. push. Basically two terrace side play. Terrace sides play. Two terrace side. Exactly. वो CT side होता ही नहीं उसमें. But guys, I hope you guys are enjoying the watch party because I certainly am. ये game, मैं हमेशा जितनी भी देर मैं ये गेम से दूर जाता हूँ, फिर मैं वापस आके देखता हूँ, like why did I ever go here in the first place? जब Honestly.
गेम ये हर 6 महीने में एक बार लॉन्च करके देखते तब सोचते यार नहीं खेलनी कोई और गेम. That's very true. That's very true. Because it's a game जो embedded है हमारे कल्चर में, हमारे हिस्ट्री में, ई स्पोर्ट्स के पूरे हिस्ट्री में. अगर आप देखें नॉट जस्ट CSGO बट पूरा काउंटर स्ट्राइक का जो फ्रेंचाइज है, इट इज हाउ वी केम टू बी. मतलब लिटरली FPS की जो बुनियाद रखी गई थी, दैट इज. आप बाकी गेम्स को क्रेडिट दे सकते हो बट इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी किसी FPS गेम ने उस समय नहीं हासिल की थी. जब मुझे याद है कि NA में एक टूर्नामेंट होता था जहां पे प्रोजेक्ट गौतम रेसिंग, CSGO, FIFA और एक और गेम होता था, और ये 4 का पूरा लीग्स होते थे जो अभी हम जैसे देखते हैं कि टीम्स और ये सब बनती हैं, लीग्स हैं, वैसे वहां पे पूरी फ्रेंचाइज लीग्स थी. एंड इट वाज डन बाय आई थिंक सो, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, एम से कुछ नाम था उनका. कहाँ की बात करें आप? MGT या MTG आई थिंक. नहीं बट कहाँ की बात करें? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? So there was a league in 2005 चालू हुई थी NA में, जहाँ पे ये 4 गेम्स होते थे एंड दे हैड फ्रेंचाइज टीम्स जो compete करते थे एक दूसरे के अगेंस्ट. I'm not sure about franchise. MLG. Oh, MLG. That I know. Counter Strike, Project Gotham Racing. More than MLG, I think for CS personally, right? Yeah. I think it was CPL. There was one more tournament. I forgot name. But CPL जैसे tournament बहुत ज़्यादा important थी. वहीं से I believe उनकी वजह से ये memes भी आई थी door stuck वाली. वैसे यहाँ पे भी 2008 या 9 में एक जरूर कोशिश की गई थी ऐसी फ्रेंचाइज लीग की, CS 1.6 की. कुरुक्षेत्र नाम था उनका, वो टेलीवाइज होता था टीवी पे. No, that was Games Bond, I believe. कुरुक्षेत्र कैफे का नाम था, if I'm not mistaken. हो सकता है मैं नाम गलत बोल रहा हूँ, बस मुझे याद नहीं है. बट हाँ बिल्कुल वैसा ही था. और मुझे अभी भी याद है वो तब पेनिट्रेशन नहीं था इतना गेम्स में. वो वही बात है. बट नाउ आई थिंक इट्स बिकमिंग अ लिटिल मोर मेनस्ट्रीम, स्पेशली जब इंटरनेट मोर एक्सेसिबल बन गया. लेकिन मॉनेसी थोड़ा सा ओवर कमिट कर दिया वहां पे, बिकॉज़ उनका ट्रेडिंग पोटेंशियल नहीं था. एंड आई फील लाइक वहां पे उनकी टीममेट की गलती थी, बिकॉज़ मॉनेसी ने जिस तरीके से कमिट किया था उनके पास बैकअप होना चाहिए था. व्हाई वाज ही पुशिंग इन देयर अलोन एंड पीछे कोई बैकअप देने के लिए नहीं था. बट रिगार्डलेस इट डजंट मैटर. जब G2 जिस तरीके से उन्होंने रीटेक किया, Absolutely love it. मेरी एक फिलॉसफी रहती है मेरे प्लेयर्स को, मैं हमेशा बोलता हूँ रीटेक एज फास्ट एज पॉसिबल, ताकि वो पोजिशनिंग नहीं पकड़ पाए जो प्लांटर्स हैं और जो अटैकर्स हैं. और यहाँ पे उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, इतना ग्राफिकल एग्जाम्पल आप देखिए. दोनों साइड से क्रंच किया बनाना और सीटी साइड से इतने फास्ट की प्लांट होने के 3 या 4 सेकंड के अंदर उन्होंने धावा बोल दिया. और पोजिशनिंग लेने का टाइम ही नहीं मिला नावी को, बिखर गए वो बिल्कुल वहां पे. If you're Hooksy not there, I mean, he's playing very well at the moment, but he must also have a feeling. I think that's very important. आपकी जो philosophy है to retake as quickly as possible is great, especially if you know आपकी team decisive है. You need to be decisive. I think that's the biggest problem वहाँ पे, because if you're not decisive तो वो आपकी spacing खराब हो जाती है. बिल्कुल. मॉनेसी ने अंदर पुश किया, was great, but उनका ट्रेड नहीं निकाल पाए. कोई नहीं, he got overwhelmed. उनको बैकअप होना चाहिए था पीछे से. बट ओवरऑल अगर आप राउंड जीत के जा रहे हैं, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? बात करें यहाँ पे नावी के बारे में, आई बिलीव तनय ने कहा था थ्री साइडेड प्लेयर्स. फर्स्ट राउंड चलो ठीक है हार गए, बट हियर्स द थिंग राइट, तनय ने ये भी बोला था कि मॉनेसी इज अ पग प्लेयर, बट दैट्स नॉट ट्रू. फेस इट इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जाके खेल सकते हैं. वो आई थिंक इन दैट केस इट वुड स्टैंड ट्रू फॉर Stewie 2K. बोलते थे पग स्टार है, he will not be able to survive. He literally broke every single rule of Counter Strike. Don't push through smokes. You would push through smokes, but you would not just push through any smoke. It was very smart. Most of his pushing would be in the first half a second of the smoke exploding. The moment smoke exploded, वो push करते थे. He would catch players off guard, right? तो playstyle होती है sure, but it doesn't. Especially when you're playing at such a high level, you're not a T or a CD sided player. वो fundamentals की बात होती है. आपके fundamentals कितने ज़्यादा strong हैं. तो ना आप स्टूवी को फिर भी बोल सकते हो कि स्टूवी बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए टॉप पे थे. मैं वो आर्गुमेंट ले सकता हूँ आपके कि चलो उसके बाद स्टूवी फेल डाउन द लैडर प्रीटी क्विकली उसके बाद. बट you have a very fresh example, Rops. I mean, he's part of one of the best teams and he's a star player for the team. Rops is just insane. उनकी जो ability है
again, he was a pugger, right? He was literally the face of FPL at one point. और उसी के साथ मोनेसी का अगर मैं बात करूं, मोनेसी की बात मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा because unlike Robson's 2v2k before coming into G2, मोनेसी actually proved his mettle in Vplay Academy League, which is a structured league जहां पे आप टीम गेम प्ले और ये सब दिखाते और बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से खेला जाता था. मैंने वो देखा भी है एंड कूडोस टू वो जो था बिकॉज उसके वजह से हमें बहुत सारे प्लेयर्स देखने को मिले हैं आगे जाके. आप फनाटिक के प्लेयर्स अभी जो हैं उनकी बात कर लीजिए, आगे आने वाले जो प्लेयर हैं जो टीम सीक्रेट में जो प्लेयर्स थे अभी बहरहाल रीगॉन और ये सब इनकी बात कर लीजिए. बहुत सारे प्लेयर्स वी प्ले अकेडमी लीग से बाहर आ रहे हैं. तो डेफिनेटली आई थिंक वो जो सेटअप है उससे मोनेसी ने अपना मेडल प्रूव किया है, अनलाइक 2v2k रॉब्स और बाकी पगर्स जो आप बोलते हो. Oh boy. But I think that's also how do you discover players, right? Because structured leagues वगैरह तो it's a very recent thing. पहले तो रैंक्ड भी नहीं होता था, आप कम्युनिटी सर्वर में खेलते थे. एग्जैक्टली. कैफेस में जाते थे, आपको जो अच्छा प्लेयर मिलेगा वो आप उठा देते थे. There was no metric to measure a player. Yeah, I think that was the best phase because मुझे नहीं लगता रैंक is a good determinant of. I mean, it gives you a baseline. Yeah, it gives you a baseline. Yeah, but sometimes it's shrouded in a lot of factors और बहुत सारा clumsiness रहता है. It forces a play style upon you where you know कि you can game the rank system, right? तो अगर हम बात करें so strong के बारे में, आपको पता था कि IR rating होती थी उस पे. तो impact rating में सीन ये था कि if you get an entry flag तो आपकी IR एकदम skyrocket कर जाती. Then everybody wanted to be an entry flag because everybody wanted to be a pug master. और वही सीन है. ऐसा करते थे कि लोग एंट्री फ्लैग लेके फिर पूरे साइट में जाके छुप के बैठ जाते थे बिकॉज अगेन यू सर्वाइव, आपके आईआर बढ़ती रहती थी. दैट इज व्हाई यू हैड अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट होनिंग द ऑप, जाके एंट्री लो और फिर पीछे चले जाते थे. सो स्ट्रांग में इनफैक्ट बहुत ये चला था, बहुत जन को नाम भी दिया जा चुका था, जो जिसको आज हम जेम टाइम बोलते हैं उस तरीके से. बहुत जन सेव भी जो बहुत ज्यादा करते थे जस्ट बिकॉज उनके आईआर को इफेक्ट नहीं करता था, सेव करने से कम इफेक्ट होता था. और उसी तरीके से आप देख लीजिए अभी हमारे जो नए गेम्स आ रहे हैं उनका भी जो रैंकिंग सिस्टम ये सब है, रेटिंग सिस्टम्स, उसमें यही है कि आप अलग अलग रैंक्स सेम रैंक में नहीं खेल के आप 5 मैन क्यू कर सकते हैं अलग अलग रैंक्स से और आपको सेम पॉइंट्स मिलते हैं. So you sort of game the system. तो इसीलिए मैं रैंक को डिटरमिन नहीं मानता. I think the best, the purest form of scouting was जब, जैसा कि आपने बोला कि जब रैंक्स होते ही नहीं थे तो आप मटेरियल क्वालिटी ऑफ प्ले से आप निकालते थे किसी प्लेयर. इसलिए मैं गोल्डन चिकन था. I think there was one more rank called Wooden Cock, and that was the bottom rung of all the ranks possible. That's not what you want to see. I just love the Honey Badger. Honey Badger, yeah. मुझे वो रैंक पग मास्टर से ज्यादा पसंद था because वो लोगो सब बहुत मेरे साथ था. I think I still have a desktop पे पड़ा है मेरे स्क्रीनशॉट एक मैच का जिसमें मैं खेल रहा था. मेरी 2.5 की इम्पैक्ट रेटिंग आई थी जब वो रिवर्क किया गया था. पहले 10 के ऊपर आती थी इम्पैक्ट रेटिंग, पहले तो 15-16. हाँ, फिर उसके बाद रिवर्क किया गया और 2.5 की इम्पैक्ट रेटिंग आई मेरी. Is this okay? Because I knew I was a decent player, but high impact rating player consistently वो possible नहीं था. But that's the thing about pugs also. Right? Some days you'll have good games, some days you'll not have good games. I still remember there was this player called Spawn, Indian Spawn, right? Back band में खेलते थे. हाँ, मतलब एक दिन मेरे सामने आए. हाँ, yeah. So I was playing Mirage, and I don't know that day मतलब मेरा दिन इतना अच्छा था कि anything I touched, legit anything I touched turned to gold, right? And I still have that screenshot in my Steam inventory. The rest of his team will have a bye themselves. First half, Mirage attack. Are just looking incredibly powerful right now. I dropped a 30 bomb in the first half. Wow. This is going to be, and we lost the game. Interesting to see if Navi just go for something a little bit quicker. So there are times when there's nothing you can do. There's literally nothing you can do. Yep. I'll see if I can actually find it to show it to you. Definitely. But those were the days, man. आपको अब कोई चीजें कर सकते थे जो आपके हाथ में होती थी, but there were other things which were just not in your control.
Okay. Honestly, That's- मतलब that is an interesting decision वैसा for ही NPL. CSGO का पता नहीं कुछ ऐसा ही क्रेज था उस समय कि Right there. एक तो प्लेयर बेस भी इतना स्ट्रांग था उस समय, तो आपको मैचेस भी जल्दी मिलते थे, तो आपको खेलने का भी मन करता था ज्यादा, खासकर, और आपको थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स भी थे जो कि अब उतने नहीं है। हाँ, but यही है, क्या करें। ये But I like how chat is very engaging in this. CS, I think, relatively भले ही इंडिया में छोटा fan base हो compared to other FPS titles, but it's a very loyal fan base. ऑनेस्टली मैजिकल म्यूजिक, अगर मैं सच बताऊं तो अंडर 30 के थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप अगर बजट को थोड़ा 40 के तक ले जा पाओ तो आपको AMD 3000 सीरीज का प्रोसेसर और बाकी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं जो कि आपको इनेबल करेंगे CSGO जैसे गेम्स को 200 प्लस FPS पे खेलने के लिए। सो बट हाँ, डेफिनेटली गो फॉर AMD राइजन प्रोसेसर्स वहाँ पे, और बाकी तो मैं नहीं बता सकता, बाकी के लिए आपको देखना पड़ेगा। Yeah, बाकी के लिए तो देखना पड़ेगा, you'll have to find it, unfortunately. But 12-7 काफी क्रेजी गेम चल रही है यहाँ पे। अगेन G2 इन द लीड, नावी जस्ट फ्लैटनिंग, बहुत ही फ्लैट परफॉर्मेंस मिला है मेरे को नावी के तरफ से आज। It almost feels like they haven't even woken up. You don't want to make mistakes, but sometimes you do have to call your own. Or maybe they might be sick because electronic khas rahe hain. There's a reason to be worried, but there's also I don't think so. getting the jump and knowing you have the jump in Unless you've read something about it. I think he did. I did not. Honestly, again, I'm clutching at straws. Concern for NPL there. और फिर आप ये ऐसे बातें करेंगे तो limit test a little bit more in these games. Yeah, and that's Simple भी flashes of brilliance मिला है सिंपल से आज, बट वो सिंपल जो कंसिस्टेंटली डिलीवर करते हैं वो इनफैक्ट 2023 में अभी तक देखने को ही नहीं मिले जो मैचेस में अभी तक। I mean 23 दिन हुए यार 2023 में, maybe it's a bad phase for him. Only been 23 days to think of it. It's not my fault, it's simple. He has set the bar so high कि अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो, उनके बैड डेज हो सकते हैं पर बैड डे हो सकता है, मतलब डेज तक स्ट्रेच नहीं कर सकते। I like how for simple, right, even a good game for an average player might just be like, oh, it's a bad game. Yeah, it's a bad game. Yeah. I think that's also a problem because This is how that situation unfolded. I mean, there's too high expectations. Honestly, yeah. But again, that is how you become an elite player. You deliver on those expectations. You create those When your expectations. reputation precedes you, yeah, no, you're right about that. yeah. would have been able to rip his head off if he chose वो that. बिल्कुल सही कहा आपने। His initial uncrouch वही was मतलब that was the time. क्या ही बोले, सिंपल फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि मोनेसी ये पूरे सर्वर पर हावी पड़ रहे हैं जिस तरीके से वो डिस्प्ले दिखा रहा है। और यूक्सी अगर मैं बताऊं तो पहले मैच में निको अभी भी बहुत अच्छा खेल रहा है, जहाँ पे JKS बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सेकंड मिड पे पुश करके हुक्सी के साथ, हुक्सी ने एक्चुअली में एप्स के ऊपर से पीक किया, अगेन एलिवेशन का एडवांटेज उठाते हुए मल्टीपल एलिवेशन से पीक करते हुए JKS ने नीचे से पीक किया, सेम टाइम में हुक्सी ने ऊपर विंडो से पीक किया और उसका फायदा यहाँ पे G2 को मिला है। इको राउंड पे जरूर थे नावी, इको नहीं क्वाजी वाई बोल सकते हैं बिकॉज टेक नाइन्स और लीगल्स थे, और अगेन ये तो 14th राउंड G2 के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। The team with less rounds calls the timeout. फर्स्ट मैप आई थिंक नावी के लिए ब्लंडर हो गया बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने पिक किया था, जिस तरीके से G2 ने खेला, जिस तरीके से इन्फर्नो में खास तौर पे G2 ने फर्स्ट राउंड जीता था। आई फील लाइक हार्ड काउंटर स्टार्ट किए गए नावी आज, दे केम प्रिपेयर्ड एंड नावी के पास जवाब नहीं था उस चीज का बिल्कुल भी। जी बिल्कुल, इन्फर्नो में तो मैं बहुत ही दावे के साथ बोल सकता हूँ कि काउंटर स्ट्राइक किया गया बिकॉज आपको पैटर्न्स देखने को मिले, बार बार आर्चेस का कंट्रोल लेना, बार बार मिड पे वो प्रेजेंस दिखाना JKS का जाके और फेक्स करना, वो आपको लगातार एक लय में दिखी G2 जैसे उनको गेम प्लान मालूम था। और यहाँ पे नावी थोड़ी सी शॉर्ट पड़ते हुए अपने एक्सपेक्टेशंस के ऊपर, फिलहाल 14-7 का स्कोर लाइन 22 जरूर है, पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक के हाथ में गलील है और बहुत ज्यादा आपको यूटिलिटीज भी नहीं दिखाई देंगी। परफेक्टो की इनफैक्ट यूटिलिटीज ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं, NPL के पास अब एक स्मोक, इलेक्ट्रॉनिक के पास एक फ्लैश, और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन क्रॉस फायर।
And it's blowing them up. Wall bang on Honestly, to take him down and come on. Perfecto. How do you Matlab, bring this one back? If G2 played disciplined here, then Navi should not get back into this he round. just No way. he just G2 have been playing too makes well, I'd everything say. Maybe simple. Itna this simple. huge round And it's lead such a would give paradox them because confidence simple they is have there on the server. some But way that they could slip here. सब कुछ इतना I do इतना agree with you that I effortless think कैसे दिखा सकते G2 हैं have put एक player? themselves in a position beyond just this game to be a Is team this that is this how good he is, right? अब Yep. फिलहाल के लिए 2 वर्सेस 4 सिचुएशन है तो देखेंगे नावी किस तरीके से इसको काउंटर करती है बिकॉज जरूरी है उनके लिए ये राउंड जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड if they lose this I believe they will stand to lose the match also because cash उनके पास इतना ज्यादा अच्छा नहीं है but honestly ये नहीं जाने देंगे इनको he will not let them pass smoke यहाँ पे फटेगा जरूर लेकिन he's decided to wait it out उनके टीममेट के साथ खेलना चाहते हैं काफी अच्छा डिसिप्लिन ये देखने मिल रहा है हमें जी बिल्कुल यहाँ पे सिंपल अब देखिए ऑप के साथ ओ परफेक्टो का बहुत ही बेहतरीन पीक है और पहला शॉट मिस करते हैं मोनेसी परफेक्टो उसका फायदा उठाते हुए अब 2v2 की स्थिति दिस इज स्टिल डूएबल मांबा दोनों प्लेयर्स बहुत दूर हैं They don't want to let go of this best of 3 yet. If they wanted to take a stand, then they can't really let G2 onto map point. There are series दूर तो है एक दूसरे से लेकिन right now. 2v2 how do you even find yourself in this situation ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है G2 के लिए because they were looking so much in control यहाँ पे and जिस तरीके से नावी ने अपने आप को पोजीशन किया है सिंपल एक और पिक निकालते हुए नो माय गॉड डबल ऑफ लेके उन्होंने लॉक डाउन कर दी साइड को नावी कीपिंग द होप्स एंड ड्रीम्स अलाइव Yep. And again I call these positions the matchbox positions, you know, where one mistake is enough to light you on fire. ये जो दोनों ने एक मैच बॉक्स जैसे सेटअप में अपने आप को बंद कर दिया छोटे से स्क्वायर या रेक्टेंगल में समझ लीजिए इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि आपके पास कहीं का इन्फॉर्मेशन नहीं है ना एप्स का ना बॉयलर के साइड का ना सीटी साइड का आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कहां से प्लेयर्स आ रहे हैं तो बेसिकली यू आर स्टफ्ड इनसाइड दो दैट मैच बॉक्स और अगर आप एक शॉट मिस करेंगे जैसे यहाँ पे मोनेसी ने किया उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने उसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा बट हुक्सी की अगर हम बात करें लाल के लिए वो वांट्स टू पुश स्मोक यहाँ पे क्या खेल निकाल पाएंगे जी नहीं बिल्कुल नहीं परफेक्टो ने उनको वहां पे डाउन कर दिया एंड दैट was unfortunate. I think G2 यहाँ पे unnecessary risk ले लिया. Yep. G2 को इतना रिस्क लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. I mean, but it is G2 after all. 14 पे हैं, series 2-0 से close कर सकते हैं. This is G2's moment to sort of choke right now. अगर सही मायनों में बोला जाए तो they're famous for doing that. But हालांकि हुक्सी के आने के बाद से थोड़ी चेंजेस जरूर हुई है इस थोड़ी फेरबदल हुई है इस हैबिट में या इस कैरेक्टरिस्टिक में होपफुली यहाँ पे कमबैक नहीं होने देंगे बट नावी दूसरी तरफ सिंपल हंटर को डाउन करते हुए इसी के साथ 3v5 की सिचुएशन यहाँ पे G2 माइट जस्ट ऑप्ट टू गो फॉर द सेफ और लगता है मोनेसी सेफ की तरफ ही बढ़ रहे हैं I feel like JKS should join the rest of them over at the B bomb side at this point. Surely leaving him alone. I do believe he will have to play it a little conservatively. वो यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते. उनको बिल्कुल भी इशू को फोर्स करने की जरूरत नहीं है. But JKS, you'll find the pick on electronic though. ये शायद turning point हो सकता है मैच के लिए. But flashbang, oh my goodness, no way JKS. Oh, he still gets one. He gets one. 2v2 suddenly जो सेव के लिए जा रहे थे अब इट्स सडनली डूएबल और पोजीशंस देखिए नावी की ये थोड़ी बेहतर पोजीशंस है यहाँ पे पर सिंपल यहाँ पे इसी के साथ मोनेसी वापस सेव की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे जेकेएस ऑलमोस्ट जेकेएस ने टर्न अराउंड कर दिया था ये राउंड down 3 versus 5. JKS put up a great fight, but as soon as he got blinded there at that moto, honestly simple. He kind of put his hands up, said, "You got two behemoths of the game, right?" And ये दोनों जब head to head जाते हैं, आपको पता है गेम बहुत ज़्यादा entertaining होने वाली है. लेकिन नावी धीरे-धीरे करके they're mounting a comeback. उनको all rounds की ज़रूरत ज़रूर है, but I believe G2 they might. I don't know if they have a timeout available. Do they have a timeout available? Tested once they get pushed into a corner. That's when they're most dangerous. But
Yeah, Been nice sure. to start making this comeback a अच्छा little उन्होंने bit तीसरा earlier. टाइम आउट शायद यूज किया है. Have a lot of slack. They lot do, of room yeah. to So play here we with. go. This is exactly what I was talking about. Timeout use रहते हैं and change of pace is probably what is going to happen right now. Because हमने देखा end game में खास तौर पे last nuke में देखा था they won the round, but if they end up losing a round after this, तो शायद दिक्कत हो सकती है उनको. जी हाँ, और जैसा कि आपने मेंशन किया, आई थिंक सो G2 के कोच भी फिलहाल यही बोल रहे होंगे कि हमें जरूरत नहीं है कुछ भी एक्स्ट्रा करने की. वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा. जो हम कर रहे थे वो ठीक है. वी डोंट हैव टू बिकम डेस्परेट व्हेन द अदर टीम इज इन अ डेस्परेट सिचुएशन. डोंट गिव देम दैट लीवे वो एडवांटेजेस सिचुएशन जिसका वो फायदा उठा सकें. 24th round. What are we seeing? Very tight constellation on the Navi side. और एज यू कॉल इट, इसको हम बोलते हैं बहुत ही फेमसली टाइटन द न्यूज. जस्ट डायल इट बैक वंस और टाइटन कर लो अपने न्यूज को ताकि Might be able to find that opening पकड़ for नहीं छूटे. FPL. Oh no, honestly, that should have connected. But yeah, दीवार के through जब लगेंगे shots, तो दिक्कत होगी. And JKS once again overcommitting. Why? When you know वहाँ पे presence दिखाई थी alt mid पे, आपके पास आपके teammate push भी नहीं कर रहे. Honestly, the only guy with an operator, तो sorry, with an op. So why would you pick like that alone? Yep, you should let the hero buy or the hero save do the talking always. And उनको idea आ गया था कि presence है वहाँ पे. I think that was just a terrible mistake. Yep. The only logic I can find here is कि maybe मॉन्सी ने कॉल दिया होगा कि उन्होंने डिंग किया है एनपीएल को और वो वहां पे पिक करने के लिए जा रहे थे. यहाँ पे हंटर वापस से वही करते हुए और तीसरे प्लेयर भी स्पॉट हो चुके हैं G2 के. इसी के साथ क्या नावी थोड़ा सा रोटेशन करके बी की तरफ जाना चाहेगी? मॉन्सी को यही लगता है. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बहुत ही अच्छी तरीके से मॉन्सी को भी डाउन करते हुए. व्हाट अ ब्रिलियंट शॉट. एंड अब हुक्सी दी ओनली वन अलाइव. हाथ में एक 5-7 है. और ये जो हमने पॉइंट आउट किया मांबा, ये गलतियां हमारे इंडियन सीन में भी हमें बहुत देखने को मिलती हैं कि जहाँ पे जो हीरो बाई या हीरो सेव रहता है उनको पॉइंट नहीं लेने के बजाय बाकी प्लेयर्स पुश करने लगते हैं. बाकी प्लेयर्स जाते हैं पीक्स के लिए जो कि अननेसेसरी है. फिर उस गन को सेव करने का या उस गन को बाई करने का पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाता है. True, absolutely true. And I think it's a double-edged sword. But Tanay chat में G choke second map. I don't think they're choke. No, they'll recover. Oh, perfecto को देखिए कितना ज़्यादा aggression यहाँ पे दिखाते हैं. Trades आने चाहिए. Nico goes huge over there. Beautiful. In fact, simple का flash था वो जिससे सारे players flash थे. Are you kidding me? So it's a 3-on-3 situation. Did you see that? Yep. Evened out. I like how you didn't flinch. You were just like, Simple's doing simple things. Yep. Flick of the wrist. It's so cool to Flick see off that wrist. fight between Simple and Nico because पर जी हाँ, यहाँ पे सिंपल अपने आप को हल्का सा रिडीम करते हैं, वो उन्हीं का फ्लैश था जिसके बदौलत निको को वो डबल किल मिला था नावी के प्लेयर्स के ऊपर. even if he is currently dropping 20 kills, बट देखिए धीरे धीरे एप्स का कंट्रोल लेते हुए बिट it doesn't really matter. यहाँ पे G2 की पोजीशनिंग मिड पे क्रॉस फायर बनाए हुए हैं. Nico's feeling the same way. क्या उन्हें थोड़ा सा भी आवाज होगा? अब तक कोई साउंड क्यू तो गया नहीं है, साउंड बाइट्स नहीं मिल रही है. सबसे बेहतरीन चीज नावी यहाँ पे यही करती है, इसीलिए मुझे नावी का गेम प्ले बहुत पसंद है कि व्हेन इन डाउट कट द साउंड बोलते हैं हम, कि जब भी तुम डाउट में हो कि प्लेयर्स कहाँ हैं या नहीं है तो उनको एटलीस्ट मत बताओ कि तुम कहाँ पे हो. और एग्जैक्टली देखिए उसी का फायदा मिलते हुए. And JKS and Hunter, I would say, given the money in the bank, it's probably worth it to save the rifle. Now I'm worried for G2 because ये मोराल तोड़ते जा रहा है उनका. I am extremely worried for G2. किस तरीके से यहाँ कमबैक करने वाले. If at all they make a comeback. फिलहाल तो उम्मीद जाग चुकी होगी नावी के खेमे में. नावी के फैंस यहाँ पे चीयर कर रहे होंगे बिकॉज 14-11 और कुछ खास बाई नहीं हो सकता. वापस ये दो हीरो सेव्स रहेंगे और ये दो गन्स इस बार क्या रंग लाएंगे अगले राउंड में वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा. मामला स्प्रे ट्रांसफर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था लेकिन वो जो सिंपल का किल था नहीं, that was even more crucial. ये बिट ने जो मॉनिस के ऊपर पिक निकाला. आई फील लाइक G2 is in shambles right now. जिस तरीके से वो स्प्रेड आउट होके खेल रहे, इतना ज्यादा स्प्रेड आउट नहीं होना चाहिए उनको. जी हाँ. And is just having a field day in the chat. What they needed. They're still not out yet. Strongest pinky fingers. A little bit of a chance to make it back.
Then I never change, man. Never change. Couldn't help but feel at the start of it got very, very close with double kills. I've noticed a lot of new players play on proper 16/9 and they don't play 4x3 stretched anymore. Yep. If anything goes wrong, even if Nico just lives, I still prefer 4x3 stretched. I mean, 4x3 is officially the boomer rezo now. Yeah, you don't have to constantly remind me that I'm getting old, man. नहीं ये एक्चुअली मेरे को बोला गया सो आई वाज रिसर्चिंग ऑन इट अ बिट कि जो नए जनरेशन प्लेयर्स है बिकॉज ग्रोइंग अप दे हैव ऑलवेज प्लेड ऑन 16:9 एंड दे प्लेड ऑन गुड पीसीज गुड सेटअप्स सो दे हैव नेवर एक्चुअली cultivated that habit of playing in 4v3 जो कि हमारे को habit थी. I feel like there is definitely a massive advantage on 4x3. Oh, definitely, especially in a game like CS:GO, I would agree. Like, For other games, I don't know. no, but other games no, like Yeah. battle royales and everything. वो अलग चीज़ है, लेकिन CS:GO 4x3 is very. Oh. Take some pot shots. Nico tried to be happy over there, but sadly, he's just gonna be sad after this. This is where things Also, Only OGs will understand मैं क्या बोल रहा Yeah. हूँ यहाँ पे. splitting up into their own 2-2 type I mean, of defense. I'm sure जो भी यहाँ पे हमारे साथ बने हुए हैं चैट में भी उन सब ने वो क्लिप देखी होगी. A strong execute. Happy. And another one. And a third. Dupree is sweating bullets right now. This is going to put a Oh. I still remember it as good as yesterday. Then there was Simple in one of the majors. जहाँ पे जेम्स बार्डॉफ ने बोला था. Simple, are you kidding me? This is not FPL. This is a major. He's got one button, Dan. He's got one button on his mouse. interesting, but they're going to find the kill immediately. The bomb that's Oh. That was huge. takes down But नहीं, free kills तो देने ही है. seconds. G2 वालों को free kills तो देने ही हैं. G2 with a chance to steal this round away. They could get Monacy and Oh my JKS God. into a position. There's a gap in the smoke. Oh, he's planting in Look the at this open. hesitation. Simple. Nobody got Why it. did he plant in the open? Must have been called out. It feels like what could be a devastating mistake from Navi. Electronic is now in the back here, and they knew it as well. No grenades, but it doesn't matter. Oh, I it's will be 15. honest. I will be honest. He's got 17 Yeah. kills, and that is the This could have been round Navi's by round. G2. Yeah, this should have been now. No. Even in that 1v2. CT spawn. Of course he दोनों thinks अलग-अलग खेले थे. Isolate, okay, हाँ. Isolated fights थी वो. it's a tough shot. अगर ये round हाथी जीतू मैं बोल रहा था it was going third map. On that spray. That boost, I mean, honestly, that payback my isolated fights, it comes down to in the sight. individual firepower, right? And it's something that is out of the control of a coach or an analyst or ये सब. It is, but G2 के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो एक kill मिल गया आपको, you know कि C4 वहाँ पे plant किया गया है, and you have a smoke in front of you. That's a very curious I don't know. way Like to maybe I'm make being too it strict simple. Maybe just with think that the it's idea so of simple, it wouldn't spacing matter, and shading, but that's No, all. definitely. 2v1s you always have to play on trades. That really feels like they stole one there. But But again, this one, there are some. go मेरे को हमेशा ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि there are some rules and conventions to playing in FPS. Inside of the Yeah. frame But जितने ही rules है उससे ज्यादा उनके exceptions हैं. from behind. And it reminds me of a periodic table. Playing an FPS game is like Yeah. organic chemistry. organic There are chemistry. There are more exceptions than the rules. Exactly. We're properly nerding out right now. Yep. Trying to go down the next. अगर किसी ने देखी होगी कोटा फैक्ट्री में भी ये कोट बोला गया था. Even as And Monacy I related to it quite a bit कि and NPL and ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये. इसमें रूल्स जितने होते हैं उससे ज्यादा एक्सेप्शंस होते हैं. Monacy's on the other side. तो Timing बिल्कुल betrays और यहाँ पे देखिए drop and Hooksy as long as you can justify your decision making, everything is okay. Navi are only going to be a 20. जहाँ पे माम्बा ने जो शुरुआत में बोला था वो मुझे याद आता है कि सिंपल Someone's going to का make decision making defied logic, and honestly it did. The only way he justified it was by killing, and no, That's the only justification. yeah, there was no other justification. Oh god. Swing it. Oh, Oh, the free fire. Hooksy! Hooksy! No way, Hooksy. If he clutches this, Hooksy, let's go. क्या clutch करेंगे? मुझे नहीं लगता clutch कर पाएंगे. Oh, the young kid, NPL, clutching it for Navi. Oh wow! एक और full buy, I think so. Peak there in the 3 I versus 2. think so. G2 के सिर्फ एक full buy बचा है माम्बा Shot, that pre-fire to convert. simple. It made you believe for a split second there, but भाई अगर ये OT जाता है ना मुझे वॉशरूम ब्रेक मारना पड़ेगा प्रोडक्शन से. भाई रुको एक सेकंड. onto him, and that's been monumental in the chances for Look at Navi. Nico. Nico has the same reaction as me. मैं भी सिर पकड़ के बैठ In गया this था ऐसे. situation, G2, they Nico's saw like, him, why? they saw Hooksy on the मैं जब फेज में खेला तब भी यही हो रहा था मेरे साथ. I must be suffer. but oh, this one's coming fast.
Let's go, bhai. Again, simple flash, flashing NPL. What is happening today? Choosing this top orange spot. If he gets popped on. Nico, that's a very bold move from him, given the fact that उनको 400 square foot जगह चाहिए होती है एक 90 degree घूमने के लिए. He's playing anti-flash. Oh, Monacy! Oh, Monacy! What? Now he knows the second player is there too because of the... Monacy! What a monster, Monacy! Nico, no, do not give away that man advantage. Oh yeah. Yeah. G2 deserves to lose this match. They deserve to lose this match. They absolutely deserve to lose this match. It pisses me off to no extent. I understand you know where the player is, but is that risk worth taking? You need to don't know how many players are around him. Exactly. Yeah, but some of these deaths, despite having man advantages and positional advantages, have been thrown away in uncharacteristic ways. If Navi come back from this, oh my god, everyone is going to point this. मैं अपना सिर पटक दूंगा भाई. Everyone, सब कोई point out करेंगे निको का ये decision को. Oh, Electronic dying to the C4 Hunter. I mean, Navi don't really care because for them every round is a buy round right now. Never going to be worth it, even if it feels like it's so close you can almost touch it, but not quite. Navi, they're getting. I like how everybody's literally just using wireless mouse. Yup, I mean. लेकिन Monacy यार क्या खेला यार बच्चा यार ये. After that kill, they're in such an The capital and N for Nico stands for no. क्या बोल रहा था नहीं. Good. You should feel that way. बेचारा Monacy बोल के निको को क्या बोलेगा? आधी उम्र क्या वो? Okay, we haven't had to say his name too much just yet. Playing so far. JKS, not again. Don't die. And neither player, they don't want a piece of it. It's almost like quotes होते हैं ना कि बुढ़ापे में भी जवानी याद आ रही है. Oh, this is. I like this. I know they've been a bit aggressive over on this side, but this is a cool trick. But again, this can turn pear-shaped any moment if Navi do decide to come to B. Imagine दो नेट bounce हो गया आती दीवार से. Exactly. टपाटप. They need some tricks, don't they? JKS got denied his. Why not try another one? इस बार ये मॉली क्या सही होगी? जी हाँ. They have one more round after this to try and play with. यार ये गेम देखने के बाद मेरे को खुद खेलने का मन कर रहा है. Honestly, CSGO जब भी देखते हैं उसके बाद ऐसा ही रहता है कि यार चलो खेलते हैं. यार आज तो मैं Monacy बनूंगा. लेकिन निको बनते हैं. और मैं बनता हूँ हुक्सी. देखो जो हकीकत है वो हकीकत है. It looks like it's going to be a B split though. Yeah, and that's super devastating. Yeah, 30 seconds left. Hunter. वही रन बुस कर two kills right here on Simple and Perfecto. This becomes so awkward. This smoke, that trick. It's oh no, there. Hunter, let's go. Hunter's itching. He's itching. What? This could fall right at the end. This actually could be devastating. 18 seconds. No way. जैसा कि मैंने बोला, it could turn pear-shaped at any moment, and it does. G2 Esports, like, what in the world are you doing, bro? But they will have one final bye, so. Just even being there and staying alive could actually screw up the round for Navi. Instead, they get 14 and we get all 30 rounds. You could see the panic set in for Hunter. He had an option there to stay. मुझे हमेशा से ये सब गेम देख के ना मुझे वो याद आता है नावी ने जैसे कमबैक किया है कि कोई ना कोई उधर पीछे जावेद अख्तर बैठ के बोल रहे होंगे फासले हैं तो रास्ते हैं रास्ते हैं तो मंजिलें हैं. Look at them. कहाँ से आए bro? Where are they coming from? आर्च खुला था आपका भाई साहब. Too much chaos. Okay. Wow. Why am I getting so emotional about this game? I don't understand. It's because this is what this game does to you. Now I know why I stopped playing it. गंजा हो गया मैं ये गेम खेलते खेलते. Honestly, yeah. Do you trust in the default here again? ये गेम आपके अंदर के वो शैतान को जगा देते हैं जो आपको नहीं पता था कि कभी भी आपके अंदर है. आप जो हरकतें करते हो वो आई डोंट थिंक वही कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो आ जाती है आपके अंदर वो स्ट्रीक जो आ जाती है makes you do things.
faith into a play that hasn't always The netted last you time a of the victory, last right? round of regulation. So It's the follow-up to the Yes. initial engagement that's a problem for G2. I almost feel like the early plans for G2 with were everything to solid. lose here. Setups too, not too much to complain about, but just making sure. I think they've lost everything they could. Earlier on They're in the trying to round, salvage it. That no one's getting caught off guard when they're shifting spots. Yeah, they Monesi is probably like, need that. I've had enough of this. Once they I'm get gonna go the grab a full burger three, after four, this if three we lose. especially, just a moment of pause where everyone can collect themselves. If they could have one round like that, they might be able to find a way. और Round number 30. इसी के साथ लास्ट राउंड शुरू होता हुआ यहाँ पे स्मोक्स की बौछार की गई है हंटर के द्वारा यहाँ पे स्मोक और फ्लैश फेंका गया दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए यूटिलिटीज देखिए मैप पे सब जगह मोलोटॉव्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली यूज किए जा चुके हैं हर जगह एक थोड़ा सा अर्ली एडवांटेज लेने का एरिया कंट्रोल में Straight into the दिस 4-1. इज अ ब्रिलियंट डिस्प्ले ऑफ हाई लेवल काउंटर स्ट्राइक हियर Makes a mistake here. एंड अगेन ये स्मोक ये वो वॉल स्मोक रहेगा For G2 to let such a massive lead But slip. what's your Nico is deploying the top banana Trigger retake to it. utility. Navi throw their own to the wall smoke, smoke? but this actually leaves. I think Sorry. there is no I think the timing is the No trigger one really has an idea of what's going on over there, and Navi they're shuffling some nades from spawn back into the fray, and that'll cost them quite a bit Okay, of time. and But they still have 50 seconds. last Don't round है really यहाँ know पे finals just yet, but we'll keep an eye on that. फिलहाल नावी बढ़ते हुए बनाना की तरफ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निको तैनात हैं धीरे धीरे हंटर That's the kill. Yeah. और फिर हंटर डाउन किए जा चुके हैं बिट के द्वारा 4v5 एडवांटेज यहाँ पे नावी धीरे धीरे बढ़ रही है बनाना के तरफ थोड़ी सी सहायता के लिए आ चुके हैं यहाँ पे निको के लिए हुक्सी Monesi's gonna be dropped यहाँ पे down बिट here. मोनेसी को भी डाउन कर चुके हैं With this is the best defended part of the map at the moment. 25 seconds. They are pushing through underneath Nico. The flash is so good. It doesn't even इसी के matter. साथ ये This is ओवरटाइम gonna be overtime. JKS is way too far away. And यहाँ पे ओवरटाइम के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है मैप unless JKS does something incredulous They made it work. Even though Nico is playing super well at the moment, they found a way to shut it down. JKS not going to find anything. Yes, Navi brought it all the way back. This was a rough start for them, but they are showing why you cannot count them out till round 16 is hit. Wow. What great calling from Electronic too. When Bit finds those frags there, you could easily choose to make your way over to that A bomb site, but with the time, with all the pressure there, it actually worked in their favor somehow. I think that this was a round के साथ that ओवरटाइम gotten away from Navi where the panic anything actually can couldn't still be happen we might still be able to see map 3 G2 fans scramble, but they just क्या saved लगता है the plan आपको that they had despite the frags from Bit. And that I'll be honest. was Nico. Absolutely brilliant. This is Go. Overtime is in effect. this unlucky. Breaks on this What? one as they run up. G2 fans, not for G2 the team, because G2 team ने ये हरकत करके खुद अपने ऊपर लेके आई है कि they should have closed it There was no more. 4 on forever ago. to start overtime. जी बिल्कुल यहाँ पे एनपीएल एंट्री निकालते हुए निको के ऊपर निको Very interesting boost setup though. sort of playing the role of Judas here for G2 So aware. Yeah, this is a trick you do not see all on. too often, and yet Bit. Surely this map content like this Coincidence of him peeking another angle, or him knowing about that one. He's Ah. able to stay alive. 15-15 it could be anybody's game from this point on. G2 Esports He's की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये हारेंगे तो it will go to the third map. in terms of Navi on the other hand, mistakes, which they will try their best that's a nice way to to play push it Counter-Strike too. If you can just to live the with the third amount of one. mistakes that you make yep and at high level, that's really going to pay off. talking about momentum right 5 and 3 at the if end on site. G2 loses this how crushing would it be for their morale Electronics already they posted were up they should have converted that round as well so there would be flashbacks in their mind have quite a few running offensive and it will be down to their coach to sort of reset them but it does look like they want to but here we see G2 they're making their way up that long can side. find themselves in a very good position Navi might just run into G2 stack but Monesi watching arches there Scary. 18 seconds. यहाँ पे They make their way around the corner. बेहतरीन शॉट सिंपल का Worried for nothing. They blow it wide Okay, open. simple. I was getting a little bit scared because
You don't know, especially in overtime, there could be another grenade left. There could be a Molotov inside of the A-bomb. It could be dangerous, Mamba, if Simple finally comes alive in this matchup. अभी तक Simple ने कुछ मतलब flashes of brilliance ही दिखाए, जैसे हमने बात की थी, consistently नहीं दिखाया. But if Simple comes into his own, map 3 could be a disaster for G2. Do you see the amount of communication gap that these two players had over there, by the way? Club. Hopping his way into the bomb site. This game has really slipped away from G2 at this point. Simple like Oh my god. Quite concerning. The Undertaker. And I think that this is a feeling all too familiar. ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, but Simple को The Undertaker nickname दिया गया था जब वो शुरुआत में. Oh. Okay. Okay. G2. Yeah, I'm sorry, man. Hey! Cool, I'll just text my mom. Dinner's gonna take a while. Yeah. I'm sorry, G2, man. I don't have any words here. This is all on you. You allowed the beast to wake up. Put him back to sleep, bhai. Yeah. मतलब नहीं होने वाला इनसे, बिल्कुल नहीं होने वाला. Monesi is the one who needs to wake up now and step up because ठीक ठाक खेल रहे, but he's not stepped up as much as he needs to. Oh, Bit doesn't know. NPL takes down. Oh, that was quick. That was quick. Beautiful. Hesitation for Navi. Might not want to charge into the beast like this, and so they are With that, look at Simple. away from this perceived danger. Moving up the long side is Electronic. He's figuring out a lot. Monesi winning the mental battle over Simple. You know, Simple वहाँ पे हिचकिचा गए peek करने से, and instead chose to rotate towards his teammates. They are in CT spawn and they're over that archway, but they need an opening. And this has With this, it's still evenly poised. Electronic looking to cut off rotation. और दूसरी तरफ यहाँ पे Perfecto के हाथ में ऑफ दे दी गई है Simple के द्वारा. Cause health points थोड़े कम है Perfecto के. यहाँ पे Simple ट्राई करते हैं पीक निकालने का. JKS को डिंग कर दिया है, बट क्या उन्हें पता है कि दूसरा प्लेयर पिट पे है? Simple यहाँ पे JKS को डाउन करते हुए. Monesi, क्या फ्लिक है वो Monesi का Perfecto के ऊपर. Mon, क्या वो Simple को भी डाउन कर पाएंगे 1v2? Does he know that Simple's low? Information तो होनी चाहिए उनके पास कि Simple की HP low है, but position हाँ, दी है. बिल्कुल. Molotov जहाँ से आई है, position दी गई है. यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल Simple. Oh my goodness, no, he's just too good. He is too good for these guys. Can Simple get that kill as well? ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है. Monesi बक्से के ऊपर चढ़े जरूर है. अभी भी struggle कर. No way! Absolutely world class. You push him back into a corner, but somehow he's able to fight out of it. Honestly, सोच रहे होंगे अब और क्या करना पड़ेगा मुझे. Box, but Simple read it before it even happened. Crosshair placement perfect, and then able to close it out versus Monesi. It felt like Monesi did enough. He was able to survive in that pit for so long. Somebody clip this. ये reaction Reddit पे जाने वाला है. मजाक से क्या बोल रहा हूँ. What in the world was that clash? In these moments. Just immune to the pressure. कोई रिएक्शन नहीं Simple पे. Simple's like, हाँ, I do this every day. Yeah. But you can't really tell. Well, they still have The Undertaker has arrived, returned from the dead. on the way of Navi. So it seems. Navi You were were telling me, actually- right, कि अभी तक उनका साल इतना अच्छा नहीं रहा है. Yeah, we हो. This was He's woken up. 14-8. I mean, 14-7 G2 के पास ये कैपेबिलिटी जरूर है. वो हर एक प्लेयर के बाट फॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं हाल कैसे न कैसे. बट ये राउंड G2 के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी तक एक भी राउंड बराबर नहीं कर पाए. सिटी साइड में 3 राउंड होता है ओवर टाइम में. अगर ये राउंड भी नहीं करेंगे तो फिर नावी को सिर्फ एक ही राउंड चाहिए होगा सिटी साइड में ये मैप अपने कब्जे में करने के लिए. बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लैश पीक, बट परफेक्टो, क्या ही परफेक्ट ट्रेड्स यहाँ पे. और अब ऑप उठाते हुए यहाँ पे सामना करेंगे मोनेसी का. ओह, ओके, फॉल्स बैक. परफेक्टो भी धीरे से अपने आप को रीपोजिशन करेंगे. This battle could be crucial, Mamba. It could be crucial, no doubt about that. लेकिन जिस तरीके से ये फाइट हो रही है, this is incredible. How Navi has been playing. Beautiful. Smoking it off, expecting a Molotov to follow. And now let's see if he can get one more flick in. That one wasn't it. 20 seconds left. The grenades, they don't do anything. He already saw it coming. He has the leg onto Bit, but Electronic is... Oh, he predicted the other side. और किया ये spam में down कर सकते हैं.
बहुत ही ज्यादा डैमेज एनपीएल के ऊपर, बट अभी भी 3v3 और इलेक्ट्रॉनिक अब ऑप उठाते हुए एनपीएल तैनात है, बनाने से प्लेयर आ रहे हैं, स्पॉट किया जा चुका है। इसी के साथ फ्लैशेस, बेहतरीन मूवमेंट, बट काफी नहीं होगा बिकॉज हंटर वहां पे आते हुए, और हंटर तीनों प्लेयर्स को डाउन करेंगे। इसी के साथ G2 एक राउंड तो जीत पाई है, पर उनको 3 के 3 राउंड चाहिए अब टी साइड में ये मैप कन्वर्ट करने के लिए, और 2 राउंड चाहिए होंगे आउट ऑफ 3 राउंड्स ऑन द लेस फेवरेबल साइड। But if there's a time for him to come alive, it is now, and he does. Incredible. Also Absolutely beautiful incredible. to set him up in that one. The flash is flying in, the Molotov on top of that. Very well played in terms of the retake here. We're both so speechless These players are in this watch party कि क्या ही बोले हम, like क्या ही बोले हम. Done. Okay. Because honestly, I don't know. This should have never come to this point. They're still here to play, and that might give them what they need. And now this could be dangerous. This could spell danger for G2 if they lose the first round here, because Navi then will be just 1 round away from clinching Inferno, और उसके बाद हम डिसाइडर पे जाएंगे जहां पे G2 का मोराल तो बिल्कुल ही निस्ता नाबूद हो चुका होगा। फिलहाल G2 के पास अभी भी चांस है मामा, 3 के 3 राउंड बरामद करके जीत सकते हैं वो ये राउंड, ये मैच ना हो पाई। तेरे साइड पे उन्होंने जीते थे राउंड श्योर, बट डिपेंड्स ऑन if they can break Navi's momentum and they can take down Simple, because Simple has been a menace to deal with. And यहाँ पे NPL देखिए किस तरीके की पोजीशन में बैठे हुए थे, वहाँ पे Hooksy and Hunter को डाउन कर दिया गया, तो 3 versus 5, this is going to be the downfall. Map number 3 most likely coming in, unless Electronic misses that, which he won't. There we go. The seals the deal. Now Navi are doing it in return. Those 2 initial kills from NPL and Bit held the crossfire strong, Oh, allowed for the अब rotations to इसी के set बाद in, 2 and राउंड G2 बचेंगे themselves ओवर टाइम pulled में, the trigger. उसमें They से never went all एक in on भी it. अगर G2 हारती है तो ये मैप जाएगा And डिसाइडर पे। because of that, Navi ये were able to कुछ just समय पहले लगा नहीं था कि ये डिसाइडर पे जा came about. सकता है, और अब ऐसा लग रहा है कि मानो Nice नावी library now. It might get one फेवरेट्स of बन the जाएगी NPL कुछ ही क्षण में। down. Okay, Navi, 2 opportunities to put Inferno away to move. इमेजिन माम्बा अगर यहाँ से नावी ये सीरीज ले जाती है तो तो फिर वो नीको को खड़ा किया जाएगा कटघरे में कि नीको भाई साहब आपने जो वो पुश किया था बनाना पे, बहुत ही वाइल्ड था वो, स्मोक के अंदर जंप करके साउंड बाइट देके फिर स्पैम भी कर रहे हैं, उस अपने गन का भी साउंड बाइट दे रहे हैं। मोनेसी यहाँ पे पहला किल कन्वर्ट करते हैं। shows up, yes Electronic, और गिल्स निकालने की जरूरत है उनको, लेकिन क्या निकाल पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। गॉडस्पीड, बहुत ज्यादा, बहुत टेंस सिचुएशन है यहाँ पे, काफी ज्यादा टेंस। 4 versus 5, Navi if they win this round they close the map, तीसरे मैप के लिए पुश करेंगे। G2 is fighting for survival, उनको अगले दोनों राउंड्स जीतने ताकि वो डबल ओटी पे लेके जाए, लेकिन यहाँ पे सिंपल मिस नहीं करने वाले। हुक्सी को डाउन कर दिया गया, मॉली भी जाएगी इंसेंडरी की वजह से, ब्यूटीफुल मॉली, उनको डिले कर दिया जाएगा। ग्रेनेड लगे हाथ डालेंगे जरूर। यहाँ पे G2 ने वापस से जेकेएस को वहां पे भेजा है फेक करने के लिए, पर इस बार नावी क्या इस बार भी चकमा हो जाएगी? Because Simple is the only one at B. He recognizes that Simple is under pressure now. Yeah. Simple missed it. They could throw it back here. I think they might have done that. No, not yet. No way! Oh no! 35 seconds. He almost. अगर ये शॉट मार रहा था मैं हेडफोन उतार के मैं चले आता। I was like, I don't want to watch this game anymore. That is so scary though. And now from it Oh, Monacy. This is where he feels at home. No more nades on the Navi side, so they cannot dig Monacy out of this corner. He feels very safe back here. And G2 with the bomb plant on top. Surely Navi can't get back into this one. Trying to put some shots through, but I think they realize this one is going to be done. G2 are going to be at 17. They should go for it though. They have money for the next round. There's no reason not to send. Yeah, there's not much Navi can do in this. They retreat. Silence was deafening over there, right? But क्या राउंड निकाले मोनेसी ने वहाँ पे। इसी के साथ G2 अभी भी गेम में बने हुए, आखिरी राउंड उनको कन्वर्ट करना होगा।
देखना ये होगा आखिरी राउंड ओवर टाइम 1 का। नावी अगर जीती है तो वो ले जाएगी इन्फर्नो और पुश करेगी इस सीरीज को डिसाइडर की तरफ। G2 अगर ले जाएगी तो हम बढ़ेंगे सेकंड ओवर टाइम की तरफ, जहां पे G2 स्टार्ट करेगी ऑन द टी साइड। सो अगेन ऑल टू प्ले फॉर G2। यहाँ पे नावी कोशिश करेगी इस मैप को कन्वर्ट करने में, यहीं ओवर टाइम सेकंड ओवर टाइम में ले जाने की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। भाई तो फुल है नावी की तरफ से। अर्ली ट्रेड्स यूटिलिटी के और उसके बाद देखिए बनाना कंट्रोल लेने में सक्षम नावी कुछ हद तक, और G2 बढ़ रहे हैं। बहुत ही क्विक चेंज ऑफ पेस यहाँ पे सीटी की तरफ बढ़ते हुए, बट सिंपल वहां पे तैनात पहला किल बरामद करते हुए हुक्सी के ऊपर दूसरा किल लेने जाएंगे, पर हंटर उनको नेस्ता नाबूद करते हुए 4v4 की स्थिति यहाँ पे सीटी की तरफ उनकी भिड़ंत इलेक्ट्रॉनिक के साथ। इलेक्ट्रॉनिक भी डाउन हो चुके हैं, हंटर ने इलेक्ट्रॉनिक का भी किल बरामद किया। 4v3 की स्थिति यहाँ पे G2 के लिए। ये सेकंड ओवर टाइम पे जाता हुआ लग रहा है मंबा। पॉसिबल है, अभी भी पॉसिबल है, लेकिन मॉनिस नीड्स टू शो अप। उनको एक और किल निकालना पड़ेगा। सिंपल को तो चलिए एलिमिनेट कर दिया गया ऑलरेडी। G2 कैन दे मेक इट टू 2 OTs? दे हैव द मैन एडवांटेज। हमने देखा है कि वो मैन एडवांटेज कभी-कभी थ्रो कर देते जरूर है, लेकिन टेरिस साइड पे वो काफी अच्छा खेलते आ रहे हैं। सीटी साइड पे उनको थोड़ा सा फोकस करके और खेलना पड़ेगा, बट बिफोर दैट दे हैव a massive task। उनको ये राउंड जीतना है अगले ओटी के लिए। जेकेएस उनके टीम में साथ बैठे जरूर है, लेकिन बिट की जो पोजीशन है वो काफी क्रूशियल हो सकती है। यहाँ पे इकलौते प्लेयर पूरी की पूरी साइड होल्ड करें, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन जैसे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा साइड के ऊपर। एंड जी हाँ, इन्फॉर्मेशन दी गई है। बिट वी फाइंड द फर्स्ट पिक, नो हंटर विल शट हिम डाउन। 2 versus 4 बना दिया इस सिचुएशन को। एंड नाउ क्या करेंगे आगे देखना जरूर बनता है। हाँ, यहाँ पे कोशिश तो करनी होगी बिकॉज ये लास्ट राउंड है ओवर टाइम का, बट यहाँ पे जिस तरीके के हालात लग रहे हैं, सेकंड ओवर टाइम हमें देखने को मिलेगा जहां पे G2 टी साइड पे शुरू करेगी। और मुझे एक चीज बढ़िया लगी कि लास्ट रिजॉर्ट के लिए तो सही, बट G2 का ये जो चेंज ऑफ पेस है वापस उनके काम आता हुआ, क्या वो उसको बरकरार रखेंगे सेकंड ओवर टाइम में जब वो टी साइड में शुरू करेंगे? आपको क्या लगता है मंबा, क्या करना चाहिए उनको? Hopefully they do, right? Because they've been making too many mistakes. That's the problem. उनको पुश नहीं करना चाहिए। जितना ओवर कमिट करेंगे उतनी ज्यादा दिक्कत होगी उनके लिए। जी हाँ, इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर रहे हो ना, तो आपको एग्जीक्यूट या रशेस पे जाना चाहिए, बिकॉज वो ऑलरेडी सेट होते हैं, प्रैक्टिस्ड होते हैं, तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम होती है। डिसीजन मेकिंग भी उतना फ्री वो नहीं रहता कि आपको गुंजाइश रहती है गलतियों की, क्योंकि आपको ऑलरेडी हर एक प्लेयर को पता रहता है उनको क्या करना है। तो कोई मिड राउंड चेंजेस नहीं आते डिसीजन मेकिंग में, जहां पे आप एडवांटेज या डिसएडवांटेज को फेरबदल कर सकते हो। इसीलिए एग्जीक्यूट्स और ट्राई रशेस काम करते हैं कई बार, बिकॉज वहां पे सबका रोल ऑलरेडी नियमित किया जा चुका होता है, किसी को दिमाग नहीं लगाना रहता, एंड इट्स वेरी प्लेन एंड सिंपल। और यहाँ पे G2 वो प्लेन एंड सिंपल के थ्रू ही सिंपल एंड कंपनी को धराशायी करने की कोशिश कर रही है। कुछ हद तक कामयाब लास्ट के 2 राउंड्स में। क्या वो मोमेंटम बना रख पाएगी भी, देखना पड़ेगा। जी हाँ, देखना जरूर पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट बात यह है कि आप ने जो गलतियां दोहराई थी वो इस बार नहीं कर पाएंगे। You can't make the same mistakes again. जी, यहाँ पे मोनेसी बनाम सिंपल। ओ निको बहुत ज्यादा डैमेज लेते हुए नेट का। ओह ब्यूटीफुल, इलेक्ट्रॉनिक का सर घर से अलग करते हुए, और इसी के साथ सेकंड प्लेयर को भी स्पैम से डैमेज जरूर दिया परफेक्टो को, बट क्या परफेक्टो को प्रीएम्प्ट कर पाएंगे? जी हाँ, सिंपल यहाँ पे एक प्लेयर को लेके जाते हैं। सीटी स्मोक नहीं है, क्रॉसिंग स्मोक नहीं है, और मोनेसी को भी लेग कर दिया है सिंपल ने। 4v3 की स्थिति, बट सिंपल है अभी भी यहाँ पे। स्पैम और एक स्पैम, सिंपल क्या ही कर रहे हैं सिंपल ये राउंड में। Simple is just doing simple things. Yep. Imagine if that connects.
Nico, he really got shut down in regulation on Banana. He Is a little too could much on the find right. that kind of दिक्कत की entry. बात वो है NPL पीक करने की कोशिश जरूर करेंगे लेकिन हुक्स ही नहीं छोड़ने वाले उनको वहाँ पे बट सिंपल व्हाट अ शॉट व्हाट अ शॉट यार ये इंसान मतलब हाउ गुड कैन यू पॉसिबली बी इन दिस गेम आई लाइक हाउ गॉड स्पीड इज लाइक भाई नहीं देखना है मुझे ये चीज और तीन जन ट्रिपल पीक की जरूरत पड़ी सिंपल को डाउन करने के लिए जीटू को बट नेवरदलेस सेव नहीं करने दिया सिंपल का शायद इरादा सेव का ही था जब जिस तरीके से वो पीछे बढ़ रहे थे और ये पहला राउंड सीटी साइड में हारने का मतलब है इकोनॉमी बहुत ही टैटर्स में होगी अगर सेकंड राउंड भी हारते हैं तो यहाँ पे थर्ड राउंड बाई करने के लिए शायद एग्जैक्ट मनी नहीं बची यहाँ देखिए सिंपल मैक्स्ड आउट है बट यहाँ पे लेट्स नॉट फॉरगेट दैट अभी भी G2 Esports टेरेस साइड पे स्टार्ट कर रही है टेरेस साइड पे वो राउंड जीतते आए हैं दैट्स नेवर बीन अ प्रॉब्लम ये बिल्कुल प्रॉब्लम ये है वो सीटी साइड पे राउंड नहीं जीत पा रहे हैं ये बिल्कुल I have to imagine for Nico to finally get that entry at top banana, that especially where he did it there, but there were so many rounds in the regulation where he was just walking in. इन्फर्नो क्लासिकली बोला जाता है एक सीटी साइडेड वहां पे मुझे ऑनेस्टली उतना डिफरेंस नहीं लगता है इन्फर्नो I think it's a lot more balanced now यप मुझे भी वही बैलेंस ही लगता है फिलहाल पहले तो बहुत ज्यादा सीटी साइडेड होता था बहुत रीजन व्हाई बिकॉज़ ये बनाना आप देख रहे हैं वो एकदम एक छोटा सा चोक पॉइंट होता था जिसके थ्रू आप पुश नहीं कर पाते थे सो दीस एरियाज वर वेरी वेरी स्मॉल वो चोक पॉइंट्स की वजह से उनको सीटी साइड मैप किया कहा जाता था ओह ये बूस्ट an easy way to understand अगर कोई मैप T sided या CT sided है I'm giving you a general rule of thumb so it might not always be accurate right? अगर ज्यादा choke points अगर points of entry एकदम छोटी छोटी है then it's predominantly a CT sided map yep Going to be flashing their way through and electronic nice. Oh no, they overlooked this. Instantly worked. They're not checking perfecto, but Hooksy. Nico कहाँ घुस के बैठे थे? Able to get the shot. That's super important. Through the smoke though. It's bit to find JKS for some odd reason. 25 seconds and a 3-on-3 and look at how सिंपल यहाँ पे सेव के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे पता नहीं बिकॉज़ सेव के लिए जाना they'll wait for a pick yep which is a more logical thing to do also अगर एक पिक मिलता है फिर आप क्यों सेव करेंगे जी बिल्कुल It's a triple crossfire between Hooksy, Monesi, and Nico. And I think it's all going to be on Monesi. If Monesi gets taken down, then problem हो जाएगी. If Monesi pick निकालते, then they'll start saving. Oh, now they'll have to go back. Simple will be like, I'm going back, bro. See, exactly what I'm talking about. Yep, simple इसलिए आगे आई नहीं वो ये एंगल पकड़ के रखे थे. यहाँ से अगर कोई पुश करता है या पीक करता तो उसको पनिश करते. और यहाँ पे पनिश जरूर कर पाए हैं उसी को पर G2 को फर्क नहीं पड़ेगा खासा बिकॉज़ उनके पास बैंक में बहुत कुछ है. मोनेसी ऑन द अदर हैंड बिट को लेके जाएंगे इसी के साथ यहाँ पे सो नावी विल हैव अ फुल बाय गोइंग इनटू द थर्ड राउंड द लास्ट राउंड ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ सेकंड ओवरटाइम प्योरली बिकॉज़ सिंपल एंडेड अप सेविंग हिज ऑफ नहीं तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता सिंपल को तीसरे राउंड में बाय करने के लिए मोनेसी यार ये तो बच्चा कमाल का प्लेयर है For sure. यहाँ पे जो स्टोरी लाइन नावी ने क्रिएट की थी फर्स्ट ओवर टाइम में वही स्टोरी लाइन यहाँ पे G2 क्रिएट कर रही है. I love the aggression by the way. I love the aggression from Navi. और अभी देखिए परफेक्टो ऑलमोस्ट आइसोलेट हो चुके हैं. हुक्सी उसी का फायदा उठाते हैं. मोनेसी का बेहतरीन फ्लैश becomes the creator for once and not the destroyer. And now look at the rotation that it forces on the minimap. There's 3 players of Navi that are Let's see यहाँ पे किस तरीके से अप्रोच करते हैं. मुझे एक बार के लिए ऐसा लगा उसके सर पे से लग के नेड वापस आया. उसने जब नेड फेंका. हुक्सी बहुत ही बेहतरीन तरीके से नेविगेट कर चुके हैं बूस्ट को पर क्या वो बूस्ट को प्रीएम्प्ट कर पाएंगे? अगर वो बूस्ट को एक्सपेक्ट करेंगे तो ये खतरे की घंटी साबित हो सकती है नावी के लिए. फिलहाल बहुत ही अच्छी तरीके से तैनात सीटी पुश को पकड़ के रखे हुए हैं. धीरे-धीरे इलेक्ट्रॉनिक धीरे-धीरे बिट का रोटेशन आता हुआ बट उसके पहले ही यहाँ पे मिल चुका है उन्हें कंट्रोल बी साइड का. इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे बने हुए हैं साइड के अंदर तो
27 seconds, so even if the bomb stops here, पहला बंदा be recoverable. निको पर आगे जाके बिट को डाउन करते हुए इसी के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक आइसोलेट हो चुके हैं, उसी का फायदा हुक्सी उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक को डाउन कर चुके हैं। सिंपल वापस ऑफ के साथ ये तीनों राउंड एक चीज कॉमन रही है, सिंपल ऑफ के साथ रीटेक पे आए हैं बी की तरफ। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन सिंपल को कि जहां पे मतलब उनकी ऑफ लिटरली गेम में आ ही नहीं पाई पूरे सेकंड ओवर टाइम में अभी तक। That is unfortunate for Navi because I think अब जिस G2 ने जिस तरीके का मोमेंटम बिल्ड किया है, they only need one lucky round CT पे. Literally one round. No, one lucky round. Now, I'm not even talking about one round because जिस तरीके से उन्होंने CT साइड पे खेला थोड़ा disappointing जरूर है. एक गलती अगर Navi करती है ये गेम और मैच दोनों जीत के चले जाएंगे ये. जी हाँ. Credit to G2 with how they came back in second overtime though. मतलब क्लियरली वो चेंज ऑफ पेस जो हम बात कर रहे थे जो उनके फायदे में रहा फर्स्ट ओवर टाइम के एंड में, उन्होंने उस चीज को बरकरार रख बहुत ही सिंपल बी के तरफ नियंत्रण बनाए रखा और उस नियंत्रण को कन्वर्ट करते हुए राउंड विंस में अब यहाँ पे ये देखना है कि सिंपल क्या कर पाएंगे, सिंपल और उनकी टोली क्या कमाल दिखा पाएगी, क्या 3 राउंड्स बरामद कर पाएंगे वो सेकंड ओवर टाइम के सेकंड हाफ में। ओ निको पहला किल बरामद करते वापस सिंपल का फ्लैश में फ्लैश हो चुके हैं परफेक्टो। I think so G2 will have Simple's flashes to thank if they convert this Inferno. That's such an encouraging sign for G2. This is the kind of strength they need. यार देखना जरूर बनता है। Oh, honestly! I'm sorry. नहीं ना हो पाए हमसे, नहीं और कुछ नहीं। This is exactly what I was talking about. One lucky round, that's all you need. And Monesi is showing up. Monesi showed up big Oh time. my god. It's done. It is done. It is done, ladies and gentlemen. निको अब आप जा सकते हो। अब देखो हुक्सी गए। अब 1v1 मत दो भाई। सेम पोजीशन से गए पर जहाँ से निको गए थे। यहाँ पे मोनेसी और निको ही एंड करेंगे इस सीरीज को। That was actually insane. जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे मैच और मैप में कम बैक किया है, it was incredible to watch. And G2 बीच में लगा था they don't deserve to win, but after what they did in the second OT, I think it's good. It's all good. Yeah, G2 good for Navi on the day. G2 good. Yeah, Navi's going to be disappointed with this. But जैसे कि ये I think so this is just an experimental ground for Navi. उनको ये भरोसा है कि वो क्वालिफाई तो कर ही लेंगे ब्लास्ट के जो फाइनल टूर्नामेंट है उसके लिए। यहाँ पे G2 शायद इसके साथ क्वालिफाई कर चुके हैं और नावी को एक और मैच शायद खेलना होगा क्वालिफाई करने के लिए। बट दिस इज मोर लाइक एन एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड जहाँ पे वो कैटोविक्सी की तैयारी कर रहे हैं। सो ब्लेड निराश जरूर होंगे पर नाराज नहीं। Was that? I think there was Banks behind the Navi team, right? Yep. Is he in an analyst role now? मुझे नहीं पता। लास्ट मेरे को बैंक का जो पता था he took control of the alliance team, मतलब alliance org as an org. Interesting. उनके head of something बने थे esports or something. तो interesting, very interesting. But overall crazy matchup था ये Godspeed. If you were to give any closing thoughts on this, तो क्या कहेंगे आप? Honestly, never expected Navi to struggle so much on the terrorist side here on Nuke. That was sort of the precursor for me, and the small mistakes जो मैंने देखा तालमेल में और IGLing के जो बहुत ही फ्लैट लगी मुझे कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला भी था कि इन्फर्नो मेरे हिसाब से G2 ही ले जानी चाहिए। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि नावी न्यूक लेके जाएगी और G2 इन्फर्नो लेके जाएगी और उसके बाद हम डिसाइडर पे देखेंगे कि कौन बेहतर साबित होता है। बट न्यूक में जिस तरीके का परफॉर्मेंस उससे ही समझ में आ गया था। लेट साइंस ऑफ सर्वाइवल, थोड़े वो फाइटिंग स्पिरिट जरूर दिखाई नावी ने, बट अगेन G2 ने दिखाया कि थोड़ा सा रिफाइन अगर थोड़ा सा सूझबूझ के साथ वो खेलें और बेसिक्स पे ज्यादा फोकस करें खेलने पे कि भाई हमको इतना डिफॉल्ट इतना ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेट अस जस्ट बम रश भी और कुछ नहीं, एंड इट वर्क्स आउट। It worked.
That is would work, but काफी entertaining match है यार, काफी ज़्यादा entertaining match है. लेकिन everybody who's watching, I hope your fantasy team worked out right. If you could see yours, Godspeed, आपने जो बनाई थी, how did that work out? जी मेरी 99th पे तो मैंने 2 टीम बनाई थी. एक टीम में मैंने 3 नावी के प्लेयर्स लिए थे और एक टीम में मैंने 3 G2 के प्लेयर्स लिए थे. तो जिसमें मैंने नावी के 3 प्लेयर्स लिए थे वो है 2213. तो बेसिकली इट्स लाइक एन IIT JEE रैंक, बट जो दूसरी टीम है दैट इज रैंक 99. सो स्टिल गुड. 99 आउट ऑफ लेट्स से 10,000 people. It's good. Crazy है. This is crazy. You know, I'm definitely going to keep an eye out. मैं खुद आपके साथ बातचीत करके teams बनाने वाला हूँ because this is fun. This is a lot of fun. Yup. Takes us back to those Vulcan days, you know. True, but you know, make sure that you guys know what you're doing. कौन से players किस तरीके से select करें. Have a method to your madness. But all in all, it was super fun, Godspeed. It was a lot of fun, and I have to thank you for being such a wonderful host. Oh, thank you for being such a wonderful, because I also again I've learned so much about hosting and casting by watching you and of only a few others, like because बहुत ही गिने चुने लोग हैं who have been able to make their mark in this space, and as not just a caster but as a host as well. Like the amalgamation of वो जो 2 skills हैं वो बहुत कम पड़ जाते हैं. के बाद there are people who are good casters definitely, but to transition into a host you need a whole different aura या presence, and I mean I've always watched you, और सीखने को मुझे बहुत कुछ मिलता है. Obviously I'm more of a color, I'm more intertwining myself with the color side of all things in terms of casting, but I mean play by play ho, hype shoutcasting ho, kuch bhi ho, it's been such a journey. Like the 1 or 2 rounds where you told me that you were going to cast, and it was such a beautiful flow to hear. So it almost feels like harmony, when casting is done right, almost feels like harmony, या किसी ने कोई धुन सही तरीके से बजा दी हो. Means a lot, man. Thank you so much, Godspeed. Means a lot. Well, with this, guys, आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करेंगे. होपफुली हम लीडर बोर्ड पे देख लेते हैं समाप्त करने के पहले. SRY टॉप पे हैं. There's Mandia, there's Brian, there's Nadim, there's Thor, अक्षय हैं. नादिम की और एक टीम है और कैटलिन है. दानिश, मुस्कान, पटेला, थॉर वापस और एक टीम के साथ. सो ये है टॉप 15-20. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज हु हैव वॉन. कमिसरेशंस. आगे आपको और जीतने का मौका मिलेगा जो नहीं जीत पाए. और याद रखिए गाइस, हमारे यहाँ रोज वॉच पार्टीज चलती हैं. ब्लास्ट में स्प्रिंग 2023 के पूरे सर्किट अभी जो चल रहे हैं यहाँ पे वॉच पार्टीज चलती रहेंगी हर रोज शाम. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द फैनक्लैश यूट्यूब चैनल. आप लाइक दबाइए और प्लीज नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, बिकॉज वो ऑन करेंगे तो जैसे ही हम लाइव जाएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नोटिफिकेशन बेल जरूर से दबाइएगा. एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग. जरूर मिलेंगे वापस with the same energy and a lot more entertainment. So thank you so much. See you guys around. Good night. Good night.
kickstart.